सिर्फ खुद देखेंगे बल्कि पसंद भी किया करेंगे, बल्कि आप इसको दूसरों को शेयर भी करेंगे और दूसरों को देखने की तलकीन भी करेंगे। तो आइए हम बिला तमहीद अपने टॉपिक से इसका आगाज़ करते हैं। चूँकि बात हमने करनी है आज आपसे लिवर के हवाले से। जिगर जो है वो हमारे जिस्म के अंदर एक ग्लैंड है और ये तमाम हमारी जो बॉडी के ग्लैंड्स हैं उन तमाम ग्लैंड का जो है वो हेडक्वार्टर होता है। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि 3 लाइफ ऑर्गन्स होते हैं और अगर हम इसको देखें तो कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने जो है वो सूरह नहल के अंदर ये फरमाया कि वह जैतून व नखेल वलानाब, यानी और जैतून और खजूर और अंगूर 3 चीज़ों की बात हुई। तो अल्लाह ताला ने यहाँ ट्रिपल थ्योरी जो है वो वाज़े कर दी, क्योंकि इनमें से एक जो है उसका ताल्लुक़ यानी दिल से है, एक फल का ताल्लुक़ जो है वो जिगर से है और एक फल का ताल्लुक़ जो है वो हमारे दिमाग से, यानी दिल, जिगर और दिमाग 3 लाइफ ऑर्गन्स की अल्लाह ताला जो है वो बात यहाँ फरमाई। और फिर ये फरमाया कि और दीगर समारात, और इसमें होशमंदों के लिए यानी अक्लमंदों के लिए, दानश्वरों के लिए, सोच और फ़िक्र करने वालों के लिए निशानियां हैं। जो हमारा लाइफ है उसमें हम देखते हैं कि जब इंसान मार्ज़ वजूद में आता है, जब वो खालिक़े कायनात जो है वो मादरे बतन के अंदर जब उसको उसकी जो डेवलपमेंट स्टेजेस होती है जब उसमें से वो अल्लाह उसको गुजार रहा होता है, तो वहाँ पे कुरान में भी अल्लाह ने फरमाया कि हमने इंसान को एक जमे हुए लोथड़े से पैदा किया। और वो जो लोथड़ा है उसको कुरान के अंदर ही अल्लाह ने फरमाया कि 3 यानी ज़ुल्मत सलासा की बात हुई कि 3 अंधेरों में, 3 परत में, 3 लेयर्स में रखा। और वही बात जो है वो बहुत कुरान के बहुत अरसे के बाद हम मुसलमान तो सिर्फ जो है वो कुरान को सवाब की हद तक जो है वो रखे रहे, या हमने समझा कि शायद दुल्हन रुखसती के लिए कुरान आया, या हमने समझा कि कोई फौत हो जाए तो उसके बाद बख्शिश के लिए आया। हम उस तरीके से नहीं उसको अंडरस्टैंड कर सके जिस तरह एक डॉक्टर के थैलमोर जो हैं उन्होंने अंडरस्टैंड किया, और उन्होंने फिर इस पर एम्ब्रियोलॉजी जो है वो प्रॉपर लिखी किताब, और एम्ब्रियोलॉजी विद इस्लामिक वर्जन जो है वो एक किताब लिखी गई, जिसमें उन्होंने लिखा कि ये जो 3 लेयर्स हैं जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, ये 3 लेयर्स वो जमा हुआ जो खून का लोथड़ा जो कुरान में अल्लाह फरमाते हैं कि हमने तुम्हें किस तरह से तुम्हारी तख्लीक की और 7 डेवलपमेंट स्टेजेस में से किस तरह से गुजारा। तो वहाँ पे डॉक्टर के थैलमोर जो है वो भी लिखते हैं कि वो 3 लेयर्स कौन सी होती हैं, एक एक्टोडर्मल होती है, दूसरी मीजोडर्मल होती है और तीसरी एंडोडर्मल होती है। सबसे पहले बच्चा जो होता है जब वो डेवलपमेंट स्टेजेस में गुजर रहा होता है तो उस वक़्त जो है वो उसकी सबसे पहले हड्डियाँ, बोन्स जो होती हैं वो डेवलप होती हैं, और फिर उन हड्डियों के लिए ऊपर जो काम होना होता है ना तय बातें, वो उससे पहले जो है वो 3 ऑर्गन्स बनते हैं, एक दिल इंसान का, दूसरा जिगर और तीसरा दिमाग। अब होता ही है कि जब ये 3 लाइफ ऑर्गन्स बनते हैं तो दिल, जिगर और दिमाग जो है वो फिर उन हड्डियों पे, वो जो हमारी बॉडी का सर्विस स्ट्रक्चर है, जो ढांचा बन चुका होता है, उसके ऊपर तय बतय यानी असाब भी होते हैं, उनके ऊपर उज़लात भी होते हैं, यानी नर्वस सिस्टम भी है, मस्कुलर सिस्टम भी है, और उसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम भी है। तो ये 3 जो लाइफ ऑर्गन्स हैं, ये 3 मिसाल के तौर पे जो दिमाग है वो फिर पूरी बॉडी के वो जितनी हड्डियां बन चुकी होती हैं, एनाटॉमिकल पॉइंट है उसे, वो उसके ऊपर असाब बनाता चला जाता है दिमाग। और उसके बाद फिर जो हमारा दिल होता है, हार्ट, वो हमारी तमाम बॉडी के जो मस्कुलर सिस्टम है, मसल्स हैं, यानी उज़लात जो पट्टे हैं वो डेवलप करता है। और इसी तरह फिर जो हमारा जिगर है वो बन चुका होता है, और जिगर जो है वो तमाम बॉडी के ग्लैंड्स जो होते हैं वो मुख्तलिफ ग्लैंड्स है जो बनाता है, जिसको हम एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। अब एंडोक्राइन सिस्टम चूँकि हमारा लिवर आज का टॉपिक है, तो एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो क्या होता है, उसके अंदर हमारे दिमाग में पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसके बाद फिर नीचे आ जाए यहाँ पे थाइमस ग्लैंड है, फिर उसके बाद थायराइड ग्लैंड है, फिर उसके बाद ख़वातीन में ब्रेस्ट मेमोरी ग्लैंड है, और उसके बाद नीचे आ जाएं तो हमारा लिवर जो है वो एक ग्लैंड है। लिवर के नीचे जो है वो पैंक्रियाज, लबलबा, वो भी एक ग्लैंड है। और उसके बाद नीचे आ जाएं तो हमारे जो दोनों गुर्दे होते हैं, उन गुर्दों के ऊपर एडर्नल ग्लैंड्स होते हैं। और इसी तरह से थोड़ा सा और ज़रा सा नीचे होंगे तो फिर फीमेल के अंदर ओवरीज जो होती हैं, वो दोनों ओवरीज जो हैं वो भी ग्लैंड है। और इसी तरह से मर्दों में थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो प्रोस्टेट ग्लैंड है। ये तमाम ग्लैंड जो भी मैंने आपको बताए, ये
जो है एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो कहलाता है। यहाँ पे जो है वो हमें एक लेनी है छोटी सी एक ब्रेक। स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। प्रोग्राम हेल्दी लाइफ के साथ इंशाल्लाह हम वापस आ रहे हैं। Hi, I'm Uma Malhotra and I welcome you to my show, Glow and Beyond with Uma Malhotra. Why should I get that facial? Why should I go for a Repicharge facial then an O3 facial? We do the research for you. So we make sure we give you the best. For example, you got fat lash. A client was allergic to fat lash, so I did a London lash patch test on her. She was absolutely fine with London lash. So I used the London lash. हजूरी बाग मुगलिया बागात की तर्ज में तामीर शुदा बागात में से एक है। ये मशरिक में किला लाहौर, मगरिब में बादशाही मस्जिद, शुमाल में रंजीत सिंह की समाधि और जनूब में रोशनाई दरवाजे तक फैला हुआ है। इस बाग के मरकज में हजूरी बाग बारादरी है जो रंजीत सिंह ने तामीर करवाई थी। हजूरी बाग दूसरे मुगलिया बागात की निस्बत एक छोटा सा बाग है जो आलमगीरी दरवाजे से बादशाही मस्जिद तक फैला हुआ है। ये बाग महाराजा रंजीत सिंह ने 1813 में तामीर करवाया था। ये बाग रंजीत सिंह ने मुगलिया तर्ज तामीर पर कोहे नूर हीरे की शाह शुजा से छीनने की खुशी में तामीर करवाया था। इससे पहले आलमगीरी सिरी नामी यादगार यहाँ वाक़ थी जिसे खत्म कर दिया गया था। इस बारादरी में इस्तेमाल होने वाला संगे मरमर और इससे तामीर शुदा इसके सतून नहायत दिलकशी से बनाए गए हैं। हजूरी बाग की इस मरकजी बारादरी जो रंजीत सिंह की अदालत हुआ करती थी की छत मुकम्मल तौर पर शीशे से तामीर की गई है। बारादरी और बाग तकरीबन 45 मुरब्बा फीट और तकरीबन 15 कदम फासले तक सिखों पर अंग्रेजों के हमलों में बर्बाद हो गई थी। इस हिस्से की तामीर नौ बरतानवी राज में इसी नक्शे पर की गई। 19 जुलाई 1932 को इस बारादरी की ऊपरी मंजिल मुनहदिम हो गई जो दोबारा तामीर ना की जा सकी। It's me, Jia. This is my street vibes. But I got you, baby. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थी लाइफ और आपका मेज़बान, आपका तबीब, आपका मुआलिज, हर्बलिस्ट, नेचुरोपैथिक डॉक्टर जमील महरवी आपके साथ है। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे एंडोक्राइन सिस्टम की। एंडोक्राइन सिस्टम में हमने तमाम ग्लैंड्स की बात की, बट इन तमाम ग्लैंड्स का जो हेड क्वार्टर है, जो इसका कैपिटल है, जो इसका दारुल खिलाफा है, वो हमारा बॉडी का लिवर है, जिगर है। अब होता ही है कि जिगर के मुख्तलिफ एंजाइम्स हैं जिसको हम सुफ्रा बाइल कहते हैं, और ये बाइल या बाइलिरुबिन जो होता है ये हमारे जिस्म में जो है वो 1 पॉइंट से बिलो रहना चाहिए, और इससे अगर ज़्यादा होता है खुदा न खास्ता तो फिर अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम लगाया जो कि सप्लीन की शक्ल में, जिसको हम तिली कहते हैं। सप्लीन या तिली जो होती है ये बॉडी के अंदर सक एंड सेक्रेशन का अमल करती है। बहुत सारे टॉक्सिस जो होते हैं उनको बॉडी से एलिमिनेट करने में या उसको बर्न करने में इसका बड़ा किरदार है। सो जो हमारा लिवर है इसके अंदर इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश का होना, जिगर में सोजिश हो जाना या इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर जिसको हम कहते हैं, इसके पीछे हमें देखना पड़ेगा कि क्या ऐसा रीज़न या रूट कॉज इसका क्या होता है। वो है हमारा स्टमक यानी हमारा मैदा, जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा निज़ाम में इन्हिज़ाम। सो जो हमारा निज़ाम निज़ाम है दोस्तों, उसमें हमारे जो है वो हमारे मुंह का पूरा एरिया, यानी उसमें ज़ुबान भी है, हमारे दांत भी हैं, उसके बाद इसमें फिर मुख्तलिफ़ किस्म के स्लाइवास आते हैं। जब हम खाना खा रहे होते हैं या खाना हमारे सामने आ रहा होता है या हमें उसकी स्मेल आ रही होती है, खाने की खुशबू आ रही होती है, तो उस वक़्त हमारे मुंह में एक पानी सा आ जाना, इस तरह की जो चीज़ें बनती हैं, वो जो क्रेविंग होती है, ये मुंह के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के स्लाइवास हैं। फिर उसके बाद खुराक की नाली है, और उसके बाद फिर हमारा मैदा है, मैदे के साथ जिगर है, जिगर के साथ फिर हमारे पित्ता भी है, और उसके बाद फिर हमारा पैंक्रियाज लबलबा भी है, और उसके बाद फिर हमारी छोटी और बड़ी आंत भी है। तो ये सारा सिस्टम जो है ना वो डाइजेस्टिव ट्रैक है एक पूरे का पूरा। सो हम जो खुराक खाते हैं, जो भी हम खाते हैं, वो खुराक हमारी मैदे में जाती है और वहाँ पे एक प्रोसीजर होता है। हमें क्या करना है अगर हमें हेल्थी लाइफ गुजारनी है, क्योंकि मेरा प्रोग्राम का टॉपिक भी वही है, नाम भी वही है कि हेल्थी लाइफ कैसे होगी, कि अगर हम अपने मैदे को ठंडे पानी से बचाएं, ठंडी चीज़ों से बचाएं। बेसिकली हमारे मैदे के अंदर एक हरारत होती है, हरारत गरीज़ी उसको कहते हैं। उसका काम ये होता है कि जो भी खुराक हम खाएं उसको डाइजेशन करवाना। लेकिन अगर हम जो है वो ठंडा पानी लेंगे या कोई भी ठंडी चीज़ खाएंगे तो हमारा जो स्टमक है उसके अंदर जो गैस्ट्रिक म्यूकोसाज हैं या उसकी जो लेयर्स होती हैं या उसके अंदर जो हरारत होती है, जिसको हम हरारत गरीज़ी की बात कर रहे थे, वो हरारत बेसिकली जो वो किल हो जाती है जब भी हम कोई ठंडी चीज़ खाएंगे। तो उसके बाद हमारा मैदा, उसके पट्टे ठंडे हो जाएंगे। अगर वो जो मैदे के पट्टे हैं वो ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा जब ठंडे होंगे तो हमारे मैदे में फ़ौरन दर्द आएगा। हम कहते हैं अक्सर हमारे मैदे में दर्द रहती है या दर्द हो जाती है कुछ खाने से उसके बाद, तो इसका मतलब है वहाँ पे हमने कोई ऐसी चीज़ें खाई गई जिससे हमारा मैदे के पट्टे जो थे वो ठंडे होते गए, और उसके बाद उनमें क्रैम्प्स आए, या वो ठंड से जब श्रिंक होंगे तो फिर हमारे वहाँ पे उन पट्टों में दर्द होगी जिसको हम मैदे का दर्द कहते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा कि हमारे यहाँ तेज़ाबियत, एसिडिटी जो है वो जन्म लेती है। एक एसिड वो है जो हमारे यहाँ कुदरती अंदर से पैदा होता है और उसका काम है खुराक को हज़म करना, डाइजेशन करवाना। अल्लाह ताला ने जो हमारा स्टमक है उसके अंदर ऐसी खूबसूरत एक जो है वो लेयर अंदर बनाई है कि वो जो हमारे यहाँ कुदरती जो अंदर एसिड पैदा होता है, प्रोड्यूस होता है, वो इंतहाई डेंजरस होता है एज़ पर कंपेयर टू जो हमारे दुनिया में एसिड्स हम नज़र आते हैं, जैसे बैटरी में तेज़ाब है और कई मुख्तलिफ़ किस्म के तेज़ाब हैं, उससे ज़्यादा ख़तरनाक होता है। लेकिन हमारे मैदे के अंदर अल्लाह ताला ने एक ऐसी लेयर लगाई है कि जो उसको जो है वो सेव रखती है, उसको ख़राब नहीं होने देती। लेकिन उसकी निस्बत जब हम बाज़ार की चटपटी चीज़ें लेंगे, मिर्च मसाला ज़्यादा खाएंगे, मुरागन ग़िज़ाएँ लेंगे, आई मीन टू से फ़ास्ट फूड लेंगे, जंक फूड लेंगे, फ्रोज़न फूड लेंगे, उसके साथ हम मुख्तलिफ़ किस्म की कोल्ड ड्रिंक्स लेंगे, हम एनर्जी ड्रिंक्स लेंगे, सॉफ्ट ड्रिंक्स लेंगे, और फिर हम चाहते हैं कि जैसे फ़र्ज़ करें कि ख़वातीन हैं वो बाज़ार जब जाएं तो उनकी कोशिश होती है कि हमने लड्डू पीठी वाले खाने हैं या हमने कोई गोलगप्पे खाने हैं या वो चाहते हैं कि हमने कोई दही बड़े लेने हैं। तो
उस पे जो भी उस दुकानदार ने मसाला डाला होता है उसके बावजूद भी वो मज़ीद डिमांड कर रही होती हैं कि जी हम इसके ऊपर और डालना चाह रहे हैं, तो वो उसके ऊपर ज़रा तीखा करके डाल के खाते हैं। घर में भी हम बहुत ज़्यादा तेज़ मिर्ची खाना शुरू हो गए हैं, इसी तरह बाज़ार के खाने जो है वो भी। तो ये सारी चीज़ें हमें, और उसके अलावा हमारे यहाँ आलू है, गोभी है, मटर है, चावल है, चिकन है, अंडा है, सफ़ेद चने हैं, चने की दाल है, माश की दाल है, चाय है और इस तरह की चीज़ें, ये जो है हमारे यहाँ एसिडिटी तज़ाबियत प्रोड्यूस करती हैं। हमें क्या करना है कि जब वो तज़ाबियत ये जो इन चीज़ों से पैदा होती है, और इसके अलावा ख़ास तौर पे जो हम दवाइयाँ खा रहे हैं, वो मरीज़ जो पेशेंट्स हैं मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ, कोई पेन किलर खा रहा है, कोई एंटीबायोटिक खा रहा होता है, किसी का गला ख़राब हो जाए, थर्ड जनरेशन मतलब हाइपरटेंसी एंटीबायोटिक ले रहा होता है, पेन किलर ले रहे होते हैं कि जी हमारे सब जोड़ों में दर्द हैं, हमारे घुटनों में दर्द हैं, हमारे कमर में दर्द है, हमारे पट्टों में दर्द है। कुछ लोग सर दर्द के लिए देख लें उनके पर्स के अंदर बेशुमार दवाइयों के अंबार लगे होते हैं। तो ये जो हम दवाइयाँ खाते हैं, ये दवाइयाँ जो हैं ये भी हमारे प्रॉब्लम करती हैं, किस में, स्टमक में जाके एसिडिटी प्रोड्यूस करती हैं। फिर हम उसके लिए जब मैदे में जलन या कोई इस तरह का इशू होता है तो फिर हम क्या करते हैं, हम मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ इसके लिए भी खाना शुरू करते हैं मैदे के लिए, यानी एंटा एसिड लेते हैं। जो एंटा एसिड होती हैं वो प्रोड्यूस बाई एसिड ही होती हैं, एंटा एसिड यानी तज़ाबियत पहले जिस्म में मौजूद है और उसके लिए ऊपर से हम तेज़ाब से बनी हुई जब दवाइयाँ जो एसिड से बनी हुई हैं वो लेंगे तो हमारे मैदे की तज़ाबियत को वो मज़ीद बिगाड़ेंगी और बढ़ाएंगी। वक्ती रिलीफ, उसके अंदर एक ऐसा अंसर केमिकल होता है जो आपको फौरी एक छोटा सा रिलीफ देता है, बट प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा उसके बाद मज़ीद बिगड़ती है। तो हमारे मैदे के अंदर वो तज़ाबियत, वो जो हमने लेयर की बात अभी थोड़ी देर पहले की थी कि स्टमक के अंदर एक लेयर बनती है और वो अल्लाह ताला ने बनाई हुई है, और वो जो अंदर कुदरती जो एसिड आता है वो उसके लिए बहुत अच्छी है, वो लेयर उसके लिए ढाल है, उसको ख़राब नहीं होने देती। लेकिन ये जो बाहर की चीज़ें अभी हमने जिक्र किया, ये खाकर हमारे उस लेयर को नुकसान होता है और उसके अंदर एक छोटा सा कहीं ज़ख़म बन जाता है जिसको हम पेप्टिक अल्सर कहते हैं। और वो अल्सर फिर जो हम खुराक खाते हैं, पानी पीते हैं, कुछ भी, वो सारी चीज़ें फिर उस अल्सर ज़ख़म के अंदर प्रॉब्लम करती हैं और आहिस्ता आहिस्ता हमारा मैदा बिगड़ता हुआ डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होता है ये फिर हमें मेंटल डिसऑर्डर तक ले जाता है, जिसमें मरीज़ का देखा है कि फिर वो डिप्रेशन है, टेंशन है, स्ट्रेस है, गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है, रोना धोना, परेशान, अजीब तरह की सोचें, वहम, तोहमात, ख्यालात, डर, खौफ, घबराहट, घुटन, दिल की धड़कन का कम ज़्यादा होना और इस तरह के अजीबोगरीब मसाइल, नफ्सियाती मसाइल। सम टाइम लोग कहते हैं नहीं जी साइकाट्रिस्ट को दिखाएं, साइकोलॉजिस्ट को दिखाएं, वहाँ दिखा के जब तंग आ गए और कुछ नहीं बना तो फिर कभी हार्ट वाले को कि हार्ट बीट तेज़ हो रही है, कभी कम हो रही है, तो ऐसे लगता है जैसे कोई हार्ट प्रॉब्लम हो रही है। फिर कुछ नहीं होता तो फिर हम आमलो नजूमियों की तरफ भागते हैं कि शायद किसी ने कोई जादू टूना, कोई साया, कोई पता नहीं इस पे किसी ने कोई अमल कर दिया हुआ है। इस तरह के इश्यूज़ जो है वो बनते हैं तो फिर नफ्सियाती मरीज़ वो बन जाता है और फिर बेशुमार इससे मसाइल जो है वो आगे बढ़ते हैं। बात हमारी जारी रहेगी, यहाँ पे हमें लेनी एक छोटी सी ब्रेक। स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा प्रोग्राम हेल्दी लाइफ के साथ। अभी हम वापस आते हैं। ट्रस्ट है लोगों का, मुझे लगता है आप लोगों तक रसाई नहीं आपकी हो पाती। आपका मंशूर क्या है? किसी सियासी जमात में इतना अच्छा इंतखाबी कमीशन नहीं है। अच्छे कंटेंट देखना चाहें तो फिर डेफिनेटली आहिस्ता सा चेंज तो आएगा ना, ग्रेजुअल। तमाम 12 ज़ोडिक साइन के ऊपर मुझे अबूर है। दुबई के पास वसाइल थे, आज पाकिस्तान के पास तो बहुत कुछ है। जो सेफ सिटी के हवाले से है वो अब तो काफी ज्यादा जो है दोबारा वर्किंग में आ गए हैं। हाँ, एक टाइम आया था जब काफी कम हो गए थे। 50 तो स्टार नहीं हो सकते,
स्टार तो 3-4 ही होंगे किसी भी फील्ड के। बच्चे को देखा कि वो एक ऐप के अंदर घुसा हुआ है जिसको टिकटॉक कहते हैं। My name is Terence South. I formerly served in the British Army. We had to go down as the muscle squad and go on, you come with us. She said, no, let us go, we're fighting. No. I could communicate, I had all the skills for the wirelesses, the radios. I could do that, that was no problem. I could do that blindfold. Second World War, understood where you were and what you were doing, where your head was. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे हेपेटाइटिस और लिवर और उसके हवाले से, और प्रोग्राम देख रहे हैं आप हेल्दी लाइफ, और आपका मेज़बान, आपका तबीब, आपको मालिज हवालिस नेचुरोपैथिक डॉक्टर जमील मेहरवी आपको फिर से खुशामदीद कहता है। अभी हम बात कर रहे थे कि डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, जब ये डाइजेस्टिव डिसऑर्डर ज़्यादा इशू करता है तो फिर बेशुमार मसाइल, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, वो आते हैं। अब हम आते हैं कि इन सारी चीज़ों का इफ़ेक्ट हमारे लिवर पे कैसा होता है। जो खुराक हमने खाई, एसिडिटी, तजाबियत बनी, और वो तजाबियत हमारे खुराक के साथ जो है वो खुराक चूँकि डाइजेशन होने के लिए हमारे लिवर में चली गई। ये 3 घंटे का प्रोसेस होता है मैदे के अंदर खुराक का, और 3 घंटे के बाद खुराक हमारे लिवर में, जिगर में चली गई, और जिगर फिर जो है वो उसको मेटाबोलाइज करता है, जिसको हम अम्ले इस्तिहाला भी कहते हैं। अब वहाँ पे क्या हो रहा है कि वो जो जूसेस मैदे से गए और जो डिफरेंट एंजाइम्स आए वो सारे मिक्स हो गए, और जो उससे ग्लूकोज बनना था वो बना, और उसमें जो सुफरा था यानी बाइल था, या उसके बाद जो उसमें बलगम स्पूटम थी, या उसके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल या चिकनाई थी, वो 3 चीज़ें जो है वो खून में चली गई, ग्लूकोज के अलावा 3 चीज़ें जो है।
अब वो 3 लाइफ ऑर्गन जो हमने पहले बात की थी कि असाब की खुराक क्या है, बलगम स्पूटम, वो हमारे दिमाग को चली गई और फिर दिमाग ने पूरी बॉडी के असाब को सप्लाई देनी है। इसी तरह से उज़लात की खुराक क्या है, हमारा चिकनाई, और वो चलेगी हमारे दिल को, और दिल ने फिर वो पूरी बॉडी के जितने भी मस्कुलर सिस्टम है, मसल्स हैं, पाँव से सर तक, उन तमाम को सप्लाई दिल ने देनी है। इसी तरह जिगर जो है उसके अपने पास सुफ्रा बाइल है, वो उसके पास रहेगा, और ज़रूरत से ज़्यादा होगा तो वो पित्ते में स्टोर कर लेगा, जिसको हम गॉल ब्लैडर जीबी भी कहते हैं, और जो एक्स्ट्रा होगा और जितनी ज़रूरत होगी उतना वो खून में डाल देगा। बाकी जो चीज़ें हैं वो छोटी बड़ी आंत में, और उसके बाद फिर हम कुछ लोग 12 घंटे के बाद, कुछ लोग 24 घंटे के बाद उसको जो है वो फुजला की शक्ल में हम जिस्म से खारिज कर देते हैं। सो होता ये है कि ये जो तेज़ाबियत थी इसने जाकर लिवर पे इफ़ेक्ट किया। लिवर के एंजाइम जो थे उसमें सोजिश हुई, और जो जिगर के एंजाइम थे उस सोजिश की वजह से, उसमें स्वेलिंग आने की वजह से, वर्म आने की वजह से, तो वहाँ पे जो उसके एंजाइम्स थे वो डिस्टर्ब हो गए। ALT बढ़ गया या AST बढ़ गया, जिसको हम SGPT SGOT भी कहते हैं। हमारा जो टोटल बाइलिरूबिन था, बाइल जो था वो बढ़ गया, डिस्टर्ब हो गया। कॉन्डिजेंट अनकॉन्डिजेंट बाइलिरूबिन जो था वो प्लस माइनस हो गया, फ्लक्चुएट कर गई सारी वैल्यूज़, कुछ बढ़ गई, कुछ कम हो गई, कुछ नॉर्मल रही। इट मीन्स कि वो हमारा जो सुफ्रा बाइल था अब वो नॉर्मल नहीं रहा। अब आगे काम आना है, जब वो खून में चला गया तो आगे हमारा वही बात जो हमने पहले की थी कि हमारा जो स्प्लीन तिली है उसका फंक्शन आया, और उसने फिर उस खून में से उन फासिद मादों को निकाला, या तो अपने पास रख के बर्न कर दिया, या जिस्म से बाहर पेशाब और हमारे पखाना की शक्ल में जो हम करते हैं उसमें से खारिज कर दिए वो सारे टॉक्सिक जहरीले मादे जितने भी थे। इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर जो है वही हमारी असल बुनियाद है आज के इस टॉपिक की, और वहाँ से पीला, नीला और काला यरकान, और उसके बाद फिर वो चीज़ें कन्वर्ट हो गई हेपेटाइटिस A B C D E F में, और फिर ये हेपेटाइटिस जो है वो हमारे जान लेने तक जो है वो पहुंच जाता है। उसकी असल वजह ये है कि हम उसका असल जो प्रॉपर इलाज, तो से जो उसका ट्रीटमेंट है वो नहीं करते। हम क्या करते हैं, पहले मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ खा के इस तज़ाबियत और इन चीज़ों को मज़ीद बिगाड़ते बढ़ाते चले जाते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि जब हेपेटाइटिस में कन्वर्ट होता है तो फिर हम हेपेटाइटिस की कभी गोलियाँ खा रहे होते हैं, कभी टीके लगवा रहे होते हैं, उसके मुख्तलिफ़ कोर्सेज करने में लगे रहते हैं, हालांकि वो इसका हल नहीं है। इसलिए कि मैंने प्रैक्टिस में ये देखा है कि जिन्होंने टीके लगाए या गोलियां खाई, यानी गोलियों का कोर्स किया या टीकों का कोर्स किया या दोनों मिलाकर भी कर लिया उन्होंने, तो उसके बाद उनका केस जो है वो जिगर सुकड़ने की तरफ यानी लिवर सर्राइटिक की तरफ गया, पेट में पानी आया, और उसके बाद फिर लिवर कैंसर पे वो जा पहुंचा। फिर डॉक्टर जो है वो आपको लिवर ट्रांसप्लांट और इस तरह के मशवरे जो है वो आ रहे होते हैं, और मरीज़ पेट में पानी आने के बाद एंड स्टेज पे यानी CLD जो होती है हमारी क्रॉनिक लिवर डिजीज़ उस पे पहुंच चुका होता है। फिर उसका इफेक्ट अगर खुदा ना खास्ता किडनी पे भी हो जाए तो फिर हमारा CKD यानी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ भी के साथ जो है वो शुरू हो जाता है। सो इन सारी चीज़ों का हल असल क्या है? अभी मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ यहाँ पे कि डॉक्टर्स का कहना है, जो हमारे पाकिस्तान के डॉक्टर्स हैं उनका कहना है कि 30 लाख पाकिस्तानियों को जिगर का कैंसर जो है वो होने वाला है अगले 10 साल में। क्यों, कैसे? ये कोई वबा नहीं आएगी एकदम कोई 30 लाख लोगों को पाकिस्तान में जिगर का कैंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये वही लोग हैं जिन्होंने हेपेटाइटिस के टीके लगवा रखे हैं या जिन्होंने गोलियों के कोर्स कर रखे हैं, और वो इस बात में मुतमिन है कि हमने 3 महीने का कोर्स कहा गया या 4 महीने का कहा गया या किसी को 6 महीने का या किसी को 9 महीने का, तो उन्होंने अपने अपने उस मुताबिक कोर्स मुकम्मल कर लिया। रिपोर्ट क्या आई पता नहीं। और कुछ लोग कहते हैं कि जी हमने PCR करवाया, जिसको वो लोग कहते हैं पंजाबी में कि वड्डा टेस्ट करवाया। अब वो क्या है PCR, कि PCR में नॉट डिटेक्टेड लिखा हुआ आ रहा है या डिटेक्टेड लिखा हुआ आ रहा है। डिटेक्टेड आए तो इसका मतलब है कि डिटेक्ट हुआ, नज़र आया, और नॉट डिटेक्टेड का मतलब होता है नज़र नहीं आया। सो इस टेस्ट पे किसी भी सूरत हम ये बेस नहीं कर सकते कि हेपेटाइटिस है कि नहीं है, जबकि उससे सस्ता और आसान मेथड ये था कि हम हेपेटाइटिस जो भी आपका है, आप उस हेपेटाइटिस का अलाइजा मेथड करवाते
और उसमें लिखा हुआ आता है कि पॉजिटिव या नेगेटिव, और अगर पॉजिटिव है तो वैल्यू कितनी, और नेगेटिव हो चुका हुआ है तो फिर नेगेटिव लिखा आएगा, और नॉर्मल वैल्यू जो लिखी होगी उससे अगली जो वैल्यू है उससे कम आ रही होगी। तो इट मीन्स कि आप ठीक हो चुके हैं। जिसके बाद आप किसी को खून दे सकते हैं, आप मुल्क से बाहर जा सकते हैं, वैसे भी आपको मेडिकल फिटनेस जो भी आपका टेस्ट वेस्ट होते हैं वो सारे आपके क्लियर आएंगे, और अगर आपका कोई मामला रुका हुआ है एम्बेसी में या कहीं भी या किसी वजह से, तो वो आपका सारा क्लियर हो सकता है। आप किसी को खून दे सकते हैं, सबसे बड़ी बात ये। लेकिन अगर हम हेपेटाइटिस के टीके और गोलियाँ लगवाने के बाद भी हमारा जो है वो एलाइजा मेथड के बजाय हम PCR टेस्ट करवा के नॉट डिटेक्टेड की रिपोर्ट पे शायद हम मुतमिन हो गए, लेकिन आप किसी को खून नहीं दे सकते, आप मुल्क से बाहर नहीं जा सकते, आपको कोई भी एम्बेसी जो है जो वो मेडिकल आपके करवाएगी तो आप उसमें अनफिट करार दिए जाएंगे। और वही वजह है कि वो जो बात हमने की ना कि जी अगले 15 साल में 30 लाख पाकिस्तानियों को जिगर का कैंसर होगा, उनके लिए जो है वो लिवर ट्रांसप्लांट और उसके हॉस्पिटल इस तरह के बनाए जाएं कि जो बात मैंने आपको बताई, वो वही लोग हैं जो टीके और गोलियां खा के मुतमिन बैठे हुए हैं। होना ये चाहिए था कि जो हमारा एलोपैथिक सिस्टम है ये सारे का सारा जो है ये बेस्ड ऑन कि ये मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट मीन कि आप बीमारी को मैनेज करो, ये आपके साथ ही रहेगी, आपने इसको मैनेज करना है, आप इसको कंट्रोल करने की, मैनेज करने की कोशिश करो। बात ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट जो है वो एलोपैथिक सिस्टम में किसी भी बीमारी का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ट्रीटमेंट वो होता है जो इंसान को, अच्छा चले हम ये देख लेते हैं कि बीमारी क्यों आती है। इंसान को अल्लाह ताला ने अहसन व तकवीम तख्लीक किया, और जब ये अपनी नेचर और फितरत पर होता है या उसके करीब होता है तो कोई बीमारी नहीं होती, ये तंदुरुस्त होता है। लेकिन जब इसकी फितरत और नेचर में कोई बिगाड़ आता है तो फिर इसमें कोई ना कोई तकलीफ बीमारी आती है, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है या तेज़ी से बढ़ जाती है और मसाइल होते हैं। सो उसमें क्या होता है कि हमें ये चाहिए कि हम ऐसा तरीका इलाज लें जो हमें फितरत और नेचर के करीब लेकर आए, ना कि हम फितरत और नेचर से अगर हम दूर जाएंगे तो फिर हमारी बीमारियां और मसाइल जो है वो बिगड़ते चले जाएंगे और हम जिगर के कैंसर तक जा पहुंचेंगे। सो अल्लाह ताला के निज़ाम सेहत में यानी तिब्बे नबवी के अंदर और तिब्बे कुरानी के अंदर, यानी जो हमारा नेचुरोपैथिक सिस्टम है, जो हमारा ईस्टर्न मेडिसन, उसके अंदर अल्लाह ताला ने तमाम बीमारियों की शिफा रखी है। और ख़ास तौर पे जो आज का हमारा टॉपिक था हेपेटाइटिस या उसके वाले से, वो जरकान जिगर या सुकर सुखा है या जिगर कैंसर तक भी जा पहुँचा हो खुदा न खास्ता, तो इन तमाम मसाइल का हल जो है वो इसमें मौजूद है। प्रोग्राम हेल्थी लाइफ के साथ आपका मेज़बान, आपका तबीब, आपका मुआलिज, हर्बलिस्ट, नेचुरोपैथिक डॉक्टर जमील मेहरवी आपसे इजाज़त चाहता है। नेक्स्ट अगले प्रोग्राम में हम एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक अपना फीडबैक जो है वो देना ना भूलिएगा। इसके साथ ही अल्लाह हम सब का हामी नासिर। Hello, Dr. Anand here to tell you about unleashing your inner power. When you talk on Facebook with someone with your family far away, genuine communication takes place. Just look after yourself and grow in power and grow in finance and grow in status.
If you stay in your comfort zone, you'll never find out who you are. आज के नाम और आज के गम के नाम। आज का गम चुके है जिंदगी के भरे गुलिस्तान से खफा। जर्द पत्तों का बन, जर्द पत्तों का बन जो मेरा देश है। दर्द की अंजुमन जो मेरा देश है। Hello, I'm Robin Ashby. I'm a city councillor, I'm an advisor. I have done a lot of things in my life. Mixed some hot Chileans, cool Jamaicans, Dominicans, Trinidadians and Bajans, with some Ethiopians, Chinese, Vietnamese and Sudanese. There were 282,000 people who came here to study. We can absolutely understand that first generation come here and they're in a strange land where they have to learn new customs and it's cold as well.
माजी में मंटो पार्क कहलाने वाले वसीओ रीस पार्क के ऐन वस्त में करारदादे पाकिस्तान की यादगार का दर्जा रखने वाला मीनार पाकिस्तान अयूब दौर में तामीर किया गया। मीनार पाकिस्तान, जिसे टावर ऑफ पाकिस्तान और मीनार ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है, करारदादे पाकिस्तान की याद में बनाया गया था, जिसे 22 से 24 मार्च 1940 के ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के इजलास के दौरान अपनाया गया था। ये इजलास मंटो पार्क में मुनक्किद हुआ और इस वक्त इसे इकबाल पार्क कहा जाने लगा। अब इसे बादशाही मस्जिद और किले को मिलाकर ग्रेटर इकबाल पार्क का नाम दिया गया है। मीनार पाकिस्तान का डिजाइन तुर्क माहिर तामीरात नसरुद्दीन मरात खान ने तैयार किया। तामीर का काम मियां अब्दुल खालिक एंड कंपनी ने 23 मार्च 1960 में शुरू किया और 21 अक्टूबर 1968 में इसकी तामीर मुकम्मल हुई। इसकी तामीर की कुल लागत 75 लाख रुपए थी। ये 18 एकड़ रकबे पर मुहित है। मीनार की बुलंदी 196 फीट है और मीनार के ऊपर जाने के लिए 324 सीढ़ियां हैं, जबकि इसके अलावा जदीद लिफ्ट भी नस्ब की गई है। मीनार का निचला हिस्सा फूल की पत्तियों से मुशाबत रखता है। इसकी संगमरमर की दीवारों पर कुरान की आयात, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और इलामा मोहम्मद इकबाल के अक़वाल और पाकिस्तान की आज़ादी की मुख्तसर तारीख खुंदा है। इसके अलावा करारदादे पाकिस्तान का मुकम्मल मतन भी उर्दू और बंगाली दोनों जुबानों में इसकी दीवारों पर कुंदा किया गया है। आप मीनार पाकिस्तान को देख तो सकते हैं, लेकिन इसके करीब नहीं जा सकते। मीनार पाकिस्तान के गिर्द लोहे की बाड़ लगा दी गई है और ये बंदिश आज से नहीं बल्कि कई साल से है। Hello and welcome to Business ABC. But the number one reason why businesses fail, whether they are starting or scaling or growing, is because of money. And when you go to them with an idea, they will always go, "Oh, great idea. Oh, vadya." The best businesses either fix something or they make them better. Where it's legal or where it's contract, take your time. वेलकम टू सेटल अराउंड द वर्ल्ड। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म बड़ा अहम रोल प्ले करता है किसी भी वीज़ा एप्लीकेशन में। विजिटर वीज़ा किन लोगों को मिल सकता है और विजिटर वीज़ा पर हम क्या कुछ कर सकते हैं, ये यहाँ पर देखना बड़ा ज़रूरी है कि वो किन लोगों को साथ लेके जाना चाहता है।
I'm Rahila Ahmed. I'm a psychotherapist, a personality coach. We have decided to bring all of those tools and techniques that are scientifically proven. मामा मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है. What are we going to talk about today? Now we have two different parts of our mind. One is the conscious mind and one is the subconscious mind. Moment to moment miracles are going to come in your life and moment to moment healing and happiness is going to come to your life. And as I mentioned earlier, today we are going to talk about your health. निसार मैं तेरी गलियों के ए वतन के जहां चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले नज़र चुरा के चले जिस्म जां बचा के चले बने हैं अहले हवस मुद्दई भी मुनसिफ भी किसे वकील करें किससे मुंसफी चाहें मगर गुजारने वालों के दिन गुजरते हैं तेरे फराक में यूं सुबह शाम करते हैं गर आज तुझसे जुदा हैं तो कल बहम होंगे ये रात भर की जुदाई तो कोई बात नहीं गर आज औज पे है ताले रकीब तो क्या ये 4 दिन की खुदाई तो कोई बात नहीं। प्रोग्राम भी करंट अफेयर्स के साथ मियां सैफ रहमान हाजिर खिदमत। एक सरेदस्त जो मसला दरपेश आया वो तो गंदम का स्कैंडल है। 22 अक्टूबर 2023 को कमेटी जो है कैबिनेट मीटिंग में अप्रूवल दी जाती है कि जी हम गंदम उगाएं। आप जो कोई भी हैं आप एक पॉलिटिकल पार्टी से मुल्क के अंदर ना आप टैक्स लगा सकते हैं ना आपके पास टैक्स कलेक्शन है। ये है कि यहाँ तो अपनी आप जातियात की सियासत कर दें। ठीक है, ईरान में वेस्टर्न कंट्रीज के अमेरिकन और ब्रिटिश के इंटरफेरेंस के फुटप्रिंट्स मौजूद है। हमारी जो मिनिस्ट्री है प्लानिंग की उसमें कैपेसिटी भी नहीं है इतने बड़े प्रोजेक्ट को हैंडल करने की।
बादशाही मस्जिद 1673 में औरंगजेब आलमगीर ने बनवाई। ये अजीमुशान मस्जिद मुगल दौर की एक शानदार मिसाल है और लाहौर शहर की शनाख्त बन चुकी है। ये फैसल मस्जिद इस्लामाबाद के बाद पूरे पाकिस्तान की दूसरी बड़ी मस्जिद है जिसमें बैक वक्त 60,000 लोग नमाज अदा कर सकते हैं। इस मस्जिद का अंदाज़े तामीर जामिया मस्जिद दिल्ली से बहुत मिलता जुलता है जो औरंगजेब के वालिद शाहजहां ने 1648 में तामीर करवाई थी। मस्जिद के कुल 8 मीनार हैं जिनमें 4 बड़े और 4 छोटे हैं। मीनारों को बनाते हुए इस बात का एहतमाम किया गया कि अगर ज़लज़ले जैसी कुदरती आफात के हादसे के वक्त गिरने का खदशा हो तो ये मस्जिद के सहन में गिरने की बजाय मस्जिद के हदूद से बाहर गिरें। मीनारों की बुलंदी 176 फीट 4 इंच है। मस्जिद में गुंबद की तादाद 3 है। मरकजी गुंबद 49 फीट बुलंद है जबकि दीगर 2 गुंबद 32 फीट बुलंद हैं, जबकि गुंबद का कतर 65 फुट है। चलिए हम और आप देखते हैं कि हुकूमतों में बैठे सियासतदानों की बातें इतनी मुश्किल क्यों होती हैं। क्या हुकूमती वादे आम पाकिस्तानी के फहम से बालादर नहीं होते? देखिए पहली बार एक अवामी नुमाइंदे को अरबाबे इक़्तिदार से आपकी बात करते हुए। Hello, I'm Alan Curry. I'm bringing you a show badge of honour on my successful life in the police service to the rank of Chief Superintendent. Talking about me, and hopefully I'm saying some nice things about myself. There's a couple of bad ones, I'm sure, as well. And I don't like criminal activity. As opposed to the other way around when you arrest somebody and have to find the evidence. And the feeling of doing something for somebody else, I don't know how you can get that from anybody else. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी करंट अफेयर। मैं हूं एहसन शहजाद। नाजरीन, इलेक्शन से पहले बड़े बड़े वादे किए गए, अवाम को रिलीफ देंगे, मगर अवाम को अभी तक कोई रिलीफ नहीं मिला। मरीम नवाज की तरफ से ऐलान किया गया था कि मैं सीएम पंजाब बन गई तो अवाम को बहुत रिलीफ दूंगी, सहूलियात पैदा करूंगी। शहबाज शरीफ की तरफ से भी ऐलान किया गया था, नवाज शरीफ की तरफ से भी ऐलान किया गया था कि हम अवाम के लिए आए हैं और अवाम हमें लेके आई है, इनके लिए हम कुछ करेंगे। महंगाई के ख़िलाफ़ आवाज़ कोई नहीं उठा रहा इस टाइम। वाहिद जमात इस्लामी है जिन्होंने महंगाई के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और इस्लामाबाद तक गए, वहाँ पे धरना दिया, काफ़ी दिनों बैठे रहे, वहाँ पे मुज़ाकरात भी हुए, फिर मुज़ाकरात फेल भी हुए, यानी कि दोनों तरफ से बातें चलती रहीं। अब आप देख लें बिजली कहाँ पे है, इनके रेट देख लें आप, बिजली के गैस के रेट देख लें कहाँ पे हैं, आसमान पर हैं।
महंगाई जो है आसमान पर है और जो आवाम है वो पिसती जा रही है चक्की में, सोलहात नहीं दी जा रही है आवाम को। आवाम को ये तवक्को थी कि इस गवर्नमेंट से कि हमें सहूलत मिलेगी, बिजली के रेट कम होंगे, गैस के रेट कम होंगे, पेट्रोल कम होगा। अब देख लें, अब पेट्रोल भी बढ़ चुका है, 1 रुपये बढ़ा दिया गया है और भी काफ़ी चीज़ों में इजाफा किया गया है। तो वाहिद जमात इस्लामी है जिन्होंने महंगाई के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है। अब इन्होंने आवाज़ उठाई है, दोबारा आवाज़ उठाने जा रहे हैं महंगाई के ख़िलाफ़, हुकूमत के ख़िलाफ़। तो आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं अमीर जमात इस्लामी ज़ियाउद्दीन अंसारी साहब। इनसे आप बात करेंगे कि पहले भी आप लोगों ने आवाज़ उठाई, आप लोगों ने अवानों तक आवाज़ पहुंचाई, मगर आप लोगों की आवाज़ नहीं सुनी गई। दोबारा जा रहे हैं आवाज़ उठाने के लिए, आवाम के लिए और महंगाई के ख़िलाफ़ करने के लिए एहतजाज। तो इनसे बात करते हैं आज कि क्या करेंगे आगे जाके, क्या आवाज़ दोबारा सुनी जाएगी या नहीं। सर वेलकम टू प्रोग्राम। और सर क्या कहेंगे, आप लोगों ने पहले भी आवाज़ उठाई, इस्लामाबाद में गए बिजली के ख़िलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़, तो आप लोगों की आवाज़ सुनी नहीं गई। काफ़ी बार मुज़ाकरात भी हुए आप लोगों के, फिर दोबारा नाकाम हो गए। फिर उन्होंने कहा कि जब 1 माह के बाद टाइम दें आप, उसके बाद आप लोगों से बात करेंगे। बात भी हुई, अवाम को क्या रिलीफ मिला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे दावत दी इस इशू पर। देखिए, जमात इस्लामी ने महंगाई के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर पर बिजली के बिलों में होश रुबा इजाफ़े के ख़िलाफ़ हमने आवाज़ बुलंद की थी और मुजाहरे किए पूरे मुल्क में, जगह जगह पर हमने बड़े जलसे किए। हमने जब ये मुतालबा रखा था तो सिर्फ़ ये हमारा मुतालबा ही नहीं था कि बिजली की कीमतें कम की जाएँ, बल्कि हमने उसका हल भी साथ पेश किया था। और हमने बड़ी अर्करीज़ी के बाद इस नतीजे पर पहुँचे कि 1994 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने जो IPPs को यहाँ पर मौका दिया था और फिर उनके साथ ऐसे मुआहदे किए कि जिसमें कैपेसिटी चार्जेस जो है वो उनको अदा करने पड़ रहे हैं। और वो कैपेसिटी चार्जेस है जिसमें हम बिजली तो उनसे ख़रीद नहीं रहे, लेकिन हम उनको पेमेंट कर रहे हैं। तो ये खरबों रुपए जो है वो हम 1994 से लेकर, इसमें पीपल्स पार्टी के दौर भी शामिल है, मुस्लिम लीग नून का दौर भी शामिल है और PTI का दौर भी शामिल है। इन्होंने तीनों ने मिलकर ये जो बिजली घर हैं इनमें बेपनाह इजाफ़ा किया, यानी इतना इजाफ़ा किया कि जितनी हमें बिजली की ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा मुआहदे किए गए। और यकीनन इसमें किकबैक्स शामिल किए गए थे। हमने फौरी तौर पर यही मुतालबा किया कि बिजली के बिल इंतहाई नीचे आ सकते हैं इस शर्त पर कि हम जितनी बिजली IPP से ख़रीद रहे हैं उतने चार्जेस हम अदा करें। ये कैपेसिटी चार्जेस जो हैं इसको ख़त्म किया जाए। हमारी इस बात को सुना गया, मुज़ाकरात हुए और मुज़ाकरात के बाद जो टेक्निकल कमेटी थी और ब्यूरोक्रेट्स थे उन्होंने हमसे बात की बैठकर, हमने 10 मुतालबात पेश किए थे। 10 के 10 मुतालबात को वज़रा की टीम ने और उनकी टेक्निकल कमेटी यानी ब्यूरोक्रेट्स ने ये तस्लीम किया कि ये सारे मुआहदे, सारे जो मुतालबे हैं ये काबिल अमल हैं, क्योंकि उस पर अमल दरामद कैसे करना है और रेट्स को किस तरह कम लाना है ये भी तजावीज़ हमने दी थी। और फिर वादा किया हुकूमत ने कि 45 रोज़ के अंदर हम ये इस पर अमल दरामद करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से कि 45 रोज़ में वो अपना होमवर्क मुकम्मल नहीं कर सके। लेकिन ये बात कि हमारा जो बात है वो सुनी नहीं गई, हमारी सुनवाई नहीं हुई। मैं इस पर यह ज़रूर कहना चाहूँगा कि हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब ने वहाँ पर IPPs के बारे में जो बयानिया जारी किया, पूरे पाकिस्तान को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को पता चला कि हुकूमत पाकिस्तान ने किस तरह नाजायज़ मुआहदे IPPs के बारे में किए। फिर एंकर पर्सन भी, कालम नवीस भी इस पर बोलना शुरू हुए। यानी एक सोया हुआ इशू था जिसको हाफ़िज़ नईमुर रहमान ने अपनी उस सियासत के नतीजे में, जो पुरअमन एहतजाज की सियासत है, जो अपनी आवाज़ ईवान इक़्तिदार तक पहुँचाने की सियासत है, यानी कल्चर को तब्दील कर दिया। ओए तोए के कल्चर से हम बाहर निकले हैं और हमने कौम को ये मैसेज दिया है कि अगर एहतजाज पुरअमन तरीके से किया जाए तो अपनी बात सुनवाई हो सकती है। और ये बात कि हमारी सुनवाई नहीं हुई, मैं इसको दुरुस्त नहीं समझता। देखें, पंजाब में हुकूमत मजबूर हुई
उन्होंने 2 महीने के लिए 14 रुपए पर यूनिट बिजली की कीमत कम की। वो इसी बुनियाद पर की कि वो प्रेशर जो 14 दिन धरने के नतीजे में और फिर उसके बाद मुसलसल एहतजाज के नतीजे में था, उसमें कमी वाक़ई हुई। और फिर IPPs के बारे में पहले मरहले में जब हमने ये इंकशाफ किया और हमने इस बात को प्रेस में लेकर आए कि 5 IPPs ऐसे हैं जिन्होंने एक धेले का भी बिजली प्रोड्यूस नहीं की, लेकिन अपनी कैपेसिटी चार्जेस के मुआहदे की बुनियाद पर वो हमसे पेमेंट ले रहे हैं और करोड़ों रुपए जो है वो वसूल कर चुके हैं। तो पहले मरहले पर 5 IPPs को ख़त्म करने का मुआहदा हुआ। अगले मरहले में फिर 11 IPPs जो हैं उनके साथ हुकूमत मुज़ाकरात कर रही है। हुकूमत की सुस्त रवि जो है इस बात पर दलालत करती है कि इनकी इसमें मेलाफाइडी है और वो इसको तूल देना चाहते हैं। लेकिन हम भी इस बात का अज़म किए हुए हैं कि हमारा एहतजाज मुसलसल जारी रहेगा, हम दबाव बरकरार रखेंगे और ये IPPs का जो टंटा एक हमारे सरों पर सवार है इसको ख़त्म करके रहेंगे। सर ठीक है, आपने कहा कि हाफिज़ नईम उर रहमान डटे रहे अपने बयान के ऊपर, आपके साथ आवाम भी थी इस्लामाबाद में। ठीक है, बिजली कम हो गई, दूसरी चीज़ों में इजाफा हो गया, पेट्रोल देख लें आप, गैस देख लें, फ़र्क तो ख़त्म हो गया। फिर देखिए, गुजारिश ये है कि मैनेजमेंट जो है वो तो हुकूमत का काम है। जो लोग अपोजिशन में होते हैं उनका काम यह है कि एक तो ख़राबी की निशानदेही करें और फिर उस ख़राबी को दूर करने के लिए प्लान भी पेश करें। हमने तमाम अपने मुतालबात के साथ प्लान भी पेश किए, हमने मंसूबा भी बनाया है कि किस तरह आप इस महंगाई को कम कर सकते हैं। लेकिन अगर हुकूमत की विल ही ना हो, अगर हुकूमत की ये तरजीहात में शामिल ना हो, हुकूमत की तरजीहात में ये शामिल हो कि जजेस को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, हुकूमत की तरजीहात में ये शामिल हो कि पार्लियामेंट को किस तरह मैनेज किया जा सकता है, हुकूमत की तरजीहात में ये शामिल हो कि अपोजिशन को किस तरह मैनेज किया जाए और किस तरह ख़रीदो फरोख्त की जाए, तो फिर अवाम को तो इसका जो दर्द है वो मज़ीद बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसलिए हम ये कहते हैं कि बुनियादी तौर पर हुकूमत जो है वो अवाम को रिलीफ देने के मूड में नहीं है। इसलिए हम ये समझते हैं कि इनके ऊपर मुसलसल प्रेशर रखना पड़ेगा, मुसलसल दबाव बढ़ाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर हमें कुछ रिलीफ मिलेगा। हाफिज़ नईम उर रहमान सिराजुल हक के बाद अब आए हैं, जमात में क्या तब्दीलियाँ आई हैं और जमात को कितना फ़ायदा हुआ है हाफिज़ नईम उर रहमान की वजह से? देखिए, गुजारिश ये है कि जमात इस्लामी जो है वो पाकिस्तान बनने से पहले जमात इस्लामी कायम हुई थी और हमारी फ़िक्र और हमारी सोच ये है कि मुआशरे में तब्दीली लाई जाए, मुआशरे राय आमा को जो है वो अपने हक़ में हमवार किया जाए, मुआशरे की इस्लाह की जाए। ये जो प्रोग्राम है ये सैयद अबुल आला मौदूदी अलैहि रहमा ने जमात इस्लामी के क़याम के वक्त दिया था। जमात इस्लामी जब पाकिस्तान बन गया तो 2 हिस्सों में तकसीम हो गई, एक हिंदुस्तान की जमात इस्लामी और एक फिर पाकिस्तान की जमात इस्लामी। पाकिस्तान में जमात इस्लामी सैयद अबुल आला मौदूदी अलैहि रहमा, फिर उसके बाद मियाँ तुफ़ैल मोहम्मद साहब, काजी हुसैन अहमद साहब, सैयद मुनव्वर हसन साहब, सिराजुल हक साहब और अब हाफिज़ नईम उर रहमान साहब। ये एक जमहूरी अमल है, मुसलसल तसलसल के साथ हमारे इंतखाबात होते हैं और उन इंतखाबात में जो कामयाब हो जाए वो अमीर जमात इस्लामी मुंतखब होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी बुनियादी पॉलिसी में कोई तब्दीली वाक़ई हुई है। हमारी सोच, हमारी फ़िक्र वही है कि हमने इस मुआशरे के अंदर इस्लाह का काम करना है और मुआशरे में से राह आमा हमवार करनी है और उसके साथ साथ ये कि हम हर जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होना अपना फ़र्ज़ समझते हैं और हम मुसलसल खड़े हो रहे हैं, अब भी खड़े होते रहेंगे। हाफिज़ नईम उर रहमान साहब ने एक नई रूह फूंकी है। हाफिज़ नईम उर रहमान साहब ने जो बयानिया दिया है और जिस तनदही के साथ और जिस पुरअज़म तरीके से कारकुनान को भी बेदार किया है, इसी तरह अवाम में भी एक बेदारी पैदा हुई है। जमात इस्लामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, बहुत ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, कोई भी इशू हो, हुकूमत को असर क्यों नहीं होता जमात इस्लामी के पैगामात के लेने? देखिए, मैंने पहले अर्ज़ किया कि हुकूमत की तरजीहात मुख्तलिफ हैं। हुकूमत में जो लोग आए हैं उनकी ये तरजीह नहीं है कि अवाम को रिलीफ दिया जाए, उनकी ये तरजीह नहीं है कि मुल्क और कौम तरक्की करे, उनकी ये तरजीह नहीं है कि पाकिस्तान एक आज़ाद रियासत और एक ऐसी रियासत है जो पूरे मुसलमान उम्मा की तर्जुमानी करने के काबिल है। लेकिन ये उनकी तरजीहात में शामिल नहीं है। उनकी तरजीहात में जो चीज़ें शामिल हैं वो अपना घर भरते हैं, अपने करप्शन जो है वो उनका मसला नहीं है। करप्शन जो है वो इंतहा तक पहुंची हुई है। जितनी भी हुकूमतें आई हैं, हर हुकूमत
ये कहकर फारग होती है कि इसने बहुत ज़्यादा करप्शन की है, लेकिन आने वाली हुकूमत हल्के फुल्के से मुकदमात दर्ज करने के बाद, ऐसे मुकदमात दर्ज करने के बाद जिनका कोई नतीजा नहीं निकलता, उनको रिलीफ फराम करती है। नई आने वाली हुकूमत जो है वो फिर वही काम करती है जो पहले वाले ने किया होता। और फिर तीसरी हुकूमत जब आती है तो वो भी इस बात का दावा करके आते हैं कि हम करप्शन को ख़त्म करेंगे, हम चोरों से निपटेंगे, हम चोरों को जेलों में डालेंगे। लेकिन 3.5 साल की हुकूमत के बाद हमें ये अंदाज़ा हुआ कि ये लोग भी वही हैं जो उन्हीं पार्टियों से निकल कर आए हैं, इनकी सोच नहीं बदल सकती। इस पूरे माशरे को वडेरों ने, जागीरदारों ने और ब्यूरोक्रेट्स ने और चंद जर्नैलों ने अपने शिकंजे में जकड़ा हुआ है। जब तक कौम इस शिकंजे से बाहर नहीं निकलेगी, कौम को कोई रिलीफ मिलने वाला नहीं। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पे शॉर्ट ब्रेक शामिल करते हैं, तो हमारे साथ रहिएगा। मुफक्किर पाकिस्तान शायर मशरिक इलामा मोहम्मद इकबाल 20वीं सदी के मारूफ शायर, कानूनदान, सियासतदान और तहरीके पाकिस्तान की अहम तरीन शख्सियात में से एक थे। इलामा इकबाल उर्दू और फारसी में शायरी करते थे और इस्लाम से ख़ुसूसी लगाव रखते थे। इनकी वफ़ात 21 अप्रैल 1938 को जावेद मंजिल में हुई थी। मज़ार इकबाल की सादा सी इमारत मुस्तकील शक्ल की है। इसका एक दरवाज़ा मशरिक और दूसरा जनूब की सिमत में है। मज़ार इकबाल पर सफ़ेद मार्बल भी लगा है। मज़ार की दीवारों पर इकबाल की किताब ज़बूर अजम से लिए गए इशार कुंदा हैं और इसके अलावा कुरानी आयात की कैलीग्राफी भी की गई है। मज़ार इकबाल के बाहर सरसब्ज़ टुकड़ियों में मुनक़सिम बाग भी है जो बहुत दिलकश और खूबसूरत है। मज़ार इकबाल की तामीर में इस्तेमाल होने वाला पत्थर इसी नौयत का है जो मुग़ल शहंशाह ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के मकबरे की तामीर में इस्तेमाल हुआ है। वेलकम बैक नाजरीन। अंसारी साहब, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ अच्छा काम कर रही है। इस लिहाज से तो अच्छा है कि फेस उनका जो स्क्रीन पर आ रहा है वो तो बड़ा खुशकुन है। और मैं तो ये बात नहीं कहूँगा, लेकिन लोग ये कहते हैं, सोशल मीडिया तो ये कहते हैं कि ये टिकटॉकर वज़ीर आला है। लेकिन देखिए, हुक्मरान जो है वो अपनी काबिलियत जो है वो अपनी कारकर्दगी से मनवाया करते हैं, अपने तस्वीर से, ट्रैक्टर पर बैठकर और तस्वीर खिंचवाने से किसानों को कोई सहूलत फराहम नहीं होगी। किसानों के साथ जो इस हुकूमत ने जुल्म किया है कि किसानों की गंदम को ख़रीदने का जब वक्त आया, जब उनकी गंदम पककर तैयार थी, उससे पहले हज़ारों टन गंदम जो है वो इंपोर्ट कर ली गई बाहर से,
और गोदाम भर गए और ख़रीदारी के लिए इनके पास रकम मौजूद नहीं थी। फिर उनको तुफल तसल्लियाँ दी गई, एक रेट मुकर्रर किया गया, उस रेट पर भी गंदम ख़रीदने से वज़ीर आला साहबा ने इनकार कर दिया कि हम नहीं ख़रीद सकते, हमारे पास पैसे नहीं है। अच्छा, फिर किसानों को बहलाने फुसलाने के लिए वो किसान कार्ड का एक ड्रामा रचाया गया और उनको ये कहा गया कि हम आपको किसान कार्ड के ज़रिए से आपको रिलीफ फराहम करेंगे, जो आज तक मुकम्मल नहीं हुआ। अब जिस किसान ने गंदम जो है वो मेहनत करके और बीज और उसके सब उधार और कर्ज लेकर एक गंदम को सींचा था और अपनी फसल तैयार की थी, वो अब आइंदा साल जो है वो फसल क्यों तैयार करेगा? ये नाअक्बद अंदेशी है हुक्मरानों की, और वो ये समझते हैं कि किसान कार्ड के ज़रिए से हमारा हाथ ऊपर हो और लोग हमसे मांगने वाले हों। ये उनको इस तरीके से कर्ज देना चाहते हैं। जब किसान बेचारा मजबूर हो जाएगा और वो पैसे लेने पर मजबूर होगा, चूँकि सारा कुछ उसने कर्ज लेकर दिया हुआ है, जब फसल पककर तैयार होती है तो वो अपने कर्जे वापस करता है। इस वक्त किसान की ये पोजीशन है कि नई फसल उगाने के लिए वो तैयार नहीं है और हुकूमत जो है वो कोई रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है। तो हम ये समझते हैं कि मोहतरमा जो वज़ीर आला हैं वो सिर्फ दिखावे के काम कर रही हैं, जिसमें टीवी पर एक अच्छी तस्वीर आ जाए और लोगों को ये पता चले कि बहुत सारा काम हुआ है। अभी देखें ना, पोल्यूशन लाहौर का बहुत बड़ा मसला है और ये कई सालों से चला आ रहा है। अभी 2 रोज़ पहले हमारी मोहतरमा वज़ीर आला साहबा ने ये बयान दिया है कि हम वज़ीर आला मशरिकी पंजाब को ख़त लिखने के बारे में गौर व फिक्र कर रहे हैं। भाई, गौर व फिक्र करने से और ख़त लिखने से पोल्यूशन ख़त्म हो सकता है? ये आपको 4 महीने पहले जब आपकी हुकूमत आई थी उस वक्त आपको कार्रवाई करनी चाहिए थी। वैसे तो आप कहती हैं कि जी हमें इंडिया के साथ जो है वो इन्वायरमेंटल डिप्लोमेसी की ज़रूरत है, यानी सिर्फ बयानात की हद तक रहे, कोई अमली कदम नहीं किया। और जब पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गई, इस पर बात करने की नौबत आई, तो भी बयान ये दिया कि हम एक ख़त लिखने के बारे में गौर व फिक्र कर रहे हैं। भाई ख़त लिखें तो सही और कोई अमली इक़दाम उनको बताएं कि वो क्या करें जिससे उनका भी भला और हमारा भी भला हो। यानी कोई पॉलिसी इनके पास मौजूद नहीं है लोगों को सिर्फ मुतमईन करने के लिए कि चूँकि मैं वज़ीर आला हूँ इसलिए मैं अपने तौर पर तो कोशिश कर रही हूँ। यानी वो चाहते ये हैं कि नीयत और इरादे का भी सवाब उनको मिले। तो हुक्मरानी करने में नीयत और इरादे का सवाब नहीं मिलता, कारकर्दगी का सवाब मिलता है। जमात इस्लामी इतने अरसे से रोडों पे एहतजाज भी करती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करती है, हर जगह पहुंच भी जाती है, आवाज़ भी उठाती है। जमात इस्लामी को सियासत में अभी तक कामयाबी हासिल क्यों नहीं हुई? देखिए, गुजारिश ये है कि जब आप जमात इस्लामी की सियासत को सीटों के साथ तोलना शुरू करेंगे, पार्लियामेंट में उनकी कितनी सीटें, तो मेरा ख्याल है कि ये नाइंसाफ़ी होगी। जमात इस्लामी ने पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद इस मुल्क के अंदर जब आइन बन रहा था तो उसमें अहम किरदार अदा किया। 1973 का आइन जब बना उस वक्त भी जमात इस्लामी ने एक बहुत अहम किरदार अदा किया और वो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज़ जो बुनियादी चीज़ें थी कि ये चूँकि मुमलिकत इस्लाम के नाम पर हासिल की गई है, ये एक फ़िक्री हुकूमत यहाँ पर कायम होनी चाहिए, इसलिए उसमें जो ज़रूरी चीज़ें शामिल करने वाली थी वो जमात इस्लामी ने अपनी कोशिशों से शामिल की। और उसके बाद भी देखिए, हमारा तो एक रुकन भी पिछले जो टेन्योर है 6 साल एक जमात इस्लामी का सेनेटर मौजूद था और हकीकी अपोजिशन सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने की है और वो बिल्कुल किसी इशू पर, कोई इशू नहीं है जिस पर जमात इस्लामी का मौक़िफ़ सेनेट में पेश ना हुआ। एक ही कौमी असम्बली के मेंबर थे, उन्होंने अपनी पूरी कारकर्दगी दिखाई। लेकिन ये सवाल तो मेरा आपसे पूछना बनता है कि लोग हमें वोट क्यों नहीं देते? जब हमें लोग ये समझते हैं कि ये ईमानदार हैं, जब लोगों के खिदमत करने की बारी आती है तो सबसे पहले जमात इस्लामी होती है। बैनुल अक़वामी कोई मिली मसला हो, कोई फ़लस्तीन का इशू हो, कोई कश्मीर का इशू हो, तो सबसे ज़्यादा लोग तवक्को भी रखते हैं और एतमाद भी जमात इस्लामी पर करते हैं। लेकिन अगर जमात इस्लामी ये मुरवजा जो पॉलिटिक्स है जिसमें ये समझा जाता है कि सियासत तो झूठ का नाम है और हेर फेर करके और लोगों के गलत वादे करके, जिस तरह आपने इंट्रो में कहा था कि वादे करके मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने इस बात का वादा किया था, शहबाज शरीफ साहब ने, कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे अगर हम इक़्तिदार में आए, और बिलावल भुट्टो साहब ने ये वादा किया था कि हम 300 यूनिट बिजली जो है वो फ्री देंगे। तो भैया आप इक़्तिदार में आ गए ना,
तो कहाँ इस तरह के वादे करके कभी रोटी कपड़ा मकान के नाम पर और कभी हकीकी तब्दीली के नाम पर लोगों से वोट लिए जाते रहें और हमारी आवाम इतनी भोली है कि इस तरह के नारों पर हमेशा राम हो जाती है और ये इक़्तिदार में आ जाते हैं, लेकिन इक़्तिदार में आकर वो तमाम चीज़ें जो उन्होंने वादे किए होते हैं वो कभी भी ये वफा नहीं कर सके। इसलिए हम ये समझते हैं कि हमारी जो कुव्वत और हमारी जो ताकत है उसको सीटों से ना तोला जाए, उनको हमारा जो माशरे के अंदर एक मुकाम है, माशरे के अंदर जो हमारी एक हैसियत है, लोग हमारे ऊपर एतमाद करते हैं, इस चीज़ से तोला जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि लोग अब तब्दील होना शुरू हुए, अपने सब पार्टियों को देख लिया, अब सबको आजमा लिया है और लोग अब तंग हैं। अब हकीकी पॉलिटिक्स उनको हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की क़यादत में नज़र आती है कि जिसमें गाली गलौज का कोई तसव्वुर नहीं है, जिसमें ओए तोए का कोई तसव्वुर नहीं है, जिसमें वो लाठी गोली वाली चीज़ कोई नहीं है, जिसमें पथराव और शेलिंग वाला आइटम मौजूद नहीं है। अगर आप अपनी बात अच्छे तरीके से और बेहतर अंदाज में आप लोगों को कायल करके कर सकते हैं तो फिर इस तरह की धमा चौकड़ी करने की ज़रूरत नहीं होती। यही असल में जमहूरियत है और यही सियासत का हुस्न है। अंसारी साहब, अवाम की अगर राय ली जाए तो अवाम कहती है कि जी जमात इस्लामी जो जमात है वो इस्टेब्लिशमेंट की जमात है, वो क्या सच है? देखिए, ये जिसकी जब कोई चीज़ कोई अमानत में दयानत में कोई हम पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकता तो फिर बड़ा आसान होता है ये कह देना कि जनाब ये इस्टेब्लिशमेंट की जमात है। भाई, इस्टेब्लिशमेंट की जमात तो वो हैं कि जिन्होंने इंतखाबात में कोई सीट हासिल नहीं की और इस्टेब्लिशमेंट ने फॉर्म 47 के ज़रिए उनको जितवा दिया। अगर जमात इस्लामी इस्टेब्लिशमेंट की जमात होती कि 2, 4, 5 सीटें जमात इस्लामी को भी मिलती ना। लेकिन सिर्फ फ़र्क ये है कि यहाँ पर जितनी सियासी जमातें हैं वो इस्टेब्लिशमेंट और मुक़्तदरा क़ुव्वतों को राम करने में और उनका फीडर अपने मुंह में रखने में जो है वो आफियत समझती हैं और हर कोई इस बात की कोशिश करता है, इस्टेब्लिशमेंट को राज़ी करने की कोशिश करता है कि हम फ़लाँ से ज़्यादा आपके ताबेदार हैं, हम फ़लाँ से ज़्यादा आपकी खिदमत कर सकते हैं। जमात इस्लामी चूँकि इस बात पर बिलीव नहीं करती। जमात इस्लामी जब भी तब्दीली आएगी इस मुल्क में, हकीकी तब्दीली आएगी, जब लोग हमें वोट देंगे तो हम इक़्तिदार में भी आएंगे और असम्बली में भी आएंगे। और इसकी वाज़ेह मिसाल हाफिज़ नईमुर रहमान साहब का इंतखाब है कि उनको सूबाई असम्बली की एक नशिस्त पर कामयाब करार दिया गया। लेकिन फार्म 45 हमारे पास मौजूद थे और फार्म 45 के मुताबिक हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने ये ऐलान किया कि मैं इलेक्शन नहीं जीता, किसी और पार्टी का फ़र्द इलेक्शन जीता, उसको उसका नोटिफिकेशन जारी किया जाए। और ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ, बल्कि पूरी दुनिया में ये पहली दफ़ा हुआ होगा कि किसी फ़र्द ने अपनी जीती हुई सीट इसलिए ठुकरा दी कि हकीकत में मैं कामयाब नहीं हुआ। ये मुझे भी एक वो हड्डी डालने की कोशिश की गई है कि किसी तरह ये एक सीट पर राज़ी हो जाएं और फिर अपना जो एहतजाज है वो ख़त्म कर दें। तो इसलिए जमात इस्लामी तो इस्टेब्लिशमेंट की क़याम तो उनकी तरफ देखते भी नहीं है। हम अपनी क़ुव्वत बाजू पर अपने लोग, जब हम उस वक्त इक़्तिदार में आएंगे जब हकीकी मानों पर लोग हमें वोट देंगे। और मैं एक आपको बात बताऊं कि ये हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने तो नशिस्त नहीं ली ना, और उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन जमात इस्लामी का कोई एक भी उम्मीदवार, वो सूबाई असम्बली का हो, कौमी असम्बली का हो, कौंसलर का इलेक्शन लड़ रहा हो, अगर वो कोई जाली वोट डालता हुआ देख लिया जाए, पकड़ लिया जाए या जिससे अंदाज़ा हो, तो वो फिर जमात इस्लामी में नहीं रह सकता। क्योंकि हम ये समझते हैं कि हम उस वक्त इक़्तिदार में आएंगे जब आवाम हमें इक़्तिदार में लेकर आएंगे। हमने ना जो लोग इक़्तिदार में आए, हमारे दर्जनों लोग जो हैं वो इक़्तिदार में शामिल हुए हैं, मेयर बने हैं, नाज़म बने हैं, नायब नाज़म बने हैं, सेनेटर बने हैं, सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली में गए हैं। लेकिन हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करते हैं कि किसी एक फ़र्द पर भी करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं है और कोई एक फ़र्द भी जाली वोट डालकर मुंतखब नहीं हुआ। अगर ऐसा होता तो अज खुद जमात इस्लामी के अंदर ऐसा एहतसाब का निज़ाम मौजूद है कि वो खुद फिर जमात इस्लामी में नहीं रह सकता। पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, आपको पता है, पेट्रोल फिर महंगा हो चुका है। जमात इस्लामी क्या दोबारा एहतजाज करेगी अब पेट्रोल के ख़िलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़ दोबारा? जी देखें, हम तो मुसलसल एहतजाज में हैं। पिछले कुछ अरसे में 1-1.5 महीने में बैनुल अक़वामी मंडी में पेट्रोल की कीमतें नीचे आई हैं और हम मुसलसल ये मुतालबा कर रहे हैं
कि जितनी पेट्रोल की कीमतें बैनुल अक़वामी मंडी में नीचे आई हैं उस तनासुब से कम 100 रुपए पर लीटर कीमत कम होनी चाहिए। लेकिन हुकूमत के अल्ले तल्ले ख़त्म नहीं होते। हुकूमत ये चाहती है कि ये बेनिफिट भी आवाम को देने की बजाय हम अपने पास रखें। और वो जनाब अभी देखें ना, मुल्क से बाहर के दौरे में बेशुमार लोगों को जो है वो जहाज़ों में लाद कर और VIP होटल्स में 5 स्टार 6 स्टार होटल्स में जो है अपनी रिहाइश रखी हैं। अब हुकूमत में शामिल जो जमातें हैं वो ये चाहती हैं कि हमारी अयाशियाँ तो उसी तरह मौजूद रहें, लेकिन गरीब आदमी जो है वो हमारे लिए कुर्बानी दे। भाई क्यों दे? हम इस पर एहतजाज कर रहे हैं और मुसलसल एहतजाज में पेट्रोल की कीमत में इजाफा जो है ये किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं है। पेट्रोल की कीमत में तो कमी होनी चाहिए थी और मैंने अर्ज किया कि 100 रुपए की कमी होनी चाहिए कम से कम। लेकिन ये नाकबत अंदेश हुक्मरान जो हैं वो इस बात को समझते नहीं हैं और मैं ये समझता हूँ कि बस लावा फटने को है। किसी वक्त भी जो है वो अवाम निकलेगी और हुक्मरानों के ठीक है, लावा फटने को है। तो नाज़रीन यहाँ पे एक ब्रेक शामिल करते हैं, तो हमारे साथ रहिएगा। ट्रस्ट है लोगों का। मुझे लगता है आप लोगों तक रसाई नहीं आपकी हो पाती। आपका मंशूर क्या है? किसी सियासी जमात में इतना अच्छा इंतखाबी कमीशन नहीं है। अच्छे कंटेंट देखना चाहें तो फिर डेफिनेटली आहिस्ता सा चेंज तो आएगा ना, ग्रेजुअल। तमाम 12 ज़ोडिक साइन के ऊपर मुझे अबूर है। दुबई के पास वसाइल थे, आज पाकिस्तान के पास तो बहुत कुछ है। जो सेफ सिटी के हवाले से है वो अब तो काफी ज्यादा जो है दोबारा वर्किंग में आ गए हैं। हाँ, एक टाइम आया था जब काफी कम हो गए थे। 50 तो स्टार नहीं हो सकते, स्टार तो 3-4 ही होंगे किसी भी फील्ड के। बच्चे को देखा कि वो एक ऐप के अंदर घुसा हुआ है जिसको टिकटॉक कहते हैं। It's me, Jia. This is my street vibes. But I got you, baby. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. वेलकम बैक। अंसारी साहब, जैसे देखा आपने कराची के इतने मसले मसाइल हैं, वहाँ पे भी कोई आवाज़ नहीं उठाता। रोड टूटे हुए हैं, गली गली में पानी है। अब लाहौर में भी बड़े मसले हैं, तो आप लोगों ने एक मुहिम शुरू की है, इसका क्या प्लान है? देखिए, हम तो मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं और हुकूमत को आगाह कर रहे हैं। मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि हम जब मुतालबा सामने रखते हैं तो हम उसका हल भी पेश करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ बस ये कह दें कि जी पेट्रोल जो है वो 200 रुपये कम करें। नहीं, हमारा मुतालबा ये है कि जो आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत कम हुई है उस तनासब से 100 रुपये पेट्रोल की कीमत पर लीटर कम होना बनता है और ये अवाम का हक है। इसीलिए लाहौर में भी बेशुमार मसाइल हैं
सबसे बड़ा मसला तो इस वक्त पोल्यूशन का है। पोल्यूशन जो है वो बेशुमार इस शहर के अंदर जो है वो इस वक्त अस्पताल भरे हुए हैं। नाक कान गले के जो मरीज़ हैं उनमें बड़ी तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा है। अब जमात इस्लामी इसमें क्या कर सकती है? जमात इस्लामी ने मुतालबा करने से पहले हमने इस पूरे एक साल में 11 लाख पौधे अल खिदमत फाउंडेशन की वसातत से और पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी के ताउन के साथ इस शहर में लगाए हैं और हम इसकी तादाद जो है वो मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं, 30 लाख तक करना चाहते हैं। अगले एक साल में इंशाल्लाह ये इनकी तादाद डबल मज़ीद होगी तो ये 30 लाख तक पहुँचेगी। अब गुजारिश ये है कि हम तो पहले कदम उठाया है, पहले हमने खुद कुछ किया है। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत जो है उसको पेशकदमी करनी चाहिए थी। ये 6 महीने पहले हुकूमत को इस तरफ इक़दाम करने चाहिए थे। ये धुआं छोड़ती हुई गाड़ियाँ, ये जो बारबेक्यूज़ वगैरह हैं, इनका जो धुआं जाता है इसको डाइल्यूट करने के लिए कोई ना कोई स्कीम तो बनानी चाहिए थी ना। अब इतनी ज़्यादा बीमारियां बढ़ रही हैं, फिर ये कहते हैं कि हम आर्टिफिशियल रेन का बंदोबस्त करेंगे, वो भी अभी तक नहीं हुआ। वो फिर कब होगा? जब क्या ये खत्म हो समझते जाए। हैं वो कामयाब होगा? पहले भी इन्होंने ये तजुर्बा किया था, वो नाकाम हो गया था, काफी पैसा लगाया इन्होंने, फिर दोबारा करने अच्छा, जा रहे हैं। मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ, देखें अगर एक तजर्बा आपने किया वो नाकाम हो गया तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसको तजर्बात ना किए जाएं, इसको तो मज़ीद बढ़ाना चाहिए ना। ये तो लोगों को जब तक रिलीफ नहीं मिल जाए उस वक्त इस पर मुसलसल काम किए जाना चाहिए। अब मैं इस पर यह अर्ज़ करता हूँ कि लाहौर में ट्रांसपोर्ट की सूरत हाल ये है कि 2 बड़े प्रोजेक्ट लाहौर में ट्रांसपोर्ट के चल रहे हैं। एक मेट्रो बस है और एक ऑरेंज लाइन है। हुकूमत ये समझती है कि ये हमने बहुत एहसान किया है लाहौर के अवाम पर, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इन 2 बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ जो इलाइट सड़कें हैं वहाँ पर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट चलनी चाहिए। और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट अगर वाफर मिकदार में और फैसिलिटेट करने वाली आवाम को हो तो आवाम जो मोटरसाइकिलों पर सफ़र करते हैं और अपनी पर्सनल गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, देखें यूरोपीय ममालिक में लोग अपनी प्राइवेट गाड़ियाँ उस वक्त सड़क पर लेकर आते हैं जब कोई छुट्टी का दिन होता है। बिल्कुल, वरना ये कि वो उनको फैसिलिटेट करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो ट्रांसपोर्ट जो है उसका बंदोबस्त करती है। अब लाहौर में मसला ये है कि वैगनें भी आपने बंद कर दी, बसें भी आपने बंद कर दी और कहते हैं कि सिर्फ मेट्रो पर और ऑरेंज लाइन पर सफ़र करें, और फिर चिंगचियों को खुली इजाज़त दे दी है। यानी चिंगची जो है वो लाहौर में पोल्यूशन पैदा करने का सबसे बड़ा ज़रिया है। हम ये नहीं कहते कि उनके रोज़गार को ख़त्म किया जाए, लेकिन आप बड़ी हुकूमत जो है वो उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो बसेस का और वैगन्स का इजरा करे और आवाम को फैसिलिटेट करे, तो फिर ये पोल्यूशन कम हो सकता है। फ्यूचर में जमात इस्लामी को आप कहाँ पे देखते हैं? क्या गवर्नमेंट में होगी या फिर ऐसे ही होगी जैसे अब है? देखिए, गुजारिश ये है कि हम तो मुसलसल कोशिश कर रहे हैं और हम ये समझते हैं कि इस दीन के गलबे के लिए भी और जो दीन को कायम करने की जो जद्दोजहद है जिसका हमने आगाज़ किया हुआ है, हम लोगों तक पहुँच रहे हैं। हम उनको दरस कुरान के ज़रिए से, तरबियती प्रोग्रामात के ज़रिए से, स्टडी सर्कल्स के ज़रिए से एजुकेट कर रहे हैं। लेकिन हम ये समझते हैं कि ये सारा जो काम इस्लाह मुआशरा का है ये उस वक्त तक तकमील तक नहीं पहुँच सकता जब तक आप इक़्तिदार पर काबिज़ ना हो। और इस इक़्तिदार को हासिल करना इन सारे फलाही कामों के लिए असबस ज़रूरी है। तो हम उसके लिए काविशें तो कर रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि इक़्तिदार को हासिल करने के लिए कोई नाजायज़ ज़रिया हम इस्तेमाल नहीं करना चाहते, ना अब इससे पहले किया है और ना आइंदा करेंगे। हम आवाम को एजुकेट कर रहे हैं, वो उनका जहन तब्दील होगा, रायामा हमवार होगी, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम ज़रूर इक़्तिदार में आएंगे, लेकिन जायज़ तरीके से आएंगे। और मैं ये समझता हूँ कि अब आवाम को इस बात की समझ आ गई है, सारी पार्टियों को देख लिया उन्होंने, सब एक ही अंदाज में, एक ही स्टाइल में और एक ही जो है ना वो फैक्ट्री से तैयार करदा सियासतदान है जो इस्टेब्लिशमेंट का फीडर अपने मुंह में लेने की तड़प रखते हैं। इन लोगों से कोई मुल्क में तब्दीली नहीं आनी। अब आवाम ये समझ गए हैं कि हाफिज़ नईमुर रहमान ने जो सियासत का एक नया कल्चर मुतारफ़ करवाया है, जिसमें ओए तोए की सियासत से बाहर निकले हैं और एक बाइखलाक गुफ्तगू
और इखलाक के दायरे में रहते हुए दलाइल के साथ अपनी बात करना, और फिर एहतजाज में भी एक म्याना रवि जिसमें लड़ाई झगड़े से ज़्यादा इस बात की कोशिश की जाए कि हम अपनी बात इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुंचा सकें। और हम ये समझते हैं कि हमने 14 रोज़ का धरना दिया और लाखों की तादाद में वहाँ पर लोग अफराद मौजूद थे, लेकिन इर्द गिर्द की आबादी का जो है वो एक गमला तक किसी का नहीं टूटा। बिल्कुल। और उस एहतजाज का नतीजा ये था कि हुकूमत मजबूर हुई मुआहदा करने पर, और हुकूमत जब हमारे साथ बैठी तो हमने उनको बताया कि ये मुतालबात कैसे तस्लीम किए जा सकते हैं। मैं एक आपको मिसाल देकर बताता हूँ कि IPPs के बारे में हुकूमत का ये कहना था कि ये इस पर तो बात ही नहीं हो सकती, ये तो मुआहदे बैनुल अक़वामी कवानीन के मुताबिक हुए, और अगर इसमें हमने खिलाफ वर्जी की तो हमारे ऊपर तो सू हो जाएगा और हमें तो बैनुल अक़वामी अदालतें जीने नहीं देंगी। लेकिन जब हमने दलाइल से बात की, जब हमने उनके साथ गुफ्तगू की, हमने उनसे कहा कि वो एग्रीमेंट से लेकर आएँ। दुनिया के किसी कानून में ये नहीं है कि कोई ऐसी चीज़ मौजूद ना हो, हर एग्रीमेंट में मौजूद होती है कि उस एग्रीमेंट से बाहर निकलने का तरीका क्या है। एक शिक ज़रूर मौजूद होती है उसमें, आप उसको इस्तेमाल करें। इसलिए फिर इस पर मजबूर हुए, वो जब हमने इस पर जोर दिया तो मजबूर हुए कि IPPs के साथ हम बात कर सकते हैं। तो देखें ना, ये एक कमरे में बैठकर और धरने वाली जगह पर कैंप में बैठकर अगर हुकूमत हमारे साथ मुज़ाकरत की तो हमने उनको कायल किया और उसका नतीजा मुस्बत निकला है। अभी देखें ना, ये जो 100 से ज़्यादा IPPs हैं, ये अगर इनको ऑडिट शुरू हो और इनको देखा जाए कि भाई कितनी पेमेंट ये ले रहे हैं और कितनी बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं। मैं इसमें एक अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जब IPPs का वो मुआहदे की तरफ नहीं आ रहे थे और इसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे, तो हमने उनको एक प्रपोज़ल दी। वो प्रपोज़ल ये थी कि आप IPPs, मसलन मैं एक मिसाल देता हूँ आपको, एक IPP अगर 100 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत है और हम 100 मेगावाट के पैसे उनको दे रहे हैं और वो हमें दे रही है 40 मेगावाट बिजली, हम 40 मेगावाट की बिजली ले रहे हैं और पैसे 100 मेगावाट के दे रहे हैं, तो हम उनसे मुतालबा करें कि भाई हमें 100 मेगावाट बिजली दे। 60 मेगावाट के पैसे तो दिए हैं ना, हम वो वहाँ से बिजली लें और किसी एक सनत को, मसलन गुजरांवाला में, शेखुपुरा में, लाहौर में और मुख्तलिफ कराची में, हैदराबाद में मुख्तलिफ सनतें मौजूद हैं, वो जो 60 मेगावाट बिजली है वो किसी एक सनत को हम फ्री ऑफ कास्ट दें। यानी 100 मेगावाट के पैसे तो हम दे रहे हैं ना, बिल्कुल दे रहे हैं, और पैसे हम वो जो 40 मेगावाट जिनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उनसे वसूल कर रहे हैं, तो हम 60 मेगावाट बिजली फ्री ऑफ कास्ट क्यों नहीं दे सकते। और उससे ये होगा कि जिस इंडस्ट्री को आप फ्री ऑफ कास्ट बिजली देंगे वो ग्रो करेगी, वो कंपटीशन में आएगी, हमारे इस मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़ेगी, जेन्युइन हमारी तरक्की जो है वो उसमें पाकिस्तान शामिल होगा। हम तो अपनी एक्सपोर्ट में बांग्लादेश से, हिंदुस्तान से और श्रीलंका से कंपटीशन में नहीं आ रहे। हमारी बिजली के महंगे होने की वजह से प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ जाती है। तो फिर उसमें ये हुआ कि वो परेशान हुए, उन्होंने कहा ये बात तो ठीक है, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि जी हमारी तो जो ट्रांसमिशन लाइन है वो इतना बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकती। पूरे मुल्क में हमारी ट्रांसमिशन लाइन 18,000 मेगावाट से ज़्यादा का वज़न बर्दाश्त नहीं कर सकती, और इन्होंने जो मुआहदे किए हुए वो कोई 67,000 मेगावाट के। तो हम ये बिजली को अगर वो हम देना भी शुरू कर दें IPPs, तो हम इनको एंड कंज्यूमर तक कैसे पहुंचाएंगे। तो अंसारी साहब, जमात इस्लामी फ्यूचर में अंपायर के साथ खेलना पसंद करेगी कि या नहीं? ये तो मैंने पहले अर्ज़ किया है कि हम कभी भी अंपायर के साथ नहीं खेलेंगे। हम जब हमें अवाम मुंतखब करेंगे तो हम उस वक्त मैदान में आएंगे, और वरना ये कि जो हम जिस तरह खेल रहे हैं हम इसी तरह अवाम की राय बदलने की कोशिश जारी रखेंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब वापस चले गए हैं लंदन, क्या वापस आएंगे आप? ये तो आपको सवाल उनसे पूछना चाहिए, या उनके जो फॉलोवर्स हैं वो आपको बता सकते हैं। हम तो कोई पेशन गोई नहीं कर सकते। नहीं, आप भी माशाल्लाह बड़े एक्टिव हैं। नहीं, क्या समझते हैं, आपका अंदाजा क्या कहते हैं? पहले तो डील हुई, आ गए वापस जी, वज़ीर आज़म बनाएंगे दोबारा, अब दोबारा चलेंगे, बीमार हैं जी, चेकअप करवाने गए हैं, क्या दोबारा वापस आएंगे? आपका तजुर्बा क्या कहता है? मैं सिर्फ ये गुजारिश करूँगा कि हमारी बदकिस्मती है कि हमारे ऊपर जो हुक्मरान मुसल्लत हैं वो जब इक़्तिदार में होते हैं
आना उनके लिए मुनासिब हो, मुमकिन हो, तो फिर वो इस मुल्क में आते हैं। जब उनको ये नज़र आए कि हम अब इक़्तिदार में नहीं आ सकते तो फिर वो रेस्ट करने के लिए मुल्क से बाहर चले जाते हैं। तो इसी तरह इन मौसूफ़ के साथ भी हुआ है। अब नहीं कहा जा सकता कि उनको अगर कोई तवक्को होगी तो वो पाकिस्तान ज़रूर आएंगे, अगर तवक्को नहीं है तो फिर वो वहीं पर क़याम करेंगे। मरीम नवाज़ कहती हैं कि जी आवाम ने मुझे वोट दिया, मैं आवाम की ताकत से आई हूँ, अब हम 5 साल पूरा करके ही जाएंगे, कोई हमें हटा नहीं सकता अपनी वजारत पे। देखिए, गुजारिश ये है कि ये तो रिकॉर्ड पर है कि मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान में इंतखाबात में कामयाबी हासिल नहीं की। जितने फार्म 45 हैं उनके ऊपर हमने पहले दिन मुतालबा किया था कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए और फैसला कर लिया जाए। एक डॉक्यूमेंट इन इंतखाबात में हमारे पास ऐसा मौजूद है जिनकी बुनियाद पर फैसला हो सकता है, लेकिन फार्म 47 की बुनियाद पर वो इलेक्शन कमीशन ने किए, रिटर्निंग ऑफिसर ने किए, इस्टेब्लिशमेंट ने उन डंडे के साथ करवाया। ये सारा जो इक़्तिदार में इस वक्त टोला है ये हकीकी तौर पर इंतखाबात में कामयाब नहीं हुआ। इसलिए उनका ये कहना कि भाई हम वोट लेकर आएँ, ये तो एक मजाक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम भी समझते हैं और हर इदारा, पार्लियामेंट भी समझते हैं, पार्लियामेंटेरियन भी समझते हैं इस बात को, और हुक्मरान भी इस बात को समझते हैं। इसलिए उनकी तरजीह अवाम को कोई रिलीफ देना नहीं है, अवाम की भलाई के लिए कोई काम करना नहीं है। वो ये समझते हैं हमें तो बोनस में ये इक़्तिदार मिला है और जब तक हम इक़्तिदार में उस वक्त जो लूट खसूट हो सकती है वो कर लें और उसके बाद फिर आइंदा कभी हमारी बारी नहीं आएगी। इसलिए हमने तो पहले दिन ये मुतालबा किया था कि ये फार्म 47 और फार्म 45 का झगड़ा जो है एक जुडिशल कमीशन ख़त्म कर सकता है। लेकिन अफसोस से ये कहना पड़ता है कि वो पार्टी जिसको इन इंतखाबात के हकीकी नताइज से फ़ायदा पहुँचना था वो इससे बिदक गए और वो नए इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि नए इंतखाबात में क्या होगा। ठीक है अंसार साहब, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे ब्रेक शामिल करते हैं, तो नाज़रीन मेरे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। अंसारी साहब, आप बात कर रहे थे IPPs के हवाले से, तो क्या सीन है उनको बताएं ज़रा डिटेल के साथ। अच्छा, मैं गुजारिश ये कर रहा था कि IPPs के बारे में जब मुज़ाकराती कमेटी धरने के दौरान जब उनके साथ गुफ्तगू शनीद हो रही थी, तो हमने उनसे ये गुजारिश की थी कि हम फुल पेमेंट कर रहे हैं, कैपेसिटी चार्जेस दे रहे हैं, तो एक अगर IPP 100 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं तो हम उनसे 100 मेगावाट बिजली परचेज़ करें, वसूल करें, और हम मुफ्त जो है वो 60 मेगावाट, अगर 40 मेगावाट हमारी ज़रूरत पूरी हो रही है तो 60 मेगावाट हम किसी एक सनत को दें जो अपनी कीमत और प्रोडक्शन बढ़ाए और रेट्स कम करे, जिससे पूरे मुल्क को फ़ायदा होगा और एक्सपोर्ट में भी फ़ायदा होगा। इस पर उन्होंने ये इंकशाफ किया कि हमारी ट्रांसमिशन लाइन जो है वो 18,000 मेगावाट बिजली ज़्यादा उसकी कैपेसिटी नहीं है, तो ये तो हम नहीं दे सकते। अगर हम 100 मेगावाट बिजली एक IPP से ले लें तो हम उसको एंड कंज्यूमर तक कैसे पहुंचाएंगे? हमारी ट्रांसमिशन लाइन में इतनी सख्त ही नहीं है। इस पर हमने फिर तजवीज़ दी, हमारी जो ज़ाहिर टेक्निकल लोग हैं, और हमने इस पर काम किया था 4-5 महीने, हमने सोचो विचार करने के बाद इसका हल तलाश किया था। हमने उनसे ये कहा कि आप जिन सनद को मुफ्त बिजली फराहम करेंगे, आप उनसे कहें कि IPP से लेकर और अपने फैक्ट्री तक, अपनी मिल तक बिजली पहुंचाने की जो ट्रांसमिशन लाइन है उसको अपग्रेड करें, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। इस पर हुकूमती इदारों ने ये कहा कि जी वो तो अगर हमें पैसे नहीं देंगे तो फिर तो ये अपग्रेड नहीं हो सकेगी। इस पर हमने मिसाल दी कि सियालकोट के जो प्रोडक्शन है, वहाँ के ताजरों ने अपनी प्रोडक्शन को वो पहले तैयार करके या तो लाहौर भिजवाते थे या कराची भिजवाते थे, वहाँ से फिर वो एक्सपोर्ट होती थी। उन्होंने सिर्फ इस परेशानी से बचने के लिए कि सियालकोट में प्रोडक्शन तैयार और यहीं से बैरून मुल्क चले जाए, उन्होंने अपना एयरपोर्ट तैयार कर लिया, अपनी एयरलाइन बना ली। तो ये ताजिर जो हैं, ये पाकिस्तान के ताजिर हैं, ये मुहब्बे वतन ताजिर हैं, ये अपना रोज़गार तो ज़रूर कमाते हैं, लेकिन ये मुल्क की तरक्की में भी अहम किरदार अदा करते हैं। तो हम ये कहते हैं कि अगर आप इनसे ये मुआहदे कर लें तो ये अपनी ट्रांसमिशन लाइन जो है वो अपग्रेड भी कर लेंगे। इससे न सिर्फ ये कि इनको फ़ायदा होगा बल्कि पूरे मुल्क को भी फ़ायदा होगा। आप 18,000 मेगावाट से ज़्यादा बिजली दे नहीं पा रहे, और जब ज़रूरत ज़्यादा होती है तो आपको लोड शेडिंग करनी पड़ती है, इस लोड शेडिंग से आपको निजात मिलेगी। लेकिन मैं जो गुजारिश करना चाहता हूँ वो ये कि हमारे पास हर मुतालबे का हल मौजूद है, और हम उसको दलाइल के साथ बयान करना चाहते भी हैं और किया भी है, और हुकूमत ने इन सारे दलाइल को दुरुस्त समझते हुए 45 दिन का मुआहदा किया था। लेकिन अगर हुकूमत की मेलाफाइडी इसमें शामिल है, कभी 26वीं तरमीम का मसला उनके पास आ जाता है, और 26वीं तरमीम भी अब हो गई है, तो अब 27वीं तरमीम का शोर शुरू कर दिया है, ताकि उन मुआहदों पर, उस मुआहदे पर जो जमात इस्लामी के साथ 14 दिन के धरने के बाद किए गए थे उसके ऊपर अमल दरामद ना हो सके। हम ये समझते हैं कि हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। अगर मज़ीद इसमें ताख़ीर करेंगे, अभी देखें ना, बिजली के बिल तो अब कम हो जाएंगे क्योंकि मौसम बेहतर हो गया, लेकिन सुई गैस की बिल जो है वो इजाफा हो रहा है, पेट्रोल में नाजायज़ इजाफा कर दिया गया है। अच्छा, ये पेट्रोल की कीमत में इजाफा और कमी होने से दीगर जो खाने पीने की अशियाँ हैं, मीट है, बीफ है, चिकन है, सब्जियां हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो महंगी हो जाती हैं। इसलिए हुकूमत को ये बात समझ नहीं आती कि पेट्रोल की कीमतों को मैनेज करे, वो एक निचली सतह पर रखे। जब ये इसहाक डार साहब जादुई कारनामा दिखाते थे और डॉलर को मैनेज करते थे, एक सतह पर रखते थे आर्टिफिशियल तरीके से, तो क्या ये पेट्रोल की कीमतों को एक जगह पर नहीं रख सकते? बिल्कुल रख सकते, लेकिन उनकी विल नहीं है उनके पास, वो ये करना नहीं चाहते, वो आवाम को कोई रिलीफ देना नहीं चाहते। वो ये चाहते हैं कि बस आवाम हमसे मांगे और हम किसी ना किसी तरीके से जो है वो हमारा हाथ ऊपर और हम भीग देते रहें, कभी लैपटॉप की सूरत में, कभी किसान कार्ड की सूरत में, कभी किसी और सूरत में, और सारे हुक्मरान ये करते रहे। हम ये चाहते हैं कि लोगों को मछली ना दें, मछली का कांटा दें। हम जमात इस्लामी इस पर पेशरफ्त कर रही है। जमात इस्लामी ने नौजवानों को, यूथ को IT की ट्रेनिंग देने के लिए पूरे पाकिस्तान में बनो काबिल का प्रोग्राम शुरू कर रखा है, और अभी इसी महीने हाफिज नईमुर रहमान साहब पूरे मुल्क में लाखों लोगों को, लाखों नौजवानों को IT की ट्रेनिंग देंगे। हम उनको भकारी नहीं बनाना चाहते, हम उनको वो हुनर सिखाना चाहते हैं जिससे वो अपने
मुआशरे में भी बाइज़्ज़त शहरी बने और अपने वालिदैन के भी अभी तक कितने मेंबर काबिल बने फ़ख्र हैं? बने। कितने मेंबर बने हैं अभी? जमात इस्लामी के तो लाखों की तादाद में मेरा ख्याल है कि 25 लाख के करीब बन गए, चूँकि मुहिम अभी जारी है और मज़ीद ये नवंबर का महीना भी हम मेंबरशिप करेंगे। लेकिन ये है कि ये मेंबरशिप ख़त्म होने के साथ ही साथ हम फिर हुकूमत के ऊपर भी दबाव बरकरार रखेंगे। हमारे साथ जो मुआहदा हुआ था उसमें ताख़ीर हुई है। हम ये कहते हैं कि जो बिजली के बिल हैं वो हम कैपेसिटी चार्जेस की बुनियाद पर पहले से अदा कर चुके हुए, इसलिए अब हम आवाम से ये राय लेंगे कि हम क्यों ना इस बात का ऐलान करें कि अब हम बिजली के बिल अदा नहीं करेंगे। हम कोई सिविल नाफरमानी करने नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ ये हमारा मुतालबा ये और हमारी दलील ये है कि जो बिजली के बिल इस कौम ने पिछले 10, 12, 15 सालों में अदा किए हैं वो जो ओरिजिनल अखराजात हैं बिजली के उससे ज़ायद अदा किए हैं। कैपेसिटी चार्जेस जो है वो तुम IPPs के जो मालकान हैं उनको नाजायज़ तौर पर अदा करो, उसके बिल अवाम क्यों दे। हम ये चाहते हैं कि अब अवाम से ये राय लेंगे इस बारे में कि हमने चूँकि पैसे जो है वो अदा कर दिए हुए, अदायगी हो चुकी है, अब कई साल तक हम बिजली का बिल अदा नहीं करेंगे। अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि PIA जो अब निजकारी होने जा रही है उसकी बोली लगने जा रही, बल्कि लगी भी है, मजाक उड़ाया गया है PIA का। वो कहते हैं जी हमें दे दें और मुनाफा हमसे ले लें, निजकारी होनी चाहिए या अली अमीन गंडापुर को देनी चाहिए? देखिए, गुजारिश ये कि पहली बात तो ये कि जमात इस्लामी इस हक़ में नहीं है कि ये जो बड़े बड़े इदारे हैं जिनको अवाम के खून पसीने से सींच कर जो है वो तरक्की दी गई थी, और PIA तो एक काबिल फ़ख्र इदारा था पाकिस्तान का, दुनिया की एयर कंपनियां जो हैं इससे रहनुमाई हासिल करती थी। लेकिन होता ये है कि पूरी जो हमारी हुकूमतें हैं, पूरे तमाम हुक्मरान जो हैं वो इदारों को पहले बर्बाद करते हैं, उनको तबाह करते हैं, और तबाह करने के बाद जब वो बिल्कुल डिफ़ॉल्ट की पोजीशन में आते हैं तो फिर कह देते हैं कि इनको बेच दें। स्टील मिल के साथ भी यही हो रहा है, रेलवे के साथ भी यही हो रहा है, PIA के साथ भी यही हो रहा है। और देखें, अब ये जो मजाक नहीं है, ये साजिश है इस मुल्क के ख़िलाफ़ और PIA के ख़िलाफ़ कि एक ऐसी जो है बिड आई है 10 अरब रुपए की, जबकि तवक्को 85 अरब की। भाई 85 अरब से कहीं ज़्यादा इसकी जो है रिज़र्व प्राइस होनी चाहिए थी। ये कोई मजाक है? इसके एयरपोर्ट्स हैं, इसके जो जहाज़ हैं, इसका ऑपरेशनल सिस्टम है। 10 अरब में तो एक ऑपरेशनल एक जो इसका रूट है उससे ज़्यादा मिल सकता है। मैं ये समझता हूँ कि ये एक साजिश है। 10 अरब रुपए लगाने के बाद हुकूमत अब इस कोशिश में होगी कि वो 85 अरब तो बहुत दूर की बात है, कुछ इजाफी पैसे जो है वो किसी अपने फ्रंट मैन को देकर और PIA फ़रोख्त कर दें, और ये बताएं, कौम को ये बताया जा रहा है कि तो ये 10 अरब में भी नहीं बिक रही। अब ये तो चूँकि आपने जिन साहब का नाम लिया वज़ीर आला KP के, वो उनका भी जो है ना वो मुंह में पानी आ रहा है कि ये 10 अरब है ना, जो चलो 10, 12, 15 अरब का मुझे मिल जाए। और मियां नवाज शरीफ साहब भी ये सोच रहे होंगे कि ये कोई 5-7 अरब रुपए इजाफा करके मैं खरीद लूँ, और जरदारी साहब की भी यही सोच होगी। हम ये समझते हैं कि ये PIA के ख़िलाफ़ भी और मुल्क के ख़िलाफ़ भी साजिश है, और इंशाल्लाह हम ये निजकारी नहीं होने देंगे, हम इस पर एहतजाज करेंगे। आईनी तरमीम जो मंजूर हुई है सुप्रीम कोर्ट में जाएगी जमात इस्लामी? जी बिल्कुल, हमने फ़ैसला कर लिया, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं, और अनकरीब हम सुप्रीम कोर्ट में हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब पिटीशन फाइल कर देंगे। क्या ये फ़ैसला वापस होगा? देखें, फ़ैसला वापस होता है या नहीं होता, इस पर तो कोई प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती। ये तो एक कानूनी जंग है, वो हम लड़ेंगे और हम अपना मौक़िफ़ हर सूरत में पेश करेंगे। हमने पहले दिन ये कहा था कि हम 26वीं आइनी तरमीम के हक़ में नहीं है, कोई एक चीज़ भी काबिल अमल नहीं है इसमें से, इसलिए इसको सिरे से हमने इसको मुस्तरद किया था। और जो अपोजिशन की पार्टी हैं उनसे भी हमने ये बात की थी कि आप इसको यकसर मुस्तरद करें, लेकिन वो मुज़ाकरात में भी शामिल हुई और बहुत सारी चीज़ों पर उन्होंने इत्तेफाक भी किया, और इत्तेफाक करने के बाद फिर वो इसमें शामिल भी नहीं हुई। अब फिर पता चला है कि PTI जो इसमें शामिल नहीं थी इस धंधे में, वो फिर जब जुडिशल कमीशन बनने की बारी आई है पार्लिमानी कमेटी के, तो उसमें अपने नाम दे दिए। इससे पहले भी उन्होंने अपने नाम दे दिए थे, लेकिन उसमें शरीक नहीं हुए। भाई ये क्या मजाक है? एक तरफ तो आप कहते हैं कि जी हमने इसको मुस्तरद किया, हम इसमें शामिल नहीं हैं, लेकिन उसके नतीजे में बनने वाली तमाम कमेटियों में आप शामिल हो जाते हैं। तो ये अब आवाम की आंखों में धूल झोंकने वाली बात है कि आप ऊपर से तो ये कहें हम मुखालफ हैं,
और मैं तो ये समझता हूँ सच्ची बात ये है कि ये बिक बकाव जो हुआ है और जिस तरह इजाफी वोट जो वोट की कमी थी उसको पूरा करने के लिए तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने अपना अपना हिस्सा डाला है और उन्होंने मुकमुका किया और मुकमुका करने के बाद वो शोर भी ये मचा रहे हैं कि हमारे बंदे अगवा हो गए, हमारे लोग खरीद लिए गए। भाई अगर आपके लोग अगवा हो गए हैं और आपके लोग खरीद लिए गए हैं तो ये इलेक्शन कमीशन भी मौजूद है, स्पीकर भी मौजूद हैं, उनके खिलाफ आप रेफरेंस भेजें ना, उनको नाअहलियत का नोटिस दें कि वो उनको पार्लियामेंट से आउट करवाएं। लेकिन कोई पार्लिमानी पार्टी ये करने की हिम्मत और जुर्रत नहीं रखती, इसलिए कि सारा कुछ जो ये अपना पार्टी की मंजूरी के बगैर जो वोट दिया जाता है पार्लियामेंट में, ये इसके ज़िम्मेदार सियासी पार्टियों के सरबराह होते हैं और उनकी कंसेंट से ये सब कुछ होता है। लेकिन अवाम की नज़रों में धूल झोंका जाता है कि जी नहीं, हमने तो इसकी मुखालफत की थी। ठीक है अंसार साहब, आखिरी सवाल, वकला बिरादरी साथ देगी आप लोगों का? जी, वकला बिरादरी बिल्कुल साथ देती है। वकला तो कानून के मुहाफ़िज़ हैं और हमारा तो एक बहुत बड़ा फोरम है, इस्लामिक लॉयर्स मूवमेंट के नाम से हम काम करते हैं और लाहौर में सबसे बड़ा जो वकला का ग्रुप है वो जमात इस्लामी के साथ वाबस्ता है। हमारे लोग जो हैं वो बार के इलेक्शनों में भी जीतते हैं, बार काउंसिलों में भी कामयाब हुए हैं और आइंदा भी इंशाल्लाह कामयाब होते रहेंगे। बहुत शुक्रिया अंसारी साहब प्रोग्राम में आने के लिए। नाज़रीन, आपने अमीर जमात इस्लामी लाहौर की बातें सुनी और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। निसार मैं तेरी गलियों के ए वतन के जहां, चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नज़र चुरा के चले, जिस्म जान बचा के चले। बने हैं अहले हवस मुद्दई भी मुनसिफ भी, किसे वकील करें किससे मुंसफी चाहें, मगर गुजारने वालों के दिन गुजरते हैं, तेरे फराक में यूं सुबह शाम करते हैं। गर आज तुझसे जुदा हैं तो कल बहम होंगे, ये रात भर की जुदाई तो कोई बात नहीं, गर आज औज पे है ताले रकीब तो क्या, ये 4 दिन की खुदाई तो कोई बात नहीं। Hello, I'm Robin Ashby. I'm a city councillor, I'm an advisor. I have done a lot of things in my life. Mix some hot Chileans, cool Jamaicans, Dominicans, Trinidadians and Bajans with some Ethiopians, Chinese, Vietnamese and Sudanese. There were 282,000 people who came here to study. We can absolutely understand that first generation come here and they're in a strange land where they have to learn new customs and it's cold as well.
Hello, I'm Robin Ashby with Yesterday, Today and Tomorrow, exclusively on South Asia Global Television. You may be wondering, what's this I'm wearing? I'm not entitled to, I didn't earn these medals, my grandfather did during the First World War, and it's mainly the First World War I want to talk about tonight. I'll mention the Second World War as well, and particularly the role and the heroes of the Indian Army. Now, India in those days was not the India we know today. It was the whole of British India, which was Pakistan, India, Nepal, Bangladesh and Burma. It stretched the whole way across there. This First World War, 1914 to 1918, was the Great War. It was the first global war of the modern era where mass slaughter was the order of the day. And the British Indian Army played its part in that. In fact, over 1.3 million people from South Asia were involved in that war, which was precipitated originally by alliances in Europe, but it engulfed everywhere. In 1914, within days of the declaration of war, the British Indian Army was being mobilised and was very quickly in Europe. And in that first year, in 1914, the first Victoria Cross was awarded to a member of the British Indian Army. That man, Mr. Khan, he was the Pakistani, and he was one of 11 Victoria Crosses awarded to the British Indian Army. 3 from Pakistan, 6 from India, and 2 from Nepal. And I will also talk about 2 other now Pakistani warriors who were the bravest of the brave. For those of you who are unfamiliar with Victoria Cross, it is for gallantry. It's the highest gallantry. The bravest of the brave are awarded this medal. It makes no difference your creed, colour, your rank. Gallantry is what counts. The actual physical medal itself is made from bronze of a cannon captured in the Crimean War in the 19th century. And it is awarded often by the king himself, and all 3 of these medals were awarded by King George V during the war, that First World War. So why am I interested in this? Well, my interest was first piqued by a visit to the Indian War Memorial at a place called Neuf-Chapelle in Flanders, which is France-Belgium area. And there, 4,700 members of the Indian Army who were killed in that area are commemorated. It's very close to the fields across which they charged with their bayonets fixed into the mud of Flanders. Flanders has a great resonance for us because of the way that we have commemorated it ever since then. Even this year we've commemorated it, and we commemorate it with a poppy which grew out of the wreckage, out of the craters, out of the watered by the blood of so many men, including members of the British Indian Army. So that's what first piqued my interest, and I went to that Indian Memorial with British members of Parliament who laid a wreath to commemorate the fact that sacrifice had been made by the British Indian Army. There were no cameras there, no television, nothing. They just stood with their heads bowed and remembered the sacrifice that had been made. I also, some years ago, took my grandsons to the Menin Gate, which is also in Flanders, and there, on that memorial, are carved the names of 413 members of the Indian Army who died in the Ypres salient, and for whom there are no known graves. Every night, except during wartime, the local people turn out to honour the fallen, particularly those with no known graves.
and I took my boys to see that, as I had done with MPs, and where we laid a wreath in memory of all of these fallen. And that is a very emotional time. It's the local people are there, and very, very many people who are tourists or who are remembering their ancestors. And one of the things that I want to do tonight in this segment is to talk to you, is to ask you if you have had relatives who served in the British Indian Army during either of the World Wars, and you want to write to me about them. I would be very interested to hear your story, and I would very much like to publish appropriate ones in a feature called Distant Voices, Remembering the Past and the Sacrifice. And that Distant Voices is published on our blog called Defence Viewpoints, and you can write to me at robin.ashby.ukdf@gmail.com, and I will acknowledge everybody. It's me, Jia. This is my Street Pies. But I got you, baby. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. दिल्ली गेट, जो कि लाहौर के 13 दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है, ये तीसरे मुग़ल शहंशाह अकबर ने 1600 में तामीर किया था। इन 13 दरवाज़ों ने शहर लाहौर तक रसाई फराहम की, जो एक वक्त में इसी मुग़ल बादशाह के ज़रिए 30 फीट ऊंची किले की दीवार में बंद थी। इसका नाम दिल्ली गेट इसलिए रखा गया क्योंकि इसका रुख दिल्ली की तरफ है, जो मुग़ल सल्तनत का दारुल हुकूमत था। और तारीख में एक वक्त ये दरवाज़ा शहर लाहौर का मरकजी दरवाज़ा रहा। शहर में तिजारत का ये वाहिद मरकज़ था। मुग़ल और दूसरे हुक्मरान शहर में दाखिल होने और अजीम शाही किले तक जाने के लिए इस रास्ते का इस्तेमाल करते थे, और इस दरवाजे को लाहौर के किले से जोड़ने वाला रास्ता रॉयल ट्रेल कहलाता है। दरवाजे और तमाम मुसाफिर एक ही गेट इस्तेमाल करते थे। इस दरवाजे के बाहर मुहाफिज खड़े रहते थे। दरवाजे को तुलुए आफ्ताब के वक्त खोल दिया जाता था और गुरूबे आफ्ताब के वक्त बंद कर दिया जाता था। हेड गार्ड्स की इजाज़त के बगैर किसी को गुरूबे आफ्ताब के बाद शहर में दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी। ये शहर अब गुरूबे आफ्ताब के वक्त बंद होने वाला शहर नहीं रहा। गेट ने तारीख के मुख्तलिफ औकात में कई अदवार देखे, खासकर जब हुकूमतें बदली। मुगल अहद के दौरान ये सबसे अहम दरवाज़ा था और ये रॉयल सिटी के इस्तकबालिया गेट की हैसियत से जाना जाता था। जब बरतानवी हुक्मरानों ने इक़्तिदार संभाला
तो इसे मजिस्ट्रेट की अदालत में तब्दील कर दिया गया। इसके कमरे छोटे छोटे जेल और मुकामी पुलिस स्टेशन थे। तकसीम के बाद एक लड़कियों का स्कूल बनाया गया था जो अब भी मौजूद है। बरे सगीर में बरतानवी हुक्मरानों के दौर में दरवाजे का ढांचा तब्दील कर दिया गया। शहर के दरवाज़ों को अंग्रेज़ों ने 1800 में ख़त्म कर दिया। बाद अज़ां 1900 की दहाई के अवाइल में मुग़ल फ़न तामीर के साथ मखलूत 9 आबादियाती तर्ज के दरवाजे दोबारा बनाए गए थे जो कि अकबर आज़म ने तामीर करवाए थे। जब दोबारा तामीर किया गया तो गेट का मुकाम मुंतकिल कर दिया गया था। मुग़ल फ़न तामीर से ये बात वाज़े होती है कि मुग़ल ख़ास तौर पर तवाज़ुन के मालिक थे, और अगर हम मुग़ल फ़न तामीर के तर्ज पर अमल करते हैं तो वज़ीर खान की अज़ीमुश्शान मस्जिद गेट से दिखाई देती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सैलाब के दौरान शहर के मंजर में मुतादिद तब्दीलियों के साथ बरतानवियों के ज़रिए शहर को नए सिरे से तब्दील किया गया और मुकामात मुंतकिल हो गए। अगर इस शहर के दूसरे दरवाज़ों से मुवाजना किया जाए तो ये गेट का ढांचा इंतहाई दिलचस्प और अनोखा है। ये एक 2 मंजिला दरवाज़ा है जिसमें तकरीबन 12 कमरे हैं, जिनमें इस वक्त स्कूल भी मौजूद है। इस दरवाजे से लाहौर के किले जाने वाली पगडंडी में शाही हमाम, वज़ीर खान मस्जिद, सुनहरी मस्जिद, मरियम ज़मानी मस्जिद, आसिफ जां की हवेली और फिर आखिरकार किले और इस जैसी कई आलमी यादगारें भी मौजूद हैं। बहुत से मशहूर बाजार भी यहाँ मौजूद हैं, जिनमें अकबरी मंडी, कैसरा बाजार, अवान मार्केट, आजम क्लॉथ मार्केट और कश्मीरी बाजार शामिल हैं। दिल्ली गेट से अंदर दाखिल होते ही बाएं जानिब एक तरफ शाही हमाम है जो कि कारीगरी का एक हसीन इम्तिजाज है, और दूसरी तरफ अकबरी गेट का अहाता शुरू होता है। So let's go back to talking about the First World War and Flanders. It was a global war, and members of the British Indian Army served in all of the fields of conflict. And what I want to do is talk about, in particular, these 3 men who won, through their gallantry, won this highest possible honour that the British Empire could offer. And the first one is a chap called Khanadid Khan. He was the first Indian VC, as I mentioned, and he was born in 1888 in the Punjab. He was in the 129th Baluchis. Baluchistan, as you know, is a district part of India, and he was the first soldier of Indian origin to be awarded the Victoria Cross. He was a machine gunner. In October 1914, that's only a couple of months after this war had started. There he was with the Lahore Division in Flanders, and he ending up blocking an attack by the Germans, and he was one of 20,000 that were in the field at that time. That was what we now know as the First Battle of Ypres. There were 4 of these battles, and they were
They were butchers, butcher shops. So he had charged at a village called Holubeka, where it was waterlogged because it was raining so much. They had insufficient hand grenades, there was barbed wire, and there were gaps in the line because of shortage of soldiers. And this is what the Lahore division was doing. It was filling gaps that had been left as a result of the slaughter of the British regular army during the first couple of months of the war. In fact, the Baluchis were outnumbered 5-1 at this point, and Kaduda Khan, who was a sepoy there, he was helping to fill the gaps and helping to stop the German advance. So there was an attack. They were overrun by the Germans. He pretended to be dead. Everybody else was shot or bayoneted. He was there, and he after it got dark, he crawled back to their own lines. And this is what the citation for his Victoria Cross read. On the 31st of October 1914, at Holubek in Belgium, the British officer in charge of the detachment, having been wounded and another gun put out of action by a shell, Sepoy Kadudad, though himself wounded, remained working his gun until all other 5 other men in the gun detachment had been killed. So he was the last man standing. His bravery and that of his fellow Baluchis gave the Allies enough time for the British and Indian reinforcements to arrive and stop the German army from reaching vital ports on the Channel, which would have cut Belgium in half and would have been a severe blow to the war effort. He was treated for his wounds at a hospital in Brighton. He was taken back there, and the King came along and gave him his medal. He's commemorated also by a statue outside the Pakistan War Museum, Army Museum in Rawalpindi. And some of his descendants now live in Leeds. This goes back to our conversation previously about immigrants to this country and the debt that we owe. We owe debt to this man and to his family, and hopefully we're now repaying that in Leeds. The second hero was Jamada, that's Lieutenant Mir Dast. He was born in 1874 in the northwest frontier area of Pakistan. And at the age of 20, he joined the British Indian Army, and he was there as a regular in action in the northwest, on the northwest frontier and Waziristan. And he was brought over to Flanders in March 1915 as part of another large contingent of Indian soldiers filling the gaps. And he was, again, in the Lahore Division, and he was awarded his Victoria Cross for the second Battle of Ypres. They'd been ordered to counterattack in April, and despite the losses, Mir Dast and others managed to get close to the German trenches. And the Germans then released chlorine gas, and many soldiers either retreated or killed or were gassed, as indeed one of my grandfathers was. He was a small number of British and Indian troops who stayed and held their position until nightfall, when they were ordered to withdraw. His citation said, "For most conspicuous bravery and great ability at Ypres on 26th of April 1915, when he led his platoon with great gallantry during the attack and afterwards, and collected various parties of the regiment." No British officers were left by this time. He was the sole officer, and kept them under his command until the retirement was ordered. Jamada Mir Dast subsequently, on this day, displayed remarkable courage in helping to carry 8 British and Indian officers into safety while exposed to very heavy fire. He also was wounded and went to Brighton, and then again the King visited him and presented him with his medal. And he died in 1945 in Peshawar.
My name is Terence South. I formerly served in the British Army. We had to go down as the muscle squad and go on, you come with us. She said, "No, let us go, we're fighting." No. I could communicate, I had all the skills for the wirelesses, the radios. I could do that, that was no problem. I could do that blindfold. Second World War, understood where you were and what you were doing, where your head was. रहे सदा सिंधुअ जी छोली मारवड़न जी मिठड़ी बोली रहे सदा सिंधुअ जी छोली मारवड़न जी मिठड़ी बोली गली गली ऐं घर घर गूंजन सिंध अमर जा नारा 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 जिए सिंध वारा जियन सिंध Hello, Dr. Anand here to tell you about unleashing your inner power. When you talk on Facebook with someone with your family far away, genuine communication takes place. Just look after yourself and grow in power and grow in finance and grow in status. If you stay in your comfort zone, you'll never find out who you are. Our third Pakistani hero from 1916 was Naik, that's a corporal, Shahmad Khan. He was a corporal at the time of this, but he later became a captain, and he served the 89th Punjabis. In fact, he was a Punjabi Muslim born in 1879 in Rawalpindi, and the 89th Punjabis were part of the 1st Battalion of the Baluchi Regiment. And the Victoria Cross was the most conspicuous bravery, this time
in Mesopotamia, which is present-day Iraq. It was a world war. It wasn't just in Flanders. He was serving in Iraq, and he was in charge of a machine gun which was covering the gaps in the line very close to the enemy's trench. His citation says, he was in charge of a machine after all his men, except for 2 belt fillers, had become casualties. For 3 hours, he held the gap under very heavy fire until it was made secure. When his gun was knocked out by hostile fire, he and his 2 belt fillers held their ground with rifles until ordered to withdraw. With 3 men sent to assist him, he then brought back his gun, ammunition, and 1 severely wounded man unable to walk. Finally, he himself returned and removed all remaining arms and equipment except for 2 shovels. But for his great gallantry and determination, a line must have been penetrated by the enemy. That is an incredible story, but he went back for everything except for 2 shovels. Unbelievable. He later achieved the rank of Subedar, which is the equivalent of a captain, and he died in 1947 in his ancestral village of Takhiti in Pakistan. These were the kind of heroes that the British Indian Army produced, and these are men who even today are remembered in the present day Pakistan Army. There were, as I said, there were 6 other Victoria Crosses awarded to the Indian Army and 2 to the Nepalese. The Nepalese Gurkhas and the Sikhs from the British Indian Army are part of the legends of the British Army, and they are hugely respected. And it is the actions of these kinds of men that led to that kind of respect. So, we had 1.3 million people from the subcontinent who took part in the war. Some of them were soldiers, some of them were labourers. And of those, some 74,000 were killed in various parts of the world. As I said, some of them with unknown graves. Theirs was sacrifice. When we come along to the Second World War, where even more people from South Asia took part, and it was even more of a global war. At the start of that war, there were 200,000 people in the British Indian Army. By the end of the war, there were 2.5 million. This was the biggest volunteer army the world has ever seen. Nobody forced these. They were not conscripted like so many other people in so many other parts of the world. They were not conscripted. They volunteered to serve and to fight. And again, we owe them a huge debt of gratitude. Although 87 were killed during that time, and there were another 18 Victoria Crosses and George Crosses awarded. The George Cross is the civilian equivalent of Victoria Cross, so somebody who's not actually in combat who won a George Cross, which is held in the same high regard as a Victoria Cross. So they served around the world. The 8th Army at Al Alamein. In fact, some members of the Indian Army were at Dunkirk and were evacuated in that first great coming together of the spirit of the British, which carried us through the war. They were at Dunkirk. They were in the 8th Army, then the 9th Army, the 10th Army, the 12th Army, the 14th Army in Burma. They served around the world, in Europe, Al Alamein in Africa. They served in right the way across Asia, places like Sudan, Iran, Iraq, Syria, Hong Kong, Malaysia, Singapore, Borneo, Lebanon. Those were the places where the British Indian Army was serving, and these men helped to turn the tide of totalitarianism. Again, we owe them a huge debt of gratitude. So, in summing up, I went, as we often do, to poets who can crystallise our remembrance after death. And that includes those more than 160,000 from South Asia who died in 2 world wars. So Muhammad Iqbal from Pakistan, whose poetry in the Urdu language is considered amongst the greatest of the 20th century, wrote one of his most famous poems. Man's spirit does not know annihilation.
It may disappear from sight, but is not obliterated. The apparel of existence is turned to ashes by the flames of grief. This fire is put out by the water of that pleasant feeling. Ah, the suppression of lamentation is not the silence of indifference. It is awareness that brings consolation, not forgetfulness. So many paid the ultimate price of war. At the going down of the sun and in the morning, we will remember them. This has been Yesterday, Today and Tomorrow on South Asia Global Television. I'm Robin Ashby, and I look forward to speaking to you in the next programme. Hi, I'm Uma Malhotra and I welcome you to my show, Glow and Beyond with Uma Malhotra. Why should I get that facial? Why should I go for a Repicharge facial, then an O3 facial? We do the research for you. So we make sure we give you the best. For example, you got fat lash. A client was allergic to fat lash, so I did a London Lash patch test on her. She was absolutely fine with London Lash. So I used the London Lash. निसार मैं तेरी गलियों के ए वतन के जहां चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले नज़र चुरा के चले जिस्म जान बचा के चले बने हैं अहले हवस मुद्दई भी मुनसिफ भी किसे वकील करें किससे मुंसफी चाहें मगर गुजारने वालों के दिन गुजरते हैं तेरे फराक में यूं सुबह शाम करते हैं गर आज तुझसे जुदा हैं तो कल बहम होंगे ये रात भर की जुदाई तो कोई बात नहीं गर आज औज पे है ताले रकीब तो क्या ये 4 दिन की खुदाई तो कोई बात नहीं। Hello and welcome to Business ABC. But the number one reason why businesses fail, whether they are starting or scaling or growing, is because of money. And when you go to them with an idea, they will always go, "Oh, great idea.
बहुत बढ़िया। The best businesses either fix something or they make them better. Where it's legal or where it's contract, take your time. ट्रस्ट है लोगों का। मुझे लगता है आप लोगों तक रसाई नहीं आपकी हो पाती। आपका मंशूर क्या है? किसी सियासी जमात में इतना अच्छा इंतखाबी कमीशन नहीं है। अच्छे कंटेंट देखना चाहें तो फिर डेफिनेटली आहिस्ता सा चेंज तो आएगा ना, ग्रेजुअल। तमाम 12 ज़ोडिक साइन के ऊपर मुझे अबूर है। दुबई के पास वसाइल थे, आज पाकिस्तान के पास तो बहुत कुछ है। जो सेफ सिटी के हवाले से है वो अब तो काफी ज्यादा जो है दोबारा वर्किंग में आ गए हैं। हाँ, एक टाइम आया था जब काफी कम हो गए थे। 50 तो स्टार नहीं हो सकते, स्टार तो 3-4 ही होंगे किसी भी फील्ड के। बच्चे को देखा कि वो एक ऐप के अंदर घुसा हुआ है जिसको टिकटॉक कहते हैं। मस्जिद वजीर खान शहर लाहौर में दहली दरवाज़ा, चौक रंग महल और मोची दरवाजे से तकरीबन 1 फरलांग की दूरी पर वाक़या है। ये मस्जिद नक्शो निगार में कारीगरी का मुंह बोलता सबूत है। इल्मुद्दीन अंसारी, जो आम तौर पर नवाब वजीर खान के नाम से जाने जाते हैं, सल्तनत मुगलिया के अहदे शाहजहानी में लाहौर शहर के गवर्नर थे और ये मस्जिद इन्हीं के नाम से मंसूब है। मस्जिद की बैरूनी जानिब एक वसी सराय है जिसे चौक वजीर खान कहा जाता है। चौक के 3 मेहराबी दरवाजे हैं। अव्वल मशरकी जानिब चटा दरवाजा, दोम शुमाली जानिब राजा दीनानाथ की हवेली से मुंसलिक दरवाजा और सोम शुमाली जीने का नजदीकी दरवाजा है। मस्जिद के मीनार 160 फीट ऊंचे हैं। इस मस्जिद की तामीर दिसंबर 1641 में 7 साल की तवील मुद्दत के बाद पाया तकमील को पहुंची। मस्जिद वजीर खान मुगलिया सल्तनत के अहद में तामीर की जाने वाली अब तक के नफीस नक्शो निगार का खूबसूरत इम्तजाज है, जो बादशाही मस्जिद की तामीर से 32 साल कबल तकमील को पहुंची। वेलकम टू सेटल अराउंड द वर्ल्ड। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म बड़ा अहम रोल प्ले करता है किसी भी वीज़ा एप्लीकेशन में। विजिटर वीज़ा किन लोगों को मिल सकता है और विजिटर वीज़ा पर हम क्या कुछ कर सकते हैं, ये यहाँ पर देखना बड़ा ज़रूरी है कि वो किन लोगों को साथ लेके जाना चाहता है।
चलिए हम और आप देखते हैं कि हुकूमतों में बैठे सियासतदानों की बातें इतनी मुश्किल क्यों होती हैं। क्या हुकूमती वादे आम पाकिस्तानी के फहम से बालातर नहीं होते? देखिए पहली बार एक अवामी नुमाइंदे को अरबाबे इक़्तिदार से आपकी बात करते हुए। आज के नाम और आज के गम के नाम। आज का गम चुके है जिंदगी के भरे गुलिस्तान से खफा। जर्द पत्तों का बन, जर्द पत्तों का बन जो मेरा देश है। दर्द की अंजुमन जो मेरा देश है। प्रोग्राम दी करंट अफेयर्स के साथ मियां सैफ रहमान हाजिर खिदमत। एक सरेदस्त जो मसला दरपेश आया वो तो गंदम का स्कैंडल है। 22 अक्टूबर 2023 को कमेटी जो है कैबिनेट मीटिंग में अप्रूवल दी जाती है कि जी हम गंदम उगाएं। आप जो कोई भी हैं, आप एक पॉलिटिकल पार्टी से मुल्क के अंदर ना आप टैक्स लगा सकते हैं, ना आपके पास टैक्स कलेक्शन है। ये है कि यहाँ तो अपनी आप जातियात की सियासत कर दें। ठीक है, ईरान में वेस्टर्न कंट्रीज के, अमेरिकन और ब्रिटिश के इंटरफेरेंस के फुटप्रिंट्स मौजूद है। हमारी जो मिनिस्ट्री है प्लानिंग की, उसमें कैपेसिटी भी नहीं है इतने बड़े प्रोजेक्ट को हैंडल करने की। शाह आलम से बिगड़कर शाह आलमी के नाम से मशहूर हो जाने वाला ये दरवाज़ा लाहौर की मसरूफ़ तरीन और मालियाती लिहाज से बहुत मारूफ मार्केट के करीब वाक़या था। ताहम ज़माने के दस्तबर्द के नतीजे में ये मुनहदिल हो चुका है। शहर कदीम के जनूब की सिमत मोची दरवाज़े और लोहारी दरवाज़े के दरमियान शाह आलमी दरवाज़ा वाक़या है। इस दरवाज़े का नाम औरंगज़ेब आलमगीर के बेटे शाह आलम पर रखा गया था, जो कि पंजाब में अपनी सखावत की बिना पर बहुत मारूफ था, जबकि इस दरवाज़े का पुराना नाम भेड़ वाला दरवाज़ा था। बरे-सगीर की तकसीम के दौरान इसे जला कर खाक कर दिया गया और अब सिर्फ इसका नाम ही बाकी रह गया है। ये दरवाज़ा मुग़ल दौरे हुकूमत में तामीर किया गया और ये अंदरून शहर के रास्तों पर तामीर शुदा 13 दरवाज़ों में से एक है।
ये दरवाज़ा भी अंग्रेज़ी अहद में दीगर दरवाज़ों की तरह पुराने अंदाज़े तामीर में 1892 से कबल छोटी ईंटों से तामीर हुआ और इसमें चूने का मसाला इस्तेमाल किया गया। क़याम पाकिस्तान के वक्त अंदरून शहर के इस हिस्से में ज़्यादा लूट मार हुई, इमारतों को आग लगा दी गई, बड़ी बड़ी इमारत ईंटों का ढेर बन गईं। क़याम पाकिस्तान के बाद शाह आलमी दरवाजे को गिरा दिया गया। अंदरून शाह आलमी दरवाज़ा मलबा साफ करके कदरे खुली और बड़ी इमारत बना दी गई, जो आज गैर मुल्की अशिया की सबसे बड़ी मंडी है। क़याम पाकिस्तान से पहले शाह आलमी दरवाजे के अंदर हिंदू अक्सरियत की आबादी थी। तमाम कारोबार इनके हाथों में था और बाजार इतने तंग थे कि वहाँ से पैदल गुजर मुश्किल से होता था। अलबत्ता उस दौर में भी ये इलाका तिजारती मरकज़ की हैसियत रखता था। जिस इलाके में ये दरवाज़ा वाक़या है वो तारीखी लिहाज से इंतहाई अहम है और यहाँ कई यादगारें, हवेलियाँ और कदीम बाजार वाक़या हैं, जिनमें रंग महल, सोहा बाजार, कनारी बाजार वगैरह काबिले जिक्र हैं। एशिया की नंबर 1 क्लॉथ मार्केट आज़म क्लॉथ मार्केट भी इसी इलाके में वाक़या है। इसी तरह सुनहरी मस्जिद और ऊंची मस्जिद जैसी तारीखी मसाजिद भी इसी दरवाजे के पास वाक़या हैं। शाह आलम मार्केट इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉस्मेटिक्स, हैंडीक्राफ्ट्स, नायाब अशिया, स्टेशनरी, क्रॉकरी, खेलों के सामान, ज्वेलरी और ज़रूरियाते ज़िंदगी के दीगर सामान के लिए मशहूर है। इस मार्केट में अंदाज़न 1200 के करीब दुकानें हैं। शाह आलम मार्केट से ज़रूरियाते ज़िंदगी की अशिया तमाम मुल्क में और हमसाया ममालिक को दरामद की जाती हैं। ऐनक मार्केट शाह आलम दरवाजे में वाक़या है। ये मार्केट 1970 में कायम हुई। इस मार्केट में 120 के करीब दुकानें हैं। इसके अलावा इर्द गिर्द के इलाका में दर्जनों ऐनक फैक्ट्रियाँ और गोदाम भी मौजूद हैं। आज शाह आलमी दरवाजे का इलाका शहर कदीम के दीगर दरवाज़ों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये गुमान भी नहीं होता कि कभी यहाँ पर शहर लाहौर का तारीखी दरवाज़ा हुआ करता था। अब इस दरवाजे का फ़कत नाम ही रह गया है। ये भी हकीकत है कि जिन लोगों ने ये दरवाज़ा देखा था वो यहाँ से गुजरते हुए इसके आसार ढूंढने के लिए कुछ अरसा ज़रूर क़याम करते थे, बल्कि इनके पाँव खुद ब खुद यहाँ रुक जाते थे। शाह आलमी दरवाजे के अंदर दाखिल हो तो एक कुशादा सड़क दिखाई देती है। तिजारती मरकज होने की बिना पर यह सड़क तजावुजात और ट्रैफिक से भरी रहती है। इसके बाएं जानिब पापड़ मंडी का बाजार शुरू हो जाता है और मत्ती चौक तक पहुंचता है, जहां छापा स्ट्रीट और चौक मत्ती बाजार के रास्ते भी आपस में मिलते हैं।
शाह आलमी दरवाजे की मरकजी सड़क पर आगे बढ़ें तो मच्छी हट्टा बाजार से शुरू होते हुए रंग महल चौक पहुंच जाते हैं। बैरून शाह आलमी दरवाजे से रंग महल तक का सारा इलाका बैनुल-अक़वामी तजारती मरकज की हैसियत रखता है। ये इलाका जेवरात से लेकर गारमेंट्स, क्रॉकरी, ग्रोसरी, मट्टी के बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, बच्चों के खिलौने, दफ्तरी और घरेलू इस्तेमाल की बड़ी मंडी है। रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली तमाम अशिया यहाँ दस्तयाब हैं। तिजारती एतबार से रंग महल का इलाका निहायत अहमियत का हामिल है और ये इलाका सुबह से रात गए ट्रैफिक और लोगों के हजूम से भरा रहता है। यहाँ ख़वातीन की दिलचस्पी के बाज़ार यानी सोहा बाज़ार, कनारी बाज़ार, गमट्टी बाज़ार और डिबी बाज़ार भी मौजूद हैं। अंदरून शाह आलमी दरवाजे में सोने के जेवरात के हवाले से मशहूर सोहा बाज़ार भी मौजूद है। सोहा बाजार की तंगो तारीक गलियों में सैकड़ों सनियारे कबल अज तकसीम से यहाँ कारोबार कर रहे हैं। दुकानों पर सजे सोने के जेवरात और बड़ी बड़ी रोशनियों की वजह से ये बाजार दुल्हन की तरह सजा दिखाई देता है। इसके साथ ही कनारी बाजार मौजूद है। जो खास तौर पर ख़वातीन की तवज्जो का मरकज़ बना रहता है। ये बाज़ार गोटा कनारी और ख़वातीन के इस्तेमाल की दीगर अशिया के हवाले से शोहरत रखता है। ख़वातीन शादियों की खरीदारी इसी बाज़ार से करना पसंद करती हैं। इसी इलाके में खुस्सा, पिशावरी चप्पल और कोल्हापुरी चप्पल की भी बेशुमार दुकानें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साउथ एशिया ग्लोबल के साथ मैं हूं हबीबा राशिद। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइन। ईरानी वजीर खारजा सैयद अब्बास अरागची 2 रोजा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ईरानी वजीर खारजा अपने दौरे के दौरान वजीर आजम शहबाज शरीफ और नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि वक्त आ गया है कि विफाकी काबीना में नए लोगों को शामिल किया जाए। नून लीग की पार्लिमानी कमेटी के इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि जल्द विफाकी काबीना में रद्द-ओ-बदल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा कि कौमी असम्बली में मंजूर तरमीमी बिल के जरिए आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में कमी हुई है, इजाफा नहीं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि आर्मी एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी के बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर नवंबर 2027 तक आर्मी चीफ रहेंगे। कायम मुकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने सेनेट और कौमी असम्बली से मंजूर 6 बिल्स पर दस्तखत कर दिए, जिसके साथ ही तमाम बिल्स कानून बन गए। ज़राए के मुताबिक कायम मुकाम सदर मुमलिकत ने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल, नेवी एक्ट तरमीमी बिल, एयरफोर्स एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन या मुद्दत मुलाजमत में इजाफा इंतजामी मामला है, ये सब माजी में होता रहा है। अमरीकी सदारती इंतखाबात के दौरान अमन और अमान बरकरार रखने और इलेक्शन अमले पर तशद्दुद के खदशात से निपटने के लिए गैर मामूली सिक्योरिटी इक़दाम किए गए। अमरीकी रियासत ओरेगॉन, वाशिंगटन और नेवाडा में नेशनल गार्ड्स को फाल कर दिया गया,
जबकि खतरात पर नजर रखने के लिए FBI की जानिब से भी कमांड पोस्ट कायम की गई है। भारत की वजारत खेल ने 23 नवंबर से पाकिस्तान में खेले जाने वाले T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप के छोटे एडिशन में शिरकत के लिए इंडियन ब्लाइंड क्रिकेट टीम को NOC जारी कर दिया। और महकमा माहौलियात ने लाहौर में स्मोक के खतरात के पेश नजर रेड अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर में स्मोक के खतरात पर मंडलाने लगे हैं और शहर को स्मोक के नए स्पेल का खतरा लाहिक है, जिसके पेश नजर महकमा मौसमियात की जानिब से रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते हैं कि ईरानी वजीर खारजा सैयद अब्बास अरागची 2 रोजा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ईरानी वजीर खारजा अपने दौरे के दौरान वजीर आजम शहबाज शरीफ और नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसाक डार से मुलाकातें करेंगे। तर्जुमान के मुताबिक ईरानी वजीर खारजा अरागची मशरिक वस्ता की सूरत हाल और पाकिस्तान और ईरान के दरमियान 2 तरफा ताल्लुकात पर मुशावरत करेंगे। बयान के मुताबिक ये दौरा पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तिजारत, तवानाई और सलामती समेत वसी शोबों में ताउन और बातचीत को आगे बढ़ाने का एक अहम मौका फराहम करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि वक्त आ गया है कि वफाकी काबीना में नए लोगों को शामिल किया जाए। नून लीग की पार्लिमानी कमेटी के इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि जल्द वफाकी काबीना में रद्दोबदल होगा। इन्होंने कहा कि शरह सूद 17.5% से 15% पर आना खुशाइंद है। महंगाई बढ़ने से शरह 30% से कम होकर 7% तक आ गई है। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में कहा कि मुल्क को दिवालिया करने वाले के दहानों पर पहुंचाने वालों के नापाक मंसूबे नाकाम हो गए हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि कश्मीर और फलस्तीन की हालत जार के बाद कुछ करने की जरूरत है। ISPR के मुताबिक IAPTC की 28वीं सालाना कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में पहली बार सेंटर फॉर इंटरनेशनल पीस एंड स्टेबिलिटी नेस्ट इस्लामाबाद में 4 से 8 नवंबर तक मुनक्किद की जा रही है। इनका कहना था कि ये तकरीब का बाकायदा आगाज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से CIPS की नई इमारत के इफ्तिताह के बाद होगा। इफ्तिताही तकरीब में अंडर सेक्रेटरी जनरल डिपार्टमेंट ऑफ पीस और फॉर्मेशंस, अक़वाम मुत्तहिदा के पुलिस मशीर, कायम मुकाम डिप्टी मिलिट्री एडवाइजर, सेक्रेटरी खारजा पाकिस्तान और डायरेक्टर नेस्ट भी कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब में मौजूद थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि आर्मी एक्ट तरमीमी बिल के मंजूरी के बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर नवंबर 2027 तक आर्मी चीफ रहेंगे। सेनेटर कौमी असम्बली के खिताब में सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने और सर्विस चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत 3 से बढ़ाकर 5 साल करने की तरमीमी बिल 2024 कसरती राय से मंजूर कर लिया गया है। पास होने वाले नए तरमीमी एक्ट के मुताबिक सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत 3 से बढ़ाकर 5 साल तक कर दी गई है और सर्विस चीफ की तोसी की मुद्दत भी 3 से बढ़ाकर 5 साल तक कर दी गई है, जबकि सर्विस चीफ के रिटायरमेंट के लिए 64 साल की उम्र हद खत्म कर दी गई है और तोसी के दौरान रैंक की मुद्दत या उम्र की पाबंदी का इतलाक भी नहीं होगा। बिल के तहत पाक फौज में जनरल के रिटायर के कवायद का इतलाक भी आर्मी चीफ पर नहीं होगा। तैनाती, दोबारा तैनाती या एक्सटेंशन की सूरत आर्मी चीफ बतौर जनरल काम करता रहेगा। अब आपको बताते हैं कि कायम मुकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने सेनेटर कौमी असम्बली से मंजूर 6 बिल्स पर दस्तखत कर दिए, जिसके तहत ही तमाम बिल्स कानून बन गए हैं। जरा के मुताबिक कायम मुकाम सदर मुमलिकत आर्मी ने एक्ट तरमीमी बिल, नेवी एक्ट तरमीमी बिल, एयरफोर्स एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। कायम मुकाम सदर मुमलिकत ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर दस्तखत कर दिए। कायम मुकाम सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफे के बिल्स पर दस्तखत किए। कायम मुकाम सदर के दस्तखत के बाद तमाम 6 बिल्स कानून बन गए हैं। ख्याल रहे कि कौमी असम्बली ने आर्मी एक्ट और जजेस एक्ट में तरमीम के बिल्स मंजूर कर लिए। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स एक्ट में तरमीम के मुताबिक सर्विसेज चीफ के ओहदे की मुद्दत अब 3 से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा
दौरान मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन या मुद्दत मुलाजमत में इजाफा इंतजामी मामला है, ये सब माजी में भी होता रहा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पहली बात यह है कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन या मुद्दत मुलाजमत में तोसी एक इंतजामी मामला है और यह हर दौर में हुकूमत में दी गई है। इन्होंने कहा कि ज़ाती तौर पर इसके हक में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी क्योंकि ये एक इंतजामी मामला है और हर हुकूमत अपने इख्तियार के तहत फैसला कर सकती है। ECC ने वजारत इत्तलात, CDA और वजारत दाखिला की जानिब से शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस के दौरान इस्लामाबाद को खूबसूरत बनाने की मद में इजाफी फंड जारी करने से मना कर दिया। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के दौरान दारुल हुकूमत को खूबसूरत और पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान कैमरों की मरम्मत और अमन आमा से निपटने के लिए वजारत इत्तलात और नशरियात, वजारत दाखिला और CDA की तरफ से इजाफी फंड की दरख्वास्तें मुस्तरद करते हुए इन वजारतों ने कहा कि वो अपने बजट से अदायगियाँ करें, अगर फिर जरूरत हो तो तकनीकी ग्रांट जारी की जा सकती हैं। वजारत खजाना की तरफ से जारी करदा अलामिया के मुताबिक वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की ज़ेर सदारत ECC इजलास में बताया गया कि वजारत इत्तलात ने SCO के अखराजात के लिए 9 करोड़ 58 लाख और डिजिटल इनिशिएटिव के लिए 53 करोड़ 61 लाख रुपए मांगे गए थे। मजीद खबरें शामिल करेंगे मगर एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते और आपको आगाह करते हैं कि लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में स्मोक SOPs के खिलाफ वर्जी पर 1074 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। पंजाब पुलिस के मुताबिक स्मोक SOPs के खिलाफ वर्जी पर 1351 मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। लाहौर में स्मोक SOPs के खिलाफ वर्जी पर 73 अफराद गिरफ्तार, 146 मुकदमा दर्ज हुए हैं। 24 घंटों के दौरान स्मोक SOPs के खिलाफ वर्जी पर 8 अफराद गिरफ्तार हुए। 24 घंटों के दौरान स्मोक SOPs के खिलाफ वर्जी पर 20 मुकदमा दर्ज हुए। स्मोक SOPs के खिलाफ वर्जी पर 5 अफराद को जुर्माने किए गए हैं। लेस्को ने 1,19,187 नहिंदगान से 3 अरब रुपए से जायद की रिकवरी कर ली है। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक नहिंदगान के खिलाफ जारी मुहिम को 400 रोज मुकम्मल हो गए। इस दौरान 1,19,187 नहिंदगान से 3 अरब रुपए से जायद की रिकवरी कर ली गई है। नॉर्थर्न सर्कल में 16,497 नहिंदगान से 531 मिलियन से जायद की रिकवरी की गई, जबकि ईस्टर्न सर्कल में 15,313 नहिंदगान से 727 मिलियन रुपए से जायद की रिकवरी हुई। सेंट्रल सर्कल में 14,012 नहिंदगान से 548 मिलियन रुपए से जायद और साउथ सर्कल में 7,740 नहिंदगान से 227 मिलियन रुपए से जायद की रिकवरी की गई है। KPK में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 अलग अलग कार्रवाइयों में 6 खवारिज हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने KPK में 2 अलग अलग कार्रवाइयों में 6 खवारिज को हलाक कर दिया। कार्रवाइयां शुमाली वजीरिस्तान के इलाके दोसाली और जनूबी वजीरिस्तान के इलाके खुरमग में की गई है। ISPR का कहना है कि खवारिज पाकिस्तान में दरअंदाजी करने की कोशिश कर रहे थे। पाकिस्तान अबूरी अफगान हुकूमत से कहता रहा कि वो मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट यकीनी बनाए। तवक्को है कि अबूरी अफगान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस सरहदों की हिफाजत और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़म है। कराची के इलाके डिफेंस में कार से लड़की की लाश और एक शख्स बेहोशी की हालत में पाया गया। पुलिस के मुताबिक डिफेंस फेज 2 में वाक़ई गैराज में कार खड़ी थी जिसमें एक लड़की की लाश मिली, जबकि एक काशिफ नामी शख्स भी बेहोशी की हालत में पाया गया। पुलिस का बताना है कि लड़की की शनाख्त जवेरिया के नाम से हुई, जबकि काशिफ इसका बहनोई है। पुलिस सर्जन के मुताबिक पोस्टमार्टम में मौत की वजह सामने नहीं आ सकी, इसलिए मौत की वजह जानने के लिए लाश के नमूने हासिल कर लिए गए हैं। अब आपको पता है कि अमरीकी सदारती इंतखाबात के दौरान अमन और अमान बरकरार रखने और इलेक्शन अमले पर तशद्दुद के खदशात से निपटने के लिए गैर मामूली सिक्योरिटी इक़दाम किए गए हैं। अमरीकी रियासत ओरेगॉन, वाशिंगटन और नेवाडा में नेशनल गार्ड्स को फॉल कर दिया गया, जबकि खतरात पर नजर
नजर रखने के लिए FBI की जानिब से भी कमांड पोस्ट कायम की गई है। अमेरिकी रियासत एरिजोना, मिशिगन और नेवाडा समेत 19 रियासतों में 2020 से इलेक्शन सिक्योरिटी कानून नाफिज हैं। 7 स्विंग रियासतों में वोटर्स के एतमाद, सिक्योरिटी और शफाफ इलेक्शन के लिए हुकाम भी पुरअसम दिखाई देती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका भर में 1 लाख के करीब पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और पोलिंग अमले के लिए खसूसी मुसल्लह टीमें तैनात कर दी गई हैं। साथ ही साथ इलेक्शन हमले की सिक्योरिटी के लिए 1000 पिंग बैंड्स मंगवाए गए हैं। साबिक अमेरिकी सदर और रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि सदारती इलेक्शन की दौड़ जरूर जीतेंगे। अमेरिका के सदारती इंतखाबात का इनेकाद 5 नवंबर को होगा, जिनमें साबिक सदर और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का मुकाबला नायब सदर और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस से है। शुमाली कैरोलिना में खिताब करते हुए रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तमाम स्विंग स्टेशंस पर हम ये कामयाबी हासिल करेंगे और सदारती इलेक्शन की दौड़ जरूर जीतेंगे। साबिक अमेरिकी सदर का कहना है कि हमने हारना नहीं, अवाम व्हाइट हाउस पहुंचने के लिए हमें वोट दें। दूसरी जानिब युगांडा में एक चर्च पर आसमानी बिजली गिरने से 13 बच्चों समेत 14 अफराद हलाक और 34 जख्मी हो गए। बरतानवी नशियाती इदारे की एक रिपोर्ट के मुताबिक अफसोसनाक वाकया युगांडा में शुमाल मगरिब में पाला बैग महाजर कैंप में पेश आया, जो इस वक्त 80,000 से ज्यादा पनागजीनों का मस्कन है। रिपोर्ट में बताया गया कि पाला बैग महाजर कैंप के मुतासरीन 2 रोज कबल चर्च में मजहबी रसूमात की अदायगियों में मसरूफ थे कि तेज बारिश और बिजली कड़कना शुरू हो गई। बरतानी मीडिया के मुताबिक इस दौरान आसमानी बिजली गिरने के नतीजे में 14 अफराद हलाक जबकि 34 जख्मी हो गए। एक्स के मालिक एलन मस्क ने पेंसिल्वेनिया की अदालत में वोटर्स को $10 लाख देने की मुहिम जारी रखने के मुकदमा जीत लिया। एलन मस्क ने गुज़िश्ता माह रियासत पेंसिल्वेनिया में रिपब्लिकन के सदारती उम्मीदवार ट्रंप इंतखाबी मुहिम के लिए वोटर्स को $10 लाख देने की मुहिम का आगाज किया था। दूसरी जानिब 11 साबिक रिपब्लिकन अहदेदारों ने सदारती इंतखाबात से कबल एलन मस्क की जानिब से वोटर्स को नकद रकम की कानूनी हैसियत पर सवाल उठाए थे। कानूनी माहिरीन ने खदशा जाहिर किया कि ऐसी कोई भी पेशकश जिसमें वोटर्स को कहीं दस्तखत करने के अमल के लिए रकम की पेशकश की जाए अमेरिकी कानून की खिलाफ वर्जी में शुमार की जा सकती है। अब बात करते हैं खेल के मैदान की। भारत की वजारत खेल ने 23 नवंबर से पाकिस्तान में खेले जाने वाले T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप के 4थे एडिशन में शिरकत के लिए इंडियन ब्लाइंड क्रिकेट टीम को NOC जारी कर दिया। भारतीय वजारत खेल की जानिब से क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड इंडिया के सेक्रेटरी जनरल शेष लाइंडर यादव के भेजे गए खत में दौरा पाकिस्तान की इजाजत देते हुए क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड इंडिया को दौरा पाकिस्तान के सिलसिले में मजीद क्लियरेंस हासिल करने के लिए भारतीय वजारत खारजा और भारतीय दाखिला ने राब्ता करने की कोशिश का कहा गया है। अब बात करते हैं मौसम के अहवाल की। महकमा माहौलियात ने लाहौर में स्मोक के खतरात के पेश नजर रेड अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर में स्मोक के खतरात पर मंडलाने लगे हैं और शहर को स्मोक के नए स्पेल का खतरा लाहिक है, जिसके पेश नजर महकमा मौसमियात की जानिब से रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। भारत से 8 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने लाहौर का रुख कर रखा है और एयर क्वालिटी इंडेक्स शदीद मुतासिर होने जा रहा है, जबकि फजाई आलूदगी का ये जहर पहले ही शहरियों को मुतासिर कर रहा है। दूसरी जानिब फिजा में जहर खोलती स्मोक मुल्तान तक जा पहुंची और एयर क्वालिटी इंडेक्स ने खतरे की घंटी बजा दी है। रहमियार खान और बहावलपुर में भी स्मोक की लपेट में आ चुके हैं। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल कितना ही, मजीद तफसील ये साउथ एशिया ग्लोबल टीवी। I'm Rahila Ahmed. I'm a psychotherapist, a personality coach. We have decided to bring all of those tools and techniques that are scientifically proven. मामा मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है. What are we going to talk about today? Now we have two different parts of our mind. One is the conscious mind and one is the subconscious mind. Moment to moment miracles are going to come in your life and moment to moment healing and happiness is going to come to your life. And as I mentioned earlier, today we are going to talk about your health.
Hello, I'm Alan Curry. I'm bringing you a show badge of honour on my successful life in the police service to the rank of Chief Superintendent. Talking about me, and hopefully I'm saying some nice things about myself. There's a couple of bad ones, I'm sure, as well. And I don't like criminal activity. As opposed to the other way around, when you arrest somebody and have to find the evidence. And the feeling of doing something for somebody else, I don't know how you can get that from anybody else. Hello, it's me again, Terence South, back to talk to you about line of duty and my time within British Special Forces. As I spoke before, I spent a certain amount of time with the Parachute Regiment as an engineer, off to college, then again to join the Royal Marines as an engineer attached to them. So the Royal Marines are very much soldiers of the sea, specialising in landing craft, etc. Whereas the paratroopers are very different. So we've got two special forces, they're very, very different in the way they go about their work. The Parachute Regiment is very lean. They are very much behind enemy lines, they live with what they've got round their waist. They live with what they can carry. You can't carry it, you can't eat it. There's two things you've got to be able to do when you work as a paratrooper. You've got to be able to eat it or fire it. That's it, that's all you carry. No luxuries whatsoever. You remain as light as possible and with as much firepower as possible. And that's why the British Special Forces, you see them, but you wouldn't notice them in the street. They're not all big, muscle-bound guys. Some of them are quite lean, quite small. But that means that body is efficient. They don't need these big protein drinks. And then, so you've got these paratroopers, lean, mean guys, and then you've got the Royal Marines. They're very much guys who live at sea and assault on land. But the Royal Navy have a huge supply chain, they have a huge backup to actually get them where they're going to go. It's very different from the paratroopers who are put in and then they parachute in your goods, your food, your ammunition, your resources is very lean. The Royal Marines there, we have the whole of the Royal Navy to support you. So that's the two. I've been in both environments and they are very different to operate. They're also very different people. So, and they have their own languages among themselves. So, the different cultures. So anyway, if I go back to where I finished on my last session, there was me, finished my commando course, an ex-paratrooper. And next to me was a guy I hardly knew. And I found out this is potentially my next commanding officer. And believe it or not, he used to be a paratrooper as well. Wow. So, I goes to my squadron and I didn't get put where I wanted to go. There's me wanting to go in a field troop. No, I was to go to HQ. That really annoyed me. Couldn't do anything about it. Just get your head down, get on with it. Something will break.
Just keep doing what you're doing. Don't get annoyed, don't get upset with people, you're not going to achieve nothing. So there I am working away, and we're going to Northern Ireland. So I no sooner landed in the squadron, didn't know anyone, and I was sent to Northern Ireland to work. And so I was in the city of Belfast, and then that means big high-rise blocks, patrolling streets. From there, I went down into Forkhill, Crossmaglen, on the borders, the big open country. So it was different kind of soldiering. In view of our enemy who were across the other side of the Irish border. Well, that's politics. And so, really, as the British Army, you then start an interest in politics because it affects where you go and what you do. You should always understand who you're fighting for and what they want to achieve. Now, we finished Northern Ireland, we were really lucky, we lost nobody. Nobody got hurt. We all went, we all came back. But that was very much one, luck. Sometimes you just need luck. And, you know, it's hard to explain. You know, just coming back, you were lucky, you were in a good team. Did you deter anybody by people watching you and going to take you on, saying that's a good team, we don't want to mess with them? So we finished Northern Ireland, I came home. We had a few months, I went to Norway. Out to Norway, it's -20, -30, -40. Wow, that is cold. Never experienced anything like it in my life. Freezing temperatures. You know, there's nothing like it. Sometimes needing to keep vehicles running all night because they will freeze. Never ever getting a new vehicle because the engine was so tight it wouldn't start in a cold weather. And so there we are working, we learn how to ski. We learn how to exist in a snow hole. You then again become part of a team. For a snow hole to be successful, everybody's got to be strong. Everybody's got to pull their weight. That's why this physical ability as a soldier, you've got to keep it there. You've got to stay fit, otherwise you go down with hypothermia or whatever. But being fit allows you to change direction and do things. And now I apply that to business that I own. Stay very light and make yourself able to move. Don't have lots of baggage. Don't tie yourself down to one path. Always be able to up sticks and change direction in life. ट्रस्ट है लोगों का। मुझे लगता है आप लोगों तक रसाई नहीं आपकी हो पाती। आपका मंशूर क्या है? किसी सियासी जमात में इतना अच्छा इंतखाबी कमीशन नहीं है। अच्छे कंटेंट देखना चाहें तो फिर डेफिनेटली आहिस्ता सा चेंज तो आएगा ना, ग्रेजुअल। तमाम 12 ज़ोडिक साइन के ऊपर मुझे अबूर है। दुबई के पास वसाइल थे, आज पाकिस्तान के पास तो बहुत कुछ है। जो सेफ सिटी के हवाले से है वो अब तो काफी ज्यादा जो है दोबारा वर्किंग में आ गए हैं। हाँ, एक टाइम आया था जब काफी कम हो गए थे। 50 तो स्टार नहीं हो सकते, स्टार तो 3-4 ही होंगे किसी भी फील्ड के। बच्चे को देखा कि वो एक ऐप के अंदर घुसा हुआ है जिसको टिकटॉक कहते हैं। वेलकम टू सेटल अराउंड द वर्ल्ड। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म बड़ा अहम रोल प्ले करता है किसी भी वीज़ा एप्लीकेशन में। विजिटर वीज़ा किन लोगों को मिल सकता है
और विजिटर वीज़ा पर हम क्या कुछ कर सकते हैं, ये यहाँ पर देखना बड़ा ज़रूरी है कि वो किन लोगों को साथ लेके जाना चाहता है। So, the last time we spoke, we were in Northern Ireland. And when you look at it, the British Empire, how it had been managed, people tried to do the same thing again in Northern Ireland. And so it didn't work. It didn't work at all. Very much colonialism. The army had been based on it. Senior people in the army had actually thought, we'll do this in Northern Ireland, and it didn't work. You can't use the same sort of methods as you'd used elsewhere in the world. And so we had lots of problems coming together. We had the Catholics, we had the Protestants, we had an unequal living standards, quality of work. Everything was different between, just simply because of religion, which was an absolute disgrace. And then you had people in various political parties favouring one side and not the other. So it wasn't balanced, and it wasn't a good scenario to go into when you're trying to get a decision and people are telling each other lies.
So it's really difficult to understand what went on in the background. But you will find that although we have the peace agreement now, the peace agreement's not really fair in that British soldiers can still be prosecuted, but people who are in the military, the IRA and other groups can't. So that is difficult for British soldiers to accept. But there's no progress without compromise, and that's life. Sometimes you've just got to, okay, as long as it doesn't go too far. So Northern Ireland was a difficult one. There was no political answer, no political shutdown to the situation without somebody giving something massive. And the British government and the British military men took a huge hit to actually secure that peace agreement up until this day today. But anyway, we move out Northern Ireland. We've been to Norway. We've settled down in our new squadron down there in Plymouth. And life's good. I'm promoted, moving on. Things are going really well. And then this guy who sat next to me, who's now my commanding officer, Roderick MacDonald, got on well with the guy. One day, all of a sudden, my boss man tells me, Sid, my staff sergeant, commanding officer wants to see you, Terence. What? Why? Oh, is my mum dead? Is my dad dead? What's wrong? That's the only reason you go to him. He calls you in the office, has a nice little chat with you, and you get a ticket and you go home to sort things out. And I was just wheeled in. Sit down. Wow. What's going on? What happens? Quarter South. We're going to war on Monday. What? Right, you and I need a little chat. I'm going to sack my driver and you're going to be my bodyguard. What? We're going to, let's get this right, sir. We're going to war on Monday and I'm going to be your bodyguard. Yes, that's right. And what I want you to do is, and he had a list, bush. Right. I want you to do all this and you can go home for the weekend. What? Right, I want all this done. You can go home, just go home yourself, come back. Don't tell anybody what's happening. There's only you knows. You know before some of the senior staff, because I believe I can trust you. Wow, what a thing for a command officer to say to somebody as low as a corporal. But we've been on the same commando course. With past pleasantries, just walking down the yard, around the offices. Hello, sir. Hello, South. But that guy trusted me. It was amazing how much trust had been built. And so I had to go back to my sergeant. It's like, what's happening? I don't work for you anymore, Sid. What? Sergeant, I don't work for you anymore. I work for the boss. Ah, right. What do you do for him? I don't know. He just gives a list of jobs and I've got to go. So I'll see you next week. And I went out. I got all the jobs done he wanted done. I kept my mouth shut. I jumped in my car. I went home for the weekend. Now, when you go home for the weekend and you go to war on the Monday, what do? You might never come back. You've got a mum and dad. So anyway, we'll leave that for the next session. I'd like to thank you.
is one of the 13 gates of Lahore. It was built by the 3rd Mughal Emperor Akbar in 1600. These gates gave access to Lahore, which was confined in 30 feet long wall by this very emperor. It is named as Delhi Gate as it faces Delhi, which was the capital of this Mughal state. In ancient times, it has remained the central gate of Lahore as all of the trade took place through this gate. It was the only trade fair in the city. To enter the city and to reach Royal Fort, Mughal Emperor and all the other high officials used this passage. The alleyway that connects the gate with the Royal Fort is known as Royal Trail. The commuters used only one gate to move in and out of the city. Guardians stood outside the gate 24/7. They used to open the gate at dawn time and closed them at dusk. Nobody was allowed to enter the city after sunset without the permission of the head guard. But now, this city no more closes at sunset. This gate is a witness of different eras, especially when the government changed. This gate held great importance during the Mughal reign, and it was known as the welcoming gate to enter in the royal city. When Britishers took over the subcontinent, this gate was converted in the courts of magistrate. Rooms were converted into small prisons, and it became the local police station. After the partition, it was formed into girls' school, which still exists till date. During the rule of the Britishers in the subcontinent, the structure of the gate was changed. In 1800s, Britishers demolished these very gates. In the early years of 1900, Akbar the Great rebuilt these gates according to the contemporary style of Mughal architecture. When it was rebuilt, the actual place of the gate was changed. It is clear from the Mughal architecture that the Mughals followed the principle of balance in their lives. If we take a look at the Mughal architect, the great mosque Wazir Khan was visible from the gate, but this is not the case now. Due to the flood, great changes took place. Moreover, the Britishers changed the actual places of many buildings, and Delhi Gate is one of them. If we compare Delhi Gate with the rest of the gates of Lahore, this gate has a very interesting Khan Mosque from the rooftop of Delhi Gate. But now, we cannot see it due to the giant buildings which hinder its view. In order to save building from various attacks, the staircase is constructed on 90 degrees angle at several angles. The passageway from this gate to Lahore Fort includes many historical buildings such as Wazir Khan Masjid, Sunehri Masjid, Maryam Zamani Masjid, Haveli Asif Jah. There are several famous markets located at this place, namely Akbari Mandi, Kaisara Bazaar, Awan Market, Azam Cloth Market and Kashmiri Bazaar. Well, Terence South here again, nice to be back. You left me at home last time we spoke, and I'm going to war on the Monday, and I arrive home at the Friday night, 11 o'clock, and I can't tell anybody. What do? What do you do? Do you cry? Do you kiss your mother? Well, your head. It took me 10 hours to drive home. My head's doing this. What do I do? Do I leave my car there? If I leave my car at home, that means my mum doesn't have to come to get it if I die. She can just sell it. She doesn't have to go to the camp to where all the other wives and want mothers to pick cars up and things up that belong to their sons. And your head is just scrambled.
But remember, you stay physically fit. Just keep your eye on, this is what I've got to do. Don't let things get complicated. Just do what needs to be done. So there I'm home. I goes and buys a watch. My mother's like, what are you buying a watch for? What you bought a Casio watch for? You've got a Rolex. You got Rolex for your 21st birthday. You bought it for yourself. You bought it with a credit card. Why have you bought a Casio? I was leaving my Rolex at home. I was not taking my Rolex to war. Put it in the box, put it in the bedside cabinet, put my Casio on, and that was where I was going to go with. I then bought some clothes. I actually went out and spent a lot of money on my credit card, to be honest, because if I died, then it just got paid off by the insurance company. So I went out and spent some money, bought myself some nice clothes, and I finished with my girlfriend. And people couldn't believe it. And I was like, yeah. I finished with my girlfriend. Why? I didn't want anybody, should I die, something happening over my coffin. She hardly knew my mother. She didn't know my dad. She didn't know my brother. It was like everybody would say, who's this woman crying here? Who's she? She's only known my son for a year. We've known him 21. You know, so it was like, buff, girlfriend, gone. I went round to two friends and apologised, said a few things. Look, I've come to make up, I'm really sorry for what I said, but I went away, everything was cleared. So if I didn't come back, there's nobody could say a bad thing about me. I'd apologised to those where I'd been wrong, and other people had said, well, yeah, I think more of you for doing that, and it was a big leveller, but I didn't want any ill feeling anywhere. And when I overran my time, I didn't get the train. I said, right, I'll have to get the car. The car's got to go. So, in the car I drove 10 hours back to camp. I was there for the Monday morning, into the boss man's office. And then that was a really, really difficult time. So there's me. This is just preparing for war. That's not, we haven't even got there. And what do you do? So anyway, time goes on, everybody gets broke on the news on the Monday morning at parade. I've already known for 3 or 4 days. Right, I'm ahead of the ball here. Corporal South, I want you to do this, this and this. I want you to get a car, And the commanding officer, his children were in school in Manchester, I remember. And he says, yeah, I'm going to give a presentation at the Manchester school where my children go, and I'm going to do this and go that, and I want you to drive me up there, and we're going up this afternoon. And it was like, wow, right, we're off. So I drove to Manchester, drove back, thought nothing of it. But you know that guy, commanding officer or not, he was driving all the way to Manchester to a private school where his children were in boarding school, giving a presentation about the army, and he was actually saying goodbye to his children. All undercover. And it was really, now in later life you think about it, you think, wow, I never seen that at the time, as you reflect on things. So anyway, obviously there's some guys whose wives wouldn't let them go. We were supposed to be leaving on the Friday, for instance. And we had to go down as the muscle squad and go on, you come with us. She said, no, let us go, we're fighting. Oh. So, in the Land Rovers, the squadron was together and off we went. And I actually went, as we call it, south and boarded HMS Fearless. And this was one of my real lessons in life, this. And what a place. So HMS Fearless was the command ship. Whole of the land forces were going to be commanded from here. Brigadier Julian Thompson, all the top guys were on there. And there's me, the guy that looked after Rod MacDonald. So anyway, goes to Falklands, stops off at Ascension Island, and I nearly died there through a silly accident. Nearly drowned in a vehicle that just couldn't swim. But anyway, we get to the Falklands, and there we are. Goes ashore, the firefight starts. The firefight is when you shoot at each other. We got on land, we didn't have much trouble in San Carlos water, and then we started moving out, and that's where the trouble came. Our first real trouble was in San Carlos water. So, here's me signing off till our next meeting on South Asia TV. Thank you.
चलिए हम और आप देखते हैं कि हुकूमतों में बैठे सियासतदानों की बातें इतनी मुश्किल क्यों होती हैं। क्या हुकूमती वादे आम पाकिस्तानी के फहम से बालातर नहीं होते? देखिए पहली बार एक अवामी नुमाइंदे को अरबाबे इक़्तिदार से आपकी बात करते हुए। Hello, I'm Alan Curry. I'm bringing you a show badge of honour on my successful life in the police service to the rank of Chief Superintendent. Talking about me, and hopefully I'm saying some nice things about myself. There's a couple of bad ones, I'm sure, as well. And I don't like criminal activity. As opposed to the other way around, when you arrest somebody and have to find the evidence. And the feeling of doing something for somebody else, I don't know how you can get that from anybody else. निसार मैं तेरी गलियों के ए वतन के जहां, चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नज़र चुरा के चले, जिस्म जान बचा के चले। बने हैं अहले हवस मुद्दई भी मुनसिफ भी, किसे वकील करें किससे मुंसफी चाहें, मगर गुजारने वालों के दिन गुजरते हैं, तेरे फराक में यूं सुबह शाम करते हैं। गर आज तुझसे जुदा हैं तो कल बहम होंगे, ये रात भर की जुदाई तो कोई बात नहीं, गर आज औज पे है ताले रकीब तो क्या, ये 4 दिन की खुदाई तो कोई बात नहीं। Hello, Dr. Anand here to tell you about unleashing your inner power. When you talk on Facebook with someone with your family far away, genuine communication takes place. Just look after yourself and grow in power and grow in finance and grow in status. If you stay in your comfort zone, you'll never find out who you are.
बाग मुगलिया बागात की तर्ज में तामीर शुदा बागात में से एक है। ये मशरिक में किला लाहौर, मगरिब में बादशाही मस्जिद, शुमाल में रंजीत सिंह की समाधि और जुनूब में रोशनाई दरवाजे तक फैला हुआ है। इस बाग के मरकज में हजूरी बाग बारादरी है जो रंजीत सिंह ने तामीर करवाई थी। हजूरी बाग दूसरे मुगलिया बागात की निस्बत एक छोटा सा बाग है जो आलमगीरी दरवाजे से बादशाही मस्जिद तक फैला हुआ है। ये बाग महाराजा रंजीत सिंह ने 1813 में तामीर करवाया था। ये बाग रंजीत सिंह ने मुगलिया तर्ज तामीर पर कोहे नूर हीरे की शाह शुजा से छीनने की खुशी में तामीर करवाया था। इससे पहले आलमगीरी सिरी नामी यादगार यहाँ वाक़ थी जिसे खत्म कर दिया गया था। इस बारादरी में इस्तेमाल होने वाला संगे मरमर और इससे तामीर शुदा इसके सतून नहायत दिलकशी से बनाए गए हैं। हजूरी बाग की इस मरकजी बारादरी जो रंजीत सिंह की अदालत हुआ करती थी की छत मुकम्मल तौर पर शीशे से तामीर की गई है। बारादरी और बाग तकरीबन 45 मुरब्बा फीट और तकरीबन 15 कदम फासले तक सिखों पर अंग्रेजों के हमलों में बर्बाद हो गई थी। इस हिस्से की तामीर नौ बरतानवी राज में इसी नक्शे पर की गई। 19 जुलाई 1932 को इस बारादरी की ऊपरी मंजिल मुनहदिम हो गई जो दोबारा तामीर ना की जा सकी। प्रोग्राम दी करंट अफेयर्स के साथ मियां सैफ रहमान हाजिर खिदमत। एक सरेदस्त जो मसला दरपेश आया वो तो गंदम का स्कैंडल है। 22 अक्टूबर 2023 को कमेटी जो है कैबिनेट मीटिंग में अप्रूवल दी जाती है कि जी हम गंदम उगाएं। आप जो कोई भी हैं, आप एक पॉलिटिकल पार्टी से हैं। मुल्क के अंदर ना आप टैक्स लगा सकते हैं, ना आपके पास टैक्स कलेक्शन है। ये है कि या तो अपनी आप जातियात की सियासत कर दें। ठीक है, ईरान में वेस्टर्न कंट्रीज के, अमेरिकन और ब्रिटिश के इंटरफेरेंस के फुटप्रिंट्स मौजूद है। हमारी जो मिनिस्ट्री है प्लानिंग की, उसमें कैपेसिटी भी नहीं है इतने बड़े प्रोजेक्ट को हैंडल करने की। Hello and welcome to Business ABC. But the number one reason why businesses fail, whether they are starting or scaling or growing, is because of money. And when you go to them with an idea, they will always go, "Oh, great idea. Oh, vadya." The best businesses either fix something or they make them better. Where it's legal or where it's contract, take your time. ट्रस्ट है लोगों का। मुझे लगता है आप लोगों तक रसाई नहीं आपकी हो पाती। आपका मंशूर क्या है?
किसी सियासी जमात में इतना अच्छा इंतखाबी कमीशन नहीं है। अच्छे कंटेंट देखना चाहें तो फिर डेफिनेटली आहिस्ता सा चेंज तो आएगा ना, ग्रेजुअल। तमाम 12 ज़ोडिक साइन के ऊपर मुझे अबूर है। दुबई के पास वसाइल थे, आज पाकिस्तान के पास तो बहुत कुछ है। जो सेफ सिटी के हवाले से है वो अब तो काफी ज्यादा जो है दोबारा वर्किंग में आ गए हैं। हाँ, एक टाइम आया था जब काफी काम हो गए थे। 50 तो स्टार नहीं हो सकते, स्टार तो 3-4 ही होंगे किसी भी फील्ड के। बच्चे को देखा कि वो एक ऐप के अंदर घुसा हुआ है जिसको टिकटॉक कहते हैं। Hello, I'm Alan Curry. I'm bringing you a show Badge of Honour on my successful life in the police service to the rank of Chief Superintendent. Talking about me, and hopefully I'm saying some nice things about myself. There's a couple of bad ones, I'm sure, as well. And I don't like criminal activity. As opposed to the other way around, when you arrest somebody and have to find the evidence. And the feeling of doing something for somebody else, I don't know how you can get that from anybody else. प्रोग्राम भी करंट अफेयर्स के साथ मियां सैफ रहमान हाजिर खिदमत। एक सरेदस्त जो मसला दरपेश आया वो तो गंदम का स्कैंडल है। 22 अक्टूबर 2023 को कमेटी जो है कैबिनेट मीटिंग में अप्रूवल दी जाती है कि हम गंदम उगाएं। आप जो कोई भी हैं, आप एक पॉलिटिकल पार्टी से मुल्क के अंदर ना आप टैक्स लगा सकते हैं, ना आपके पास टैक्स कलेक्शन है। ये है कि यहाँ तो अपनी आप जातियात की सियासत कर दें। ठीक है, ईरान में वेस्टर्न कंट्रीज के, अमेरिकन और ब्रिटिश के इंटरफेरेंस के फुटप्रिंट्स मौजूद है। हमारी जो मिनिस्ट्री है प्लानिंग की, उसमें कैपेसिटी भी नहीं है इतने बड़े प्रोजेक्ट को हैंडल करने की।
Well, hello again. Alan Curry here with Badge of Honour. And the last episodes I've been trying to take you through my career, some of the feelings, how you progress, and maybe some stories that I've been involved with for, well, we're going to say for better or worse, but actually for better. Success has 1,000 fathers, don't forget. So as I progressed through for some of the things I've said earlier, and as I improved or worked through the ranks, obviously the responsibilities and the work you got involved with changes, as does the requirements of the role. And quite obviously I did a number of training courses, but I remember, I mentioned the last time some of the dark humour with the dog, but we also, one of my stations was at the local coastal resort at Tynemouth, and we had a very, very vibrant licensing trade at the time, and a major establishment within that location was a hotel called the Rex Hotel. Now it was vibrant, I mean vibrant, every night till 2 o'clock in the morning. But through intelligence and other information, we realised, and sadly this does tend to occur with late night establishments, maybe not as regular now, but it definitely did then, of drug dealing and taking. The thing about dealing with large premises like that, the first step is to maximise the intelligence and gather the evidence. And we did that by using officers who would go undercover in plain clothes, generally younger officers, which gives its own little risk because they're not as experienced, but the younger officers are the ones who can fit in much easier. It's not really going to be my scene now to be sitting in a nightclub trying to buy drugs, because I would stand out like a sore thumb, being a little bit more mature. So we send some of our younger male and female officers in. They buy drugs, they locate where the drug taking or dealing is taking place, and as a consequence we would end up purchasing from different people on a period of time to build up the evidence against them. We would identify who they are, and then ultimately, and the big thing about these type of operations are keeping them secret, because if you have a lot of police officers involved, sadly, intentionally or otherwise, and generally otherwise, sometimes the information gets spread around and gets out from the station, so it has to be kept very, very tight. Only a small number of people know exactly what's going on. And when I say the younger officers, we don't just send them into these places. They're dropped off. We have what we call welfare officers. They're picked up, they're taken home, they have to make their statements, they're debriefed. So we don't just send them in and say, buy a few drugs. There's a lot of work and effort and time goes into building up the case against the individuals. And the next step, of course, within this is we have to raid the premises. And still to date, my information is it's still the largest raid that the Northumbria Police actually have participated in. We had 3 removal wagons, because what we do is we put our senior officers, and I say senior as experienced public order officers in. We need to pull up quickly. You've got to get in quickly. You've got to arrest people quickly, because if you don't, they have the opportunity to dispose of the drugs. They have the opportunity to run away. And behind them was 30 vans of either police officers, dog handlers, evidence gatherers. And of course, within all of this, you've got to keep it secret. Now, if you've ever done any public speaking, and it would appear I'm doing some of it now, addressing 150 police officers is actually quite an interesting way of telling people, because up to that time, nobody knows where they're going. And I always remember one of the handlers who was good at doing all this undercover work saying to me, I don't know how you managed to stand up there and talk to all these police officers. I couldn't do it. But on the same token, I did say to the individual who was the top surveillance officer, there's no way I could do what he did. So quite obviously, horses for courses.
जो कि लाहौर के 13 दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है, ये तीसरे मुग़ल शहंशाह अकबर ने 1600 में तामीर किया था। इन 13 दरवाज़ों ने शहर लाहौर तक रसाई फराहम की, जो एक वक्त में इसी मुग़ल बादशाह के ज़रिए 30 फीट ऊंची किले की दीवार में बंद थी। इसका नाम दिल्ली गेट इसलिए रखा गया क्योंकि इसका रुख दिल्ली की तरफ है, जो मुग़ल सल्तनत का दारुल हुकूमत था। और तारीख में एक वक्त ये दरवाज़ा शहर लाहौर का मरकजी दरवाज़ा रहा। शहर में तिजारत का ये वाहिद मरकज़ था। मुग़ल और दूसरे हुक्मरान शहर में दाखिल होने और अजीम शाही किले तक जाने के लिए इस रास्ते का इस्तेमाल करते थे, और इस दरवाजे को लाहौर के किले से जोड़ने वाला रास्ता रॉयल ट्रेल कहलाता है। आम दरवाजे और तमाम मुसाफिर एक ही गेट इस्तेमाल करते थे। इस दरवाजे के बाहर मुहाफिज खड़े रहते थे। दरवाजे को तुलुए आफ्ताब के वक्त खोल दिया जाता था और गुरूबे आफ्ताब के वक्त बंद कर दिया जाता था। हेड गार्ड्स की इजाज़त के बगैर किसी को गुरूबे आफ्ताब के बाद शहर में दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी। ये शहर अब गुरूबे आफ्ताब के वक्त बंद होने वाला शहर नहीं रहा। दिल्ली गेट ने तारीख के मुख्तलिफ औकात में कई अदवार देखे, ख़ास तौर पर जब हुकूमतें बदली। मुग़ल अहद के दौरान ये सबसे अहम दरवाज़ा था और ये रॉयल सिटी के इस्तकबालिया गेट की हैसियत से जाना जाता था। जब बरतानवी हुक्मरानों ने इक़्तिदार संभाला तो इसे मजिस्ट्रेट की अदालत में तब्दील कर दिया गया। इसके कमरे छोटे छोटे जेल और मुकामी पुलिस स्टेशन थे। तकसीम के बाद एक लड़कियों का स्कूल बनाया गया था जो अब भी मौजूद है। बरे सगीर में बरतानवी हुक्मरानों के दौर में दरवाजे का ढांचा तब्दील कर दिया गया। शहर के दरवाज़ों को अंग्रेज़ों ने 1800 में ख़त्म कर दिया। बाद अज़ां 1900 की दहाई के अवाइल में मुग़ल फ़न तामीर के साथ मखलूत 9 आबादियाती तर्ज के दरवाजे दोबारा बनाए गए थे, जो कि अकबर आज़म ने तामीर करवाए थे। जब दोबारा तामीर किया गया तो गेट का मुकाम मुंतकिल कर दिया गया था। मुग़ल फ़न तामीर से ये बात वाज़े होती है कि मुग़ल ख़ास तौर पर तवाज़ुन के मालिक थे, और अगर हम मुग़ल फ़न तामीर के तर्ज पर अमल करते हैं तो वज़ीर खान की अज़ीमुश्शान मस्जिद गेट से दिखाई देती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सैलाब के दौरान शहर के मंजर में मुतादिद तब्दीलियों के साथ बरतानवियों के ज़रिए शहर को नए सिरे से तब्दील किया गया और मुकामात मुंतकिल हो गए। अगर इस शहर के दूसरे दरवाज़ों से मुवाजना किया जाए तो ये गेट का ढांचा इंतहाई दिलचस्प और अनोखा है। ये एक 2 मंजिला दरवाज़ा है जिसमें तकरीबन 12 कमरे हैं, जिनमें इस वक्त स्कूल भी मौजूद है। इस दरवाजे से लाहौर के किले जाने वाली पगडंडी में शाही हमाम, वज़ीर खान मस्जिद, सुनहरी मस्जिद, मरियम ज़मानी मस्जिद, आसिफ जां की हवेली और फिर आखिरकार किले और इस जैसी कई आलमी यादगारें भी मौजूद हैं। बहुत से मशहूर बाज़ार भी यहाँ मौजूद हैं, जिनमें अकबरी मंडी, कैसरा बाज़ार, अवान मार्केट, आज़म क्लॉथ मार्केट और कश्मीरी बाज़ार शामिल हैं। दिल्ली गेट से अंदर दाखिल होते ही बाएं जानिब एक तरफ शाही हमाम है, जो कि कारीगरी का एक हसीन इम्तिजाज है, और दूसरी तरफ अकबरी गेट का अहाता शुरू होता है।
And one of the things we did then, and I'm not telling any state secrets because the world's moved on, we would get, I think we had £1,000 in £10, £20 notes to give to our surveillance officers to buy drugs on the night in question. But what we did was we put them through the fax machine, we photographed them, and as a consequence, shall we say for argument's sake, at 10 p.m. those notes were in our possession. The fax was time and dated. As a consequence, we knew that those serial numbered £20 notes were in our possession at 10 o'clock. Then the undercover officers would buy drugs off the individuals, and when we arrest them, hopefully, they would be in their possession. So the link is how we purchased the drugs, and again, we're gathering evidence. And that's exactly what happened on the night in question. We raided the premises. The drug dealers, there were 6 of them in all, were taken into custody. We had all of the evidence, and ultimately they all got 3 to 5 years for drug dealing, and we managed to clean up the location. We closed the premises down. It was no longer able to trade. The people who had the place sold it to somewhere else, and it became a top hotel. So from dealing with issues that were of concern to members of the public, to gathering the evidence, to arresting the people, and actually making the locality a better place, that probably took us about 10 weeks to get from beginning to end, with a lot of resources, a lot of planning, but ultimately a very good success story. And you learn from those particular things, because once you've done it once, you may know how to do it again. Because the next step of moving into these things is what we call planning, pre-planning, to be perfectly honest. When we're talking about firearms incidents, there are 2 types of firearms incidents. One which is they call a spontaneous, because at any given time around the country, each force will have armed officers on patrol. And there'll be a situation arises where the necessity would appear for an armed officer to attend. There's no time to think about it. You're going to where the call came in from. But the other ones are what we call pre-planned, where we have the ability to think about what we're doing. So there's a mixture here of spontaneous and pre-planned with the next situation I'm going to speak to you about. You may be conversant with the traders Costco. We have one in Gateshead. There was 3 people in a car pulled up, security van was loading the money, had their guns with them, not the security people, the criminals, threatened the men with the money, took the money and drove off, and they were being pursued. As they drove off, they managed to hit the curb with their car wheel, and as a consequence couldn't go any further. So they ran into a line of waiting traffic. Now we've got the situation where I'm saying this is a spontaneous response. Firearms officers are on the way, right? We've had no time to think about it, no time to plan it. We're on the way to try and see if we can apprehend these offenders. What they did was they went to a car in the line of traffic where a lady was driving, pointed the gun at her, got her out the car and drove off in her car. Unbeknown to them, but it was known to them once they got in the car, she had her baby in the back of the car in the child seat. So they drove off to a nearby locality. On the way, they threatened 2 of my police officers with guns, and one of whom was driving a Panda at the time. And I always remember his words when he said to us, he said, "You know, boss, it's not like Dirty Harry, I couldn't get reversed quick enough. When there's somebody pointing a gun at you." Anyway, these 3 offenders eventually dumped the car with the baby in, ran off and got away. Now, we've got a number of crime scenes. We've got the crime scene where the van was raided, we've got their own car, we've got the baby's car, it was a busy night. Now we've got a situation, and what are we going to do? Well, first thing is we needed to put an incident room together with some of our CID officers. We needed to gather intelligence, we needed to identify who we thought the offenders were. And as a consequence, we had 3 and 4 addresses at a locality in my area where we believed they may be. So then, with a firearms team, I don't want the front, believe it or not, but I have to be there and devise a plan for entering these premises. And ultimately, in the space of 24 hours, we went into 4 houses with firearms teams, and we were successful with one individual. The second one, his girlfriend rang up and said, he's going to give himself up because you're breaking into my house the way you've broken into theirs. And then we found the third one. Subsequently, the 2 offenders who we arrested initially
they received 14 years imprisonment each. Hi, I'm Uma Malhotra and I welcome you to my show, Glow and Beyond with Uma Malhotra. Why should I get that facial? Why should I go for a Repicharge facial, then an O3 facial? We do the research for you. So we make sure we give you the best. For example, you got fat lash. A client was allergic to fat lash, so I did a London lash patch test on her. She was absolutely fine with London lash. So I used the London lash. I'm Rahila Ahmed. I'm a psychotherapist, a personality coach. We have decided to bring all of those tools and techniques that are scientifically proven. Mama, मुझे बहुत ज़्यादा stress हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा tension हो रही है. What are we going to talk about today? Now we have two different parts of our mind. One is and one is the subconscious mind. Moment to moment miracles are going to come in your life, and moment to moment healing and happiness is going to come to your life. And as I mentioned earlier, today we are going to talk about your health. चलिए हम और आप देखते हैं कि हुकूमतों में बैठे सियासतदानों की बातें इतनी मुश्किल क्यों होती हैं। क्या हुकूमती वादे आम पाकिस्तानी के फहम से बालादर नहीं होते? देखिए पहली बार एक अवामी नुमाइंदे को अरबाबे इक़्तिदार से आपकी बात करते हुए। It's me, Jia. This is my street vibes. But I got you, baby. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight.
third one, we couldn't actually prove he was there. We didn't have enough evidence. So he was released. I don't know whether this is good or bad, but 2 years later, he was in a locality in Newcastle upon Tyne and he was stabbed and murdered. So, bottom line was, we went through a spontaneous situation, we went to a pre-planned situation, we had a successful outcome, and my officers who were threatened managed not to have any subsequent bad feelings or situations that caused them nightmares, dare I say. Well, bottom line is, for me, and hopefully still today, you can't point guns at police officers and you think you're going to get away with it. Of course, with other firearms situations, I did a couple where we pre-planned with what we called an armed surveillance, right? So this time I've got armed police officers with surveillance officers. And this referred to a situation where there was a bank robbery in a place called Wrighton. And they actually went through the roof of Lloyd's Bank, threatened the, obviously, cashiers and everything, took the money and ran. And of course we sealed the place off, we looked after them, but ultimately we couldn't find who they were. But for whatever reason, one of them had left a gun cartridge on the roof. And as a consequence of scientific evidence and forensic evidence, we were managed to get some DNA, which identified the person who had handled it to be a known armed robber. Now, he lived in a location in Fenham, Newcastle. But our situation then was, because he was dangerous, we didn't want to go breaking into his house. As a consequence, we needed to make sure it was safe for the officers, it was safe for the individual, and safe for members of the public. So I spent 3 days in a car watching this house, not me personally, but nearby. And I joke, and I do with my friends, he must have been the most boring bank robber in the world because he never came out the house for 3 days. And then he came out the house and went to a local hospital. And would you believe what had happened was his wife had fallen down the stairs, broke her ankle, and he had to take her to the local hospital, which was fine for us because now we've got everybody in place to deal with the situation. And he was subsequently arrested and he went to prison for 20 years. So these are all things that we'd like to say were success stories, because successful from a policing point of view, but also successful from a public point of view. The more of these people we remove from the street, the safer it is. So hopefully I've tried to explain from right at the very beginning on the previous episode about your emotions as a 19-year-old, as a PC dealing with grief and aspects of low-level crime, to actually as a senior officer dealing with some of the worst offenders in society and how you deal with it. And of course, you learn, you like success. Not everything's successful, but that's where planning, intelligence, professionalism, your training, they all come to play in mind. And of course, you've got to remember that at that time, I'm the leader, I'm the manager, I'm the leader. People look up to you. So all those pressures are on the leader to hopefully be successful and do things properly. I always think, if you look at Napoleon, I think he was on about his generals, didn't he, when he said, is he a good general or is he a lucky general? Because he wanted lucky generals. But I'd like to think I wasn't a bad general, but I may have been lucky as well. And there's another chap I quite like listening to, well, he's sadly not with us now, Colonel David Hackworth, who was a very senior officer in the military in America. And one of his philosophies was, always have a go-to-hell plan. So there is always a situation where you plan, but you've got to remember that things can go wrong and how do you deal with them at the moment. And sometimes a number of spontaneous situations have to be dealt with spontaneously. So the last thing I would say for this episode would be, the thing that helps the police, and I'm sure this is the same in any country, is members of the public supporting, reporting, finding things that were out of place. You know, I mean, we are nationally and internationally an emergency service. You talk to the police, you don't go to the police to generally ring somebody up and say, can you talk to me? Although one or two do. It's because there's an issue in your personal life, or something you've seen that's not right, or something you worry about in relation to society. And as a consequence, the biggest ears and eyes that we have as police officers are members of the public. So I would always say, and I'm saying this probably nationally and internationally, never ever be frightened to ring the police. If you ring the police, we know it's because you've got a concern. We may have the answer, we may not have the answer,
but you'll never know unless you contact us to find out. And there can never be too many calls of people considering issues of criminality or things going wrong where you need the police to help you out. Anyway, I think that's all for this episode. I should probably be back in the next episode. So thank you very much. प्रोग्राम भी करंट अफेयर्स के साथ मियां सैफ रहमान हाजिर खिदमत। एक सरेदस्त जो मसला दरपेश आया वो तो गंदम का स्कैंडल है। 22 अक्टूबर 2023 को कमेटी जो है कैबिनेट मीटिंग में अप्रूवल दी जाती है कि जी हम गंदम उगाएं। आप जो कोई भी हैं, आप एक पॉलिटिकल पार्टी से मुल्क के अंदर ना आप टैक्स लगा सकते हैं, ना आपके पास टैक्स कलेक्शन है। ये है कि यहाँ तो अपनी आप जातियात की सियासत कर दें। ठीक है, ईरान में वेस्टर्न कंट्रीज के, अमेरिकन और ब्रिटिश के इंटरफेरेंस के फुटप्रिंट्स मौजूद है। हमारी जो मिनिस्ट्री है प्लानिंग की, उसमें कैपेसिटी भी नहीं है इतने बड़े प्रोजेक्ट को हैंडल करने की। निसार मैं तेरी गलियों के ए वतन के जहां, चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नज़र चुरा के चले, जिस्म जान बचा के चले। बने हैं अहले हवस मुद्दई भी मुनसिफ भी, किसे वकील करें किससे मुंसफी चाहें, मगर गुजारने वालों के दिन गुजरते हैं, तेरे फराक में यूं सुबह शाम करते हैं। गर आज तुझसे जुदा हैं तो कल बहम होंगे, ये रात भर की जुदाई तो कोई बात नहीं, गर आज औज पे है ताले रकीब तो क्या, ये 4 दिन की खुदाई तो कोई बात नहीं। Hello and welcome to Business ABC. But the number one reason why businesses fail, whether they are starting or scaling or growing, is because of money.
And when you go to them with an idea, they will always go, oh, great idea. Oh, vadya. The best businesses either fix something or they make them better. Where it's legal or where it's contract, take your time. Hello, Dr. Anand here to tell you about unleashing your inner power. When you talk on Facebook with someone with your family far away, genuine communication takes place. Just look after yourself and grow in power and grow in finance and grow in status. If you stay in your comfort zone, you'll never find out who you are. बादशाही मस्जिद 1673 में औरंगजेब आलमगीर ने बनवाई। ये अजीमुशान मस्जिद मुगल दौर की एक शानदार मिसाल है और लाहौर शहर की शनाख्त बन चुकी है। ये फैसल मस्जिद इस्लामाबाद के बाद पूरे पाकिस्तान की दूसरी बड़ी मस्जिद है जिसमें बैक वक्त 60,000 लोग नमाज अदा कर सकते हैं। इस मस्जिद का अंदाज़े तामीर जामिया मस्जिद दिल्ली से बहुत मिलता जुलता है जो औरंगजेब के वालिद शाहजहां ने 1648 में तामीर करवाई थी। मस्जिद के कुल 8 मीनार हैं जिनमें 4 बड़े और 4 छोटे हैं। मीनारों को बनाते हुए इस बात का एहतमाम किया गया कि अगर ज़लज़ले जैसी कुदरती आफात के हादसे के वक्त गिरने का खदशा हो तो ये मस्जिद के सहन में गिरने की बजाय मस्जिद के हदूद से बाहर गिरें। मीनारों की बुलंदी 176 फीट 4 इंच है। मस्जिद में गुंबद की तादाद 3 है। मरकजी गुंबद 49 फीट बुलंद है जबकि दीगर 2 गुंबद 32 फीट बुलंद हैं, जबकि गुंबद का कतर 65 फुट है। ट्रस्ट है लोगों का। मुझे लगता है आप लोगों तक रसाई नहीं आपकी हो पाती। आपका मंशूर क्या है? किसी सियासी जमात में इतना अच्छा इंतखाबी कमीशन नहीं है। अच्छे कंटेंट देखना चाहें तो फिर डेफिनेटली आहिस्ता सा चेंज तो आएगा ना, ग्रेजुअल। तमाम 12 ज़ोडिक साइन के ऊपर मुझे अबूर है। दुबई के पास वसाइल थे, आज पाकिस्तान के पास तो बहुत कुछ है। जो सेफ सिटी के हवाले से है वो अब तो काफी ज्यादा जो है दोबारा वर्किंग में आ गए हैं। हाँ, एक टाइम आया था जब काफी कम हो गए थे। 50 तो स्टार नहीं हो सकते, स्टार तो 3-4 ही होंगे किसी भी फील्ड के। बच्चे को देखा कि वो एक ऐप के अंदर घुसा हुआ है जिसको टिकटॉक कहते हैं। Hello, I'm Robin Ashby,
I'm a city councillor, I'm an advisor, I have done a lot of things in my life. Mix some hot Chileans, cool Jamaicans, Dominicans, Trinidadians and Bajans, with some Ethiopians, Chinese, Vietnamese and Sudanese. There were 282,000 people who came here to study. We can absolutely understand that first generation come here and they're in a strange land where they have to learn new customs and it's cold as well. वेलकम टू सेटल अराउंड द वर्ल्ड। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म बड़ा अहम रोल प्ले करता है किसी भी वीज़ा एप्लीकेशन में। विजिटर वीज़ा किन लोगों को मिल सकता है और विजिटर वीज़ा पर हम क्या कुछ कर सकते हैं, ये यहाँ पर देखना बड़ा ज़रूरी है कि वो किन लोगों को साथ लेके जाना चाहता है। आज के नाम और आज के गम के नाम। आज का गम चुकी है जिंदगी के भरे गुलिस्तान से खफा। जर्द पत्तों का बन, जर्द पत्तों का बन जो मेरा देश है। दर्द की अंजुमन जो मेरा देश है।
फ़कीर पाकिस्तान शायर मशरिक इलामा मोहम्मद इकबाल 20वीं सदी के मारूफ शायर, कानूनदान, सियासतदान और तहरीके पाकिस्तान की अहम तरीन शख्सियात में से एक थे। इलामा इकबाल उर्दू और फारसी में शायरी करते थे और इस्लाम से ख़ुसूसी लगाव रखते थे। इनकी वफ़ात 21 अप्रैल 1938 को जावेद मंजिल में हुई थी। मज़ार इकबाल की सादा सी इमारत मुस्तकील शक्ल की है। इसका एक दरवाज़ा मशरिक और दूसरा जनूब की सिमत में है। मज़ार इकबाल पर सफ़ेद मार्बल भी लगा है। मज़ार की दीवारों पर इकबाल की किताब ज़बूर अजम से लिए गए इशार कुंदा हैं और इसके अलावा कुरानी आयात की कैलीग्राफी भी की गई है। मज़ार इकबाल के बाहर सरसब्ज़ टुकड़ियों में मुनक़सिम बाग भी है जो बहुत दिलकश और खूबसूरत है। मज़ार इकबाल की तामीर में इस्तेमाल होने वाला पत्थर इसी नौयत का है जो मुग़ल शहंशाह ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के मकबरे की तामीर में इस्तेमाल हुआ है। My name is Terence South. I formerly served in the British Army. We had to go down as the muscle squad and come on, you come with us. She said, no, let us go, we're fighting. No. I could communicate, I had all the skills for the wirelesses, the radios. I could do that, that was no problem. I could do that blindfolded. Second World War, understood where you were and what you were doing, where your head was. चलिए हम और आप देखते हैं कि हुकूमतों में बैठे सियासतदानों की बातें इतनी मुश्किल क्यों होती हैं। क्या हुकूमती वादे आम पाकिस्तानी के फहम से बालादर नहीं होते? देखिए पहली बार एक अवामी नुमाइंदे को अरबाबे इक़्तिदार से आपकी बात करते हुए। I'm Rahila Ahmed. I'm a psychotherapist, a personality coach. We have decided to bring all of those tools and techniques that are scientifically proven. मामा मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है. What are we going to talk about today? Now we have two different parts of our mind. One is the conscious mind and one is the subconscious mind. Moment to moment miracles are going to come in your life and moment to moment healing and happiness is going to come to your life. And as I mentioned earlier, today we are going to talk about your health.
प्रोग्राम भी करंट अफेयर्स के साथ मियां सैफ रहमान हाजिर खिदमत। एक सरेदस्त जो मसला दरपेश आया वो तो गंदम का स्कैंडल है। 22 अक्टूबर 2023 को कमेटी जो है कैबिनेट मीटिंग में अप्रूवल दी जाती है कि जी हम गंदम उगाएं। आप जो कोई भी हैं, आप एक पॉलिटिकल पार्टी से मुल्क के अंदर ना आप टैक्स लगा सकते हैं, ना आपके पास टैक्स कलेक्शन है। ये है कि यहाँ तो अपनी आप जातियात की सियासत कर दें। ठीक है, ईरान में वेस्टर्न कंट्रीज के, अमेरिकन और ब्रिटिश के इंटरफेरेंस के फुटप्रिंट्स मौजूद है। हमारी जो मिनिस्ट्री है प्लानिंग की, उसमें कैपेसिटी भी नहीं है इतने बड़े प्रोजेक्ट को हैंडल करने की। मस्जिद वजीर खान शहर लाहौर में दहली दरवाज़ा, चौक रंग महल और मोची दरवाजे से तकरीबन 1 फरलांग की दूरी पर वाक़या है। ये मस्जिद नक्शो निगार में कारीगरी का मुंह बोलता सबूत है। इल्मुद्दीन अंसारी, जो आम तौर पर नवाब वजीर खान के नाम से जाने जाते हैं, सल्तनत मुगलिया के अहदे शाहजहानी में लाहौर शहर के गवर्नर थे और ये मस्जिद इन्हीं के नाम से मंसूब है। मस्जिद की बैरूनी जानिब एक वसी सराय है जिसे चौक वजीर खान कहा जाता है। चौक के 3 मेहराबी दरवाजे हैं। अव्वल मशरकी जानिब चटा दरवाजा, दोम शुमाली जानिब राजा दीनानाथ की हवेली से मुंसलिक दरवाजा और सोम शुमाली जीने का नजदीकी दरवाजा है। मस्जिद के मीनार 160 फीट ऊंचे हैं। इस मस्जिद की तामीर दिसंबर 1641 में 7 साल की तवील मुद्दत के बाद पाया तकमील को पहुंची। मस्जिद वजीर खान मुगलिया सल्तनत के अहद में तामीर की जाने वाली अब तक के नफीस नक्शो निगार का खूबसूरत इम्तजाज है, जो बादशाही मस्जिद की तामीर से 32 साल कबल तकमील को पहुंची। Hello, I'm Robin Ashby. I'm a city councillor, I'm an advisor. I have done a lot of things in my life. Mix some hot Chileans, cool Jamaicans, Dominicans, Trinidadians and Bajans, with some Ethiopians, Chinese, Vietnamese and Sudanese. There were 282,000 people who came here to study. We can absolutely understand that first generation come here and they're in a strange land where they have to learn new customs and it's cold as well. Hi, I'm Uma Malhotra and I welcome you to my show, Glow and Beyond with Uma Malhotra. Why should I get that facial? Why
Why should I go for a Repicharge facial, then an O3 facial? We do the research for you. So we make sure we give you the best. For example, you got fat lash. A client was allergic to fat lash, so I did a London Lash patch test on her. She was absolutely fine with London Lash. So I used the London Lash. रहे सदा सिंधु जी छोली मारवड़न जी मिठड़ी बोली रहे सदा सिंधु जी छोली मारवड़न जी मिठड़ी बोली गली गली ऐं घर घर गूंजन सिंधु अमर जा नारा 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 जिए सिंधु वारा जियन सिंध Hello and welcome to Business ABC. But the number one reason why businesses fail, whether they are starting or scaling or growing, is because of money. And when you go to them with an idea, they will always go, "Oh, great idea. Oh, vadya." The best businesses either fix something or they make them better. Where it's legal or where it's contract, take your time. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। साउथ एशिया ग्लोबल के साथ मैं हूं हबीबा राशिद। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइन। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आजम सवाती को जेल से रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। आजम सवाती को अटक जेल से रिहा होते ही पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया। 26वीं तरमीम पर फुल कोर्ट बेंच के लिए सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर तरीन जजेस ने चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। 26वीं तरमीम पर फुल कोर्ट बेंच के लिए जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने चीफ जस्टिस याया अफरीदी को खत लिखा है। वादे पूरे और मुशावरत ना करने पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। सराय के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने बतौर एहतजाज गुज़िश्ता हफ्ते जुडिशल कमीशन से अपना नाम वापस लिया। बिलावल भुट्टो का कहना है कि हुकूमत ने जुडिशल कमीशन में मसावी नुमाइंदगी के वादों को पूरा नहीं किया। पार्लियामेंट से जजेस की तादाद और सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत बढ़ाने के मामले पर पीटीआई ने JUIFA से राब्ता करके अहम मुलाकात तय कर ली। जराये के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली की क़यादत में पीटीआई का आला सतह वफ्द आज मौलाना फजलुर रहमान से इनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात करेगा। KPK हुकूमत ने कवाली इजला के मदरसों में 300 से ज्यादा अल्टरनेट लर्निंग पाथ और प्रोग्राम सेंटर्स खोलने का ऐलान कर दिया। कवाली इजला में 70% लड़कियां तालीम से महरूम हैं। तालीमी इदारों से बाहर लाखों बच्चों को स्कूल के दर्जों तक लाना KPK हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। गजा में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली फौज की बमबारी से मज़ीद 37 फलस्तीनी शहीद हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज की जानिब से कमाल अदवान अस्पताल पर दोबारा हमला किया गया, जबकि शुमाली गजा में इसराइली फौज का मुहासरा जारी है और फलस्तीनियों को वार्निंग भी जारी कर दी गई।
लाहौर में कई रोज बाद स्मोक में किसी हद तक कमी आ गई, लेकिन आलूदगी अब भी सरफहरिस्त है। अमरीकी एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक लाहौर में आलूदगी का स्कोर 1000 से कम होकर 609 पर आ गया। और लाहौर में फजाई आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए इंतजामिया ने कार्रवाइयां तेज कर दी। इंतजामिया ने ग्रीन लॉकडाउन एरिया में मोटरसाइकिलों के स्टैंड बंद और चिंची रक्षों पर पाबंदी लगा दी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ट्रस्ट है लोगों का। मुझे लगता है आप लोगों तक रसाई नहीं आपकी हो पाती। आपका मंशूर क्या है? किसी सियासी जमात में इतना अच्छा इंतखाबी कमीशन नहीं है। अच्छे कंटेंट देखना चाहें तो फिर डेफिनेटली आहिस्ता सा चेंज तो आएगा ना, ग्रेजुअल। तमाम 12 ज़ोडिक साइन के ऊपर मुझे अबूर है। दुबई के पास वसाइल थे, आज पाकिस्तान के पास तो बहुत कुछ है। जो सेफ सिटी के हवाले से है वो अब तो काफी ज्यादा जो है दोबारा वर्किंग में आ गए में। हाँ, एक टाइम आया था जब काफी कम हो गए थे। 50 तो स्टार नहीं हो सकते, स्टार तो 3-4 ही होंगे किसी भी फील्ड के। बच्चे को देखा कि वो एक ऐप के अंदर घुसा हुआ है जिसको टिकटॉक कहते हैं। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते हैं कि ईरानी वजीर खारजा सैयद अब्बास अरागची 2 रोजा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ईरानी वजीर खारजा अपने दौरे के दौरान वजीर आजम शहबाज शरीफ और नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसाक डार से मुलाकातें करेंगे। तर्जुमान के मुताबिक ईरानी वजीर खारजा अरागची मशरिक वस्ता की सूरत हाल और पाकिस्तान और ईरान के दरमियान 2 तरफा ताल्लुकात पर मुशावरत करेंगे। बयान के मुताबिक ये दौरा पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तिजारत, तवानाई और सलामती समेत वसी शोबों में ताउन और बातचीत को आगे बढ़ाने का एक अहम मौका फराहम करता है। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा आजम सवाती को जेल से रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक आजम सवाती को अटक जेल के बाहर से गिरफ्तार किया गया। साबिक वजीर और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ थाना टक्सिला और हसन अब्दाल मुकदमा दर्ज हैं। वाज़ेह है कि आजम सवाती को गुज़िश्ता माह एहतजाज के दौरान इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया था और इसके बाद अटक जेल मुंतकिल किया गया। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी और जिला अदालत ने 8 मुख्तलिफ मुकदमात में आजम सवाती की जमानत मंजूर की थी और रिहाई का हुक्म दिया था। विफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी ने आइंदा 10 साल तक बिजली की कीमतें बढ़ती रहने का खदशा जाहिर कर दिया। विफाकी वजीर अवैस लगारी ने खदशा जाहिर किया कि मौजूदा सूरत हाल बरकरार रही तो आइंदा 10 साल तक बिजली की कीमतें बढ़ती रहेंगी और आइंदा 10 साल में बिजली की कीमत मज़ीद नाकाबिले बर्दाश्त हो सकती है। अवैस लगारी ने कहा 10 साल तक सालाना 2.8% बढ़ने के बावजूद बिजली टैरिफ में इजाफे का रुझान रहेगा। स्टॉक मार्केट में 92,000 पॉइंट्स की हद बहाल हो गई, जबकि तबादला मार्केट में डॉलर भी सस्ता हो गया। करेंसी डीलर्स के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 9 पैसे की कमी हुई, जिसके बाद डॉलर की कीमत 277 रुपए 70 पैसे हो गई।
दूसरी जानिब कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज कारोबार के दौरान जबरदस्त तेजी रही। स्टॉक मार्केट का 100 इंडेक्स 411 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 92,000 की हद बहाल हो गई। गुज़िश्ता रोज स्टॉक मार्केट में 23 अरब 91 करोड़ 25,37,383 रुपए मालियत के 31 करोड़ 13,80,974 शेयर्स का लेन देन हुआ था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि वक्त आ गया है कि विफाकी काबीना में नए लोगों को शामिल किया जाए। नून लीग की पार्लिमानी कमेटी के इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि जल्द विफाकी काबीना में रद्दोबदल होगा। इन्होंने कहा कि शरह सूद 17.5% से 15% पर आना खुशाइंद है। महंगाई बढ़ने से शरह 30% से कम होकर 7% तक आ गई है। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में कहा कि मुल्क को दिवालिया करने वाले के दहानों पर पहुंचाने वालों के नापाक मंसूबे नाकाम हो गए हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि कश्मीर और फलस्तीन की हालत इज़ार के बाद कुछ करने की जरूरत है। ISPR के मुताबिक IAPTC की 28वीं सालाना कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में पहली बार सेंटर फॉर इंटरनेशनल पीस एंड स्टेबिलिटी नेस्ट इस्लामाबाद में 4 से 8 नवंबर तक मुनक्किद की जा रही है। इनका कहना था कि ये तकरीब का बाकायदा आगाज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से CIPS की नई इमारत के इफ्तिताह के बाद होगा। इफ्तिताही तकरीब में अंडर सेक्रेटरी जनरल डिपार्टमेंट ऑफ पीस और फॉर्मेशंस, अक़वाम मुत्तहिदा के पुलिस मशीर, कायम मुकाम डिप्टी मिलिट्री एडवाइजर, सेक्रेटरी खारजा पाकिस्तान और डायरेक्टर नेस्ट भी कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब में मौजूद थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि आर्मी एक्ट तरमीमी बिल के मंजूरी के बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर नवंबर 2027 तक आर्मी चीफ रहेंगे। सेनेटर कौमी असम्बली के खिताब में सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने और सर्विस चीफ्स की मुलाजमत 3 से बढ़ाकर 5 साल करने के तरमीमी बिल 2024 कसरती राय से मंजूर कर लिया गया है। पास होने वाले नए तरमीमी एक्ट के मुताबिक सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत 3 से बढ़ाकर 5 साल तक कर दी गई है और सर्विस चीफ की तोसी की मुद्दत भी 3 से बढ़ाकर 5 साल तक कर दी गई है, जबकि सर्विस चीफ के रिटायरमेंट के लिए 64 साल की उम्र हद खत्म कर दी गई है और तोसी के दौरान रैंक की मुद्दत या उम्र की पाबंदी का इतलाक भी नहीं होगा। बिल के तहत पाक फौज में जनरल के रिटायर के कवायद का इतलाक भी आर्मी चीफ पर नहीं होगा। तैनाती, दोबारा तैनाती या एक्सटेंशन की सूरत आर्मी चीफ बतौर जनरल काम करता रहेगा। अब आपको बताते हैं कि कायम मुकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने सेनेटर कौमी असम्बली से मंजूर 6 बिल्स पर दस्तखत कर दिए, जिसके तहत ही तमाम बिल्स कानून बन गए हैं। जरा के मुताबिक कायम मुकाम सदर मुमलिकत आर्मी ने एक्ट तरमीमी बिल, नेवी एक्ट तरमीमी बिल, एयरफोर्स एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। कायम मुकाम सदर मुमलिकत ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर दस्तखत कर दिए। कायम मुकाम सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफे के बिल्स पर दस्तखत किए। कायम मुकाम सदर के दस्तखत के बाद तमाम 6 बिल्स कानून बन गए हैं। ख्याल रहे कि कौमी असम्बली ने आर्मी एक्ट और जजेस एक्ट में तरमीम के बिल्स मंजूर कर लिए। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स एक्ट में तरमीम के मुताबिक सर्विसेज चीफ के ओहदे की मुद्दत अब 3 से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन या मुद्दत मुलाजमत में इजाफा इंतजामी मामला है, ये सब माजी में भी होता रहा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पहली बात यह है कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन या मुद्दत मुलाजमत में तोसी एक इंतजामी मामला है और यह हर दौर में हुकूमत में दी गई है। इन्होंने कहा कि ज़ाती तौर पर इसके हक में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी क्योंकि ये एक इंतजामी मामला है और हर हुकूमत अपने इख्तियार के तहत फैसला कर सकती है। ECC ने वजारत इत्तलाआत, CDA और वजारत दाखिला की जानिब से शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस के दौरान इस्लामाबाद को खूबसूरत बनाने की मद में इजाफी फंड जारी करने से मना कर दिया। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के दौरान दारुल और पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान कैमरों की मरम्मत और अमन आमा से निपटने के लिए वजारत इत्तलाआत और नशरियात, वजारत दाखिला और CDA की तरफ से इजाफी फंड्स की दरख्वास्तें मुस्तरद करते हुए इन वजारतों ने कहा कि वो अपने बजट से अदायगियाँ करें। अगर फिर जरूरत हो तो तकनीकी ग्रांट जारी की जा सकती हैं। वजारत खजाना की तरफ से जारी करदा एलामिया के मुताबिक वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की ज़ेर सदारत ECC इजलास में बताया गया कि वजारत इत्तलाआत ने SCO के अखराजात के लिए 9 करोड़ 58 लाख और डिजिटल इनिशिएटिव के लिए 53 करोड़ 61 लाख रुपए मांगे गए थे। मजीद खबरें शामिल करेंगे मगर एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते और आपको आगाह करते हैं कि लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में स्मोक SOPs के खिलाफ वर्जी पर 1074 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। पंजाब पुलिस के मुताबिक स्मोक SOPs के खिलाफ वर्जी पर 1351 मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। लाहौर में स्मोक SOPs के खिलाफ वर्जी पर 73 अफराद गिरफ्तार, 146 मुकदमा दर्ज हुए हैं। 24 घंटों के दौरान स्मोक SOPs के खिलाफ वर्जी पर 8 अफराद गिरफ्तार हुए। 24 घंटों के दौरान स्मोक SOPs के खिलाफ वर्जी पर 20 मुकदमा दर्ज हुए। स्मोक SOPs के खिलाफ वर्जी पर 5 अफराद को जुर्माने किए गए हैं। लेस्को ने 1,19,187 नुमाइंदगान से 3 अरब रुपए से जायद की रिकवरी कर ली है। तर्जुमा लेस्को के मुताबिक नुमाइंदगान के खिलाफ जारी मुहिम को 400 रोज मुकम्मल हो गए। इस दौरान 1,19,187 नुमाइंदगान से 3 अरब रुपए से जायद की रिकवरी कर ली गई है। नॉर्थर्न सर्कल में 16,497 नुमाइंदगान से 531 मिलियन से जायद की रिकवरी की गई, जबकि ईस्टर्न सर्कल में 15,313 नुमाइंदगान से 727 मिलियन रुपए से जायद की रिकवरी हुई। सेंट्रल सर्कल में 14,012 नुमाइंदगान से 548 मिलियन रुपए से जायद और साउथ सर्कल में 7,740 नुमाइंदगान से 227 मिलियन रुपए से जायद की रिकवरी की गई है। KPK में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 अलग अलग कार्रवाइयों में 6 खवारिज हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने KPK में 2 अलग अलग कार्रवाइयों में 6 खवारिज को हलाक कर दिया। कार्रवाई सिक्योरिटी फोर्सेस सरहदों की हिफाजत और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़म है। कराची के इलाके डिफेंस में कार से लड़की की लाश और एक शख्स बेहोशी की हालत में पाया गया। पुलिस के मुताबिक डिफेंस फेज 2 में वाक़ई गैराज में कार खड़ी थी जिसमें एक लड़की की लाश मिली, जबकि एक काशिफ नामी शख्स भी बेहोशी की हालत में पाया गया। पुलिस का बताना है कि लड़की की शनाख्त जवेरिया के नाम से हुई, जबकि काशिफ इसका बहनोई है। पुलिस सर्जन के मुताबिक पोस्टमार्टम में मौत की वजह सामने नहीं आ सकी, इसलिए मौत की वजह जानने के लिए लाश के नमूने हासिल कर लिए गए हैं। अब आपको पता है कि अमरीकी सदारती इंतखाबात के दौरान अमन और अमान बरकरार रखने और इलेक्शन अमले पर तशद्दुद के खदशात से निपटने के लिए गैर मामूली सिक्योरिटी इक़दाम किए गए हैं। अमरीकी रियासत ओरेगन, वाशिंगटन और नेवाडा में नेशनल गार्ड्स को फाल कर दिया गया, जबकि खतरात पर नजर रखने के लिए FBI की जानिब से भी कमांड पोस्ट कायम की गई है। अमेरिकी रियासत एरिज़ोना, मिशिगन और नेवाडा समेत 19 रियासतों में 2020 से इलेक्शन सिक्योरिटी कानून नाफिज हैं। 7 स्विंग रियासतों में वोटर्स के एतमाद, सिक्योरिटी और शफाफ इलेक्शन के लिए हुकाम भी पुरअज़म दिखाई देती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका भर में 1 लाख के करीब पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और पोलिंग अमले के लिए खसूसी मुसल्लह टीमें तैनात कर दी गई हैं। साथ ही साथ इलेक्शन अमले की सिक्योरिटी के लिए 1000 पिंक बैंड्स मंगवाए गए हैं। साबिक अमेरिकी सदर और रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि सदारती इलेक्शन की दौड़ जरूर जीतेंगे। अमेरिका के सदारती इंतखाबात का इनेकाद 5 नवंबर को होगा, जिनमें साबिक सदर और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का मुकाबला नायब सदर और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस से है। शुमाली कैरोलिना में खिताब करते हुए रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तमाम स्विंग स्टेशन पर हम ये कामयाबी हासिल करेंगे और सदारती इलेक्शन की दौड़ जरूर जीतेंगे। साबिक अमेरिकी सदर का कहना है कि हमने हारना नहीं, अवाम व्हाइट हाउस पहुंचने के लिए हमें वोट दें। दूसरी जानिब युगांडा में एक चर्च पर आसमानी बिजली गिरने से 13 बच्चों समेत 14 अफराद हलाक और 34 जख्मी हो गए। बरतानवी नशियाती इदारे की एक रिपोर्ट के मुताबिक अफसोसनाक वाकया युगांडा में शुमाल मगरिब में पाला बैक महाजिर कैंप में पेश आया, जो इस वक्त 80,000 से ज्यादा पनाहगजीनों का मस्कन है। रिपोर्ट में बताया गया कि पाला बैक महाजिर कैंप के मुतासरीन 2 रोज कबल चर्च में मजहबी रसूमात की अदायगियों में मसरूफ थे कि तेज बारिश और बिजली कड़कना शुरू हो गई। बरतानवी मीडिया के मुताबिक इस दौरान आसमानी बिजली गिरने के नतीजे में 14 अफराद हलाक जबकि 34 जख्मी हो गए। एक्स के मालिक एलन मस्क ने पेंसिल्वेनिया की अदालत में वोटर्स को $10 लाख देने की मुहिम जारी रखने का मुकदमा जीत लिया। एलन मस्क ने गुज़िश्ता माह रियासत पेंसिल्वेनिया में रिपब्लिकन के सदारती उम्मीदवार ट्रंप इंतखाबी मुहिम के लिए वोटर्स को $10 लाख देने की मुहिम का आगाज किया था। दूसरी जानिब 11 साबिक रिपब्लिकन अहदेदारों ने सदारती इंतखाबात से कबल एलन मस्क की जानिब से वोटर्स को नकद रकम की कानूनी हैसियत पर सवाल उठाए थे। कानूनी माहिरीन ने खदशा जाहिर किया कि ऐसी कोई भी पेशकश जिसमें वोटर्स को कहीं दस्तखत करने के अमल के लिए रकम की पेशकश की जाए अमेरिकी कानून की खिलाफ वर्जी में शुमार की जा सकती है। अब बात करते हैं खेल के मैदान की।
भारत की वजारत खेल ने 23 नवंबर से पाकिस्तान में खेले जाने वाले T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप के चौथे एडिशन में शिरकत के लिए इंडियन ब्लाइंड क्रिकेट टीम को NOC जारी कर दिया। भारतीय वजारत खेल की जानिब से क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड इंडिया के सेक्रेटरी जनरल शेष लाइंडर यादव के भेजे गए खत में दौरा पाकिस्तान की इजाजत देते हुए क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड इंडिया को दौरा पाकिस्तान के सिलसिले में मजीद क्लियरेंस हासिल करने के लिए भारतीय वजारत खारजा और भारतीय दाखिला ने राब्ता करने की कोशिश का कहा गया है। अब बात करते हैं मौसम के अहवाल की। महकमा माहौलियात ने लाहौर में स्मोक के खतरात के पेश नजर रेड अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर में स्मोक के खतरात पर मंडलाने लगे हैं और शहर को स्मोक के नए स्पेल का खतरा लाहिक है, जिसके पेश नजर महकमा मौसमियात की जानिब से रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। भारत से 8 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने लाहौर का रुख कर रखा है और एयर क्वालिटी इंडेक्स शदीद मुतासिर होने जा रहा है, जबकि फज़ाई आलूदगी का ये जहर पहले ही शहरियों को मुतासिर कर रहा है। दूसरी जानिब फिजा में जहर खोलती स्मोक मुल्तान तक जा पहुंची और एयर क्वालिटी इंडेक्स ने खतरे की घंटी बजा दी है। रहमियार खान और बहावलपुर में भी स्मोक की लपेट में आ चुके हैं। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद तफसीलात के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल टीवी। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप जहाँ कहीं से भी मुझे देख रहे हैं, पूरी दुनिया में देख रहे हैं, जो भी आपका वक्त है, आप सारों के लिए बहुत सारी दुआएं। You must have heard this very famous Chinese proverb that if wealth is lost, nothing is lost. If character is lost, something is lost. But if health is lost, everything is lost. Exactly. Today's program is going to be about your health because this is the fundamental of life. And in this program, we are going to discuss about the fundamentals of health. Of course, in a bit, I'm going to tell you each and every detail about the fundamentals of health and how you can have optimal health. We will be talking about 5 different techniques with which you will be able to take your health to the optimal level. And when I say optimal level, I really mean it. You are watching Soul Solutions and I am Rahila Ahmed. I am a personality coach, Reiki master, yoga therapist and a psychotherapist as well. And as I mentioned earlier, today we are going to talk about your health. Are you one of those people who have an excellent family, excellent kids, excellent friends, relatives, but you are suffering from some sort of disease and ailment? And because of that disease and ailment, you're not able to live life to the fullest. You have some nice gathering going on in your family, but you have body aches and pains and you cannot attend that function. Your kid has an annual sports day and he wants his mom to participate or his dad to participate, but you have a knee issue. Of course, you cannot participate. Or let's take it that way, that you are doing extremely good financially, you have a very successful career, but you have very low energy. After every now and then, you keep feeling low, sad, depressed, hopeless, helpless. And because of that, no matter how many opportunities you are getting, you cannot avail them. Isn't your life being compromised? Or let's take another example. You are a very religious and spiritual person. Namaze